Ball. One more slower one. Absolutely perfect off cutter, but slower one. Ball is just almost outside the line of off stamp, too far. But I think that ball just coming into the batter and beaten by the pace. Slower one there from Nawaz, and there is no chance at all for any run. Azhar is on strike. Nawaz is on attack. This time slight a bit of outside the line flex stamp, but well within the reach of the batter. The batter tried to flick that one off his legs, missed it completely. One more dotted delivery. Last time in this over, bowler bowling from the commentary box, and 3 for the loss of 2 wicket. Nawaz so far has got a good start from the ball. Wicket taking over and quite over. This time again is targeting the middle stump. They're going for the quick single into again. Once again the direct hit is comes into play, but this time batsman is safe. This time batsman is safe. I think Mubarish is safe there. Is running towards a danger end. Even though there's a direct hit, but because of it, runs very quickly between the wicket, able to complete that single. With that single, first over completed, chasing 43 to win this match. And the team Evershine has got a good start from the ball, but a shackling start here from new friends Krishnapura. It's 4 for the loss of 2 wickets. Still they have to get another 39 runs in 7 overs, and overall calculation, and 6 into the 7, that means 42 deliveries remaining. They have to get another 39 runs to win this match. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೌಲರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾರ್ ಎಂಡ್ Nawaz. Sauhardha, the little correction after complete. Nawaz completes his first over. Sauhardha brought into attack from the Suresh Bian and bowled him, cleaned him up right on the money. He's bowled right on the money, right on the target. The similar situation where it was fine for the new shine in their innings. The same thing is going in this innings of team new friends Krishnapura. They lost 3 wickets for just 4 runs. Absolutely very good start given there by the opening bowlers. After Nawaz produced a very good over, now Sauhardha is got a first wicket in his first ball. This is a kind of competition which is required here from Evershine, because they're depending a total of 43 to win the match for the opposition team. Mazin is the new batter in. The young talented batter with the jersey number 18 lead correction. And here is next one, far outside and off stamp, and going to be a huge wide, and the wicket keeper behind the stamp stops that one, but fails to stop. Umpire to give the wide. Arish Padil has got no hesitation to call that wide. Score now moves on to 5 for the loss of 3 wicket. Sauhardha from the far end. Right arm over the wicket bounce, looking for the reverse sweep. Again the wicket keeper behind the stump gathers the ball. That's a beautiful toss, but the batter premeditated reverse sweep already wanted to get, but missed it completely. Then wicket keeper behind the stump did the rest. 5 for the loss of 3 wicket. Again driven uppishly, but quite safely between backward point and cow point region. Before that, cow point fielder to run back to almost in the middle of midland and deep cow point region. The ample time for the batter to come back for the couple of runs. With that couple of runs, Koban moves on to 7 for the loss of 3 wicket in the over number 3. Second is in progress. Sauhardha back to his bowling mark. Right arm over the wicket, drives that one, not quite intended. They got opportunity to get the single. With their singles, Koban moves on to 8 for the loss of 3 wicket. Sauhardha again, right arm over the wicket, bowls. Again a ball pitched outside the non-black stamp, and going slight a bit of away from the right-hander batsman, and umpire Arish Padil rightly so called that wide. With that extra score, numbers on to 9 for the loss of 3 wicket. Sauhardha.
Oh, beautifully ball. Perfect one. This is a really a good one there from Sawad. Batsman is in a two mind whether going for the drive, but last moment he's checking your stroke. Last moment he's checking the stroke. Mubarish, because that was a danger one. Absolutely perfect line. This time wrong line. The batsman is capitalizing that one. No protection has been given the deep square line. It is not a good line to bowl. Absolutely bad line, and the batsman has got a capitalizing that one quite beautifully. Have a look at that one in a replay. The wrong line, short pitch outside and on a flex stamp, and batsman Mubarish has got all the time in the world. Just flicks that one of his legs down to deep square leg boundary for a welcome boundary for the team new friends Krishnapura. So after completion of over number 2, chasing 43 to win this match, slight a bit of comeback over, even though they lost a wicket in this over, but they got runs what they really wanted. 13 for the loss of 3 wickets. That means 30 more runs required for the victory in remaining 6 overs. 36 ball, 30 runs required for the victory. Equation is slight a bit of favoring chasing team, but the cricket is, everybody knows, is an unpredictable game, and one good over can bring ever shine back to this game. That's why they doesn't want to waste the time. They wanted Nawaz to continue from the commentary box, and after that he bowled a very good first over of just 3 runs and a wicket. Now he wanted to continue from this end. Only wicket taking is the best option for team member Shine to back in this game. Otherwise, the run rate required is not that much of a headache here for the new friends. But I think if Evershine wanted to back in this game, they needed a wicket. But sensible batting which is required for team Krishnapura if you wanted to win the match. So batters are in the middle. Mazin is in strikers end. Mubarish is in non-strikers end. Nawaz away from us. Left arm. Round the wicket. Dries nicely off the back foot. Fantastic technique and dedication there from Mazin. You know exactly. No need to panic at all. Just a rotation of strike is quite enough for them to win the match, because asking run rate is just under 5 runs per over. And with that singles cover, moves on to 14 for the loss of 3 wicket in the over number 3rd is in progress. Nawaz, left arm, improvisation nicely down to deep square leg region between fine leg and square leg, and fine leg inside the ring, square leg behind the square. And the batsman quite nicely swept that one down to deep square leg for a single. 15 for the loss of 3 wicket in the over number 3rd is in progress. Nawaz, 3rd time in this over. Bowling left arm. Round the wicket past umpire Mohan. Slower one, but negotiated very well by Mazin. You know exactly the bowler will going to try for the slower one. So he is already knew that, so that he got that sweep shot very well to get into the square leg region for a single. So far both the batters are dealing with a single, rightly so. They're playing as per the condition required for the team. 16 for the loss of 3 wicket. Nawaz balls, nicely driven. There is no fielder in the mid on, so that batsman quite deliberately played that one in the air and safely down to deep long on for a single. 4 singles in 4 deliveries. That means Nawaz is not that much of effective in this particular over, and both the batters are playing sensible. Slower one. This time a slower one in the sense the batsman Mazin tried to push that one on mid-wicket region to get the single. The first dotted delivery of this over from Nawaz. 17 for the loss of 3 wicket. Last time in this over. Left arm, round the wicket. Try to turn that one on onside region, deflected from the leg, so that leg by call by umpire. One more single has been added. 3 overs gone after completion of over number 3. Team new friends Krishnapura, they are going in a right track, and even they lost 3 wicket, but they are getting runs at the rate of exactly 6 runs per over. 18 for the loss of 3 wicket, and just coming back to the equation, 18 which is deducted from 43, that means they have to get another 25 runs to win the match in remaining 30 balls. 30 ball, 25 runs required for the victory, and the asking run rate is almost exactly the 5 runs per over. Munna brought into attack, one who contributed from the bat. Highest run getter in the batting department of
Team Evershine Chocobeto scored 12 valuable runs with the help of 1-6. That's the only 6 which is came through, and throughout this first match there is no boundaries. Only one boundary which is came from the bat of the batter Mazim has got the boundary. Otherwise, the 6 which is came from the bat of Munna. That means 1-6 and 1 boundary so far in this first match. Edging it down to third man region, but ball is not traveling quickly because of that softness of the ball. Just a single for the batter before the fielder from backward point to run back to his left, run back to deep third man division. The ample time for the batter to complete the single. 19 for the loss of 3 wicket. Munna need to get some breakthrough, and if a team wanted to back at this game, the breakthrough is very important, but sensible batting which is required for New Friends. Sensible absolutely which is continues here from this batter. They are dealing with a single, slightly so. Scoreboard numbers on to 20 for the loss of 3 wicket. Another 23 more runs required for the victory in 28 deliveries. This time again Mazin, absolutely perfect batting performance here from Mazin. Is a number 3 batter, and just like just number 18 always going to be a popular number as far as international cricket is concerned. Virat Kohli wearing that jersey number again. Nicely driven right in the gap towards a deep extra cover. They're looking for second, but excellent piece of fielding there by the fielder down at a deep extra cover, almost covering the ground from cover point to deep extra cover, but ample time for the batter to complete the single. 22 for the loss of 3 wicket. And 21 more runs required for the victory. Munna, full toss, nicely swept that one down to fine leg region. There again the overthrow comes into play. They're capitalizing the opportunity to come back for the second, and with that couple of runs, Coburn moves on to 24 for the loss of 3 wickets. A little bit hurting factor here for the captain of Evershine, because knows that they're not depending a big total. Just 43 to win the match. That means 19 more runs required for the victory. Munna bowled him, clean him up. This is a what? You can't neglect the cricket. Of course, he's looking so good so far, but I don't think it's going to be necessary when the things are going very well for the team Evershine, for a new friends. Krishnapura, not really required that kind of unorthodox cricketing stroke, and he wanted to play the switch it, but not quite able to read the low full toss, missed it completely, and is back into pavilion. So after completion of over number 4 and chasing 43 to win this match, New Friends Krishnapura are still looking in a commanding position. They are in a driver's seat of winning this match, unless any miracle bowling from magical bowling from the opposition team. I think it's going to be New Friends Krishnapura a slight bit of a favorite of winning this match. 24 for the loss of 4 wicket. Remaining 4 overs, 24 deliveries. They have to get another 19 runs to win this match. And before the next over going to start, it's a time to change in commentary box as well. It's over to Gopi for the further explanation of the match in our national language Hindi. And Gopi, so far looks like New Friends Krishnapura looking in a driver's seat of winning this match. But I think the wicket in the last ball of the over, slight bit of opportunity is created for the team New Shine Chocobeto to back to this game, but I think for that they needed ball another 4 good overs if they wanted to depend at 43 runs against New Shine Chocobeto. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया 4 रनों पर 3 विकेटें गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद एक बेहतर साझेदारी बनी माजिन और मुबारिश के बीच में, और पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर जो माजिन का विकेट गिर चुका है, उस विकेट के पतन के साथ 20 रनों की साझेदारी यहां पर टूट चुके हैं। इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड एंड ब्रिलियंट, दिस टाइम नवाज द मैन हु टुक द कैच, और निस्संदेह यहां पर बेहतरीन तरीके से इस कैच को लपका था। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, हल्के से गेंद
को चेक किया था, गेंद हवा में थी और अंतिम अक्षर में नवाज ने अपनी बाईं ओर से बाईं हाथ से इस कैच को लपका बेहतरीन तरीके से, और यहाँ पर इस बेहतरीन कैच के बदौलत एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। तो जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया 20 रनों की साझेदारी बनी, उसके बाद पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर माजिन का विकेट गिरा। तो जैसे ही मैं फरमाने वाला था कि गेंदबाज के लिए बाउंस बैक करने का यहाँ पर मौका है, कम बैक करने का मौका, और यहाँ पर 5वें ओवर की पहली गेंद पर एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। बेहतर कैच लॉन्ग ऑफ पर नवाज लपकते हुए, और इसी के साथ स्कोर है इस वक्त 24 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इट्स 24 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। 4 रनों पर तीसरा विकेट गिरा था और उसके बाद 20 रन की साझेदारी बनी मुबारिश और माजिन के बीच, और उसके बाद यहाँ पर विकेट जो कि गिर चुका है मुबारिश का, 8 रन उन्होंने बनाए, और दोनों वेल सेट बल्लेबाज मुबारिश और माजिन वापस लौट चुके हैं लगातार 2 गेंदों में। और यहाँ पर एक बेहतरीन मौका जरूर है गेंदबाज चुक्काबेट्टू के गेंदबाजों को यहाँ पर कम बैक करने का, और नए बल्लेबाज निज़ाम इस वक्त सामना करते हुए दाईं हाथ राउंड द विकेट ओवर की गेंद, बेहतर गेंद एक्स्ट्रा क्विक कर रहा, गेंद को ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, गेंद पहुंची डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 25 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। निस्संदेह मैच पिछले 2 गेंदों में 2 विकेटें लगातार गिर जाने के बाद अब ऐसा कहना पड़ेगा मैच बराबरी पर रुक चुका है, और शाफी गेंदबाजी यहाँ पर शुरू कर चुके हैं। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद जब गया लंबा पर, शायद वहां पर फील्डर मौजूद होंगे। जी हाँ, वहां पर कैच लपकने में सफल नवाज थे फील्डर, और दूसरा कैच इस ओवर में उन्होंने लपका। और यहाँ पर अब ऐसा कहना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट टाइम in this match, new friends Krishnapura are now looking in trouble. Have a look at this in the replay. Asan sa catch. At one stage they were 24 for 3 and now they are 25 for 6. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯೋದ್ರ ಒಳಗಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರ್ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೊ 24 for 3 before 4 deliveries and now 25 for 6. And this is an absolutely fantastic comeback made by the bowlers of Chukkabettu, and गेंदबाज ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर, मिस फील्ड मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई, लेकिन एक रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं. तो इस वक्त गेंदबाज कुछ कोसते हुए मिड विकेट फील्डर को, शायद वहां पर कोई रन की संभावनीयता नहीं थी, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद उनके हाथों से चूकी और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर. इट्स 26 for the loss of 6 wicket in the over number 5 in progress. और 20 गेंदें बाकी, 17 रन चाहिए, 17 runs to get from remaining 20 balls. 4 wickets they got in their hand. लो स्कोरिंग मैच यहाँ पर होता हुआ. दाहिने हाथ राउंड द विकेट शाफी गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद निजाम के लिए एक्स्ट्रा क्विकर, बेहतर फुलर लेंथ गेंद थी, गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, डॉट गेंद. और इस बीच अगली गेंद के लिए शाफी इस वक्त तैयार, बराबर का टक्कर यहाँ पर जारी. द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर. शाफी इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए निजाम के लिए यह गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहता, लेकिन आई थिंक द बॉल बेसिंग जस्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट. एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, एक बार फिर से फुलर लेंथ गेंद थी, गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहता, गेंद पैरों पर टकराए, लेकिन गेंद शायद कुछ हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, और इस वजह से अंपायर ने इस अपील को नकार दिया. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 27 रन 6 विकेट के नुकसान पर. 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 5 overs completed, 27 runs on the board, 6 wickets lost and 16 more runs. Now they have to score for victory in remaining 18 balls. Still the match is now equally balanced. Just they got 4 wickets kept intact. न्यू फ्रेंड्स कृष्णापुर, और जहाँ तक सवाल है इस वक्त न्यू फ्रेंड्स कृष्णापुर का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक सेंसिबल बल्लेबाजी, जो कि रन रेट रिकॉर्ड रन रेट जो इस वक्त है 5.33 रन प्रति ओवर, और इस वक्त हर गेंद पर कम से कम सिंगल्स भी वो बटोरते हैं, तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त एवरशाइन चुक्काबेट्टू के गेंदबाजों का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक ऐसी गेंदबाजी, एक ऐसी घातक गेंदबाजी जो पिछले ओवर में शाफी ने की है. तो देखते हैं यहाँ पर गेंदबाजी पर उतरते हुए मुन्ना,
और फील्डिंग में यहाँ पर कुछ हद तक जमावट चलती हुई। सुबह के 11 बजते हुए 10:55 यहाँ पर बच चुके हैं और जहाँ तक सवाल है, धूप अपना कहर धीरे धीरे इस मैदान पर ढाता हुआ और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए। एक बेहतरीन प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला सौहार्दा ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ। दिवंगत सुरेश बी इनके मधुर याद में पहली गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद हवे में थी। मिड विकेट फील्डर थोड़ा सा स्क्वायर तैनात, एक रन बल्लेबाज को मिला और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 28 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, 17 बॉल्स लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन in their innings and 15 more runs now they have to score for victory। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए मुन्ना दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश किया। सेंसिबल एब्सोल्युटली सेंसिबल, दैट्स द क्रिकेट, दैट टाइप ऑफ क्रिकेट they have to play at this situation because the required run rate is just under 6 runs per hour। यहाँ पर परिस्थिति को समझते हुए हल्के से गेंद को इस वक्त पुश कर दिया। स्क्वायर ऑफ द विकेट, एक रन के लिए 29 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 29 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। एक बार फिर से मुन्ना, अगली गेंद, ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हीव, अप गोस द फिंगर, इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू इन द इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द मैच फॉर एवरशाइन चोक्काबेट्टू। और हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। देखिए फुल लेंथ गेंद थी, अंतिम एक्शन में गेंद को ऑन साइड पर उछलना चाहिए, गेंद उनके बैक लेग पर टकराई, उनका पैर बिल्कुल मिडल स्टंप के सामने रहा और अंपायर हरीश पटेल को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई यहाँ पर उन्हें आउट घोषित करने में। 29 for 7। सो व्हाट अ ड्रामेटिकल कोलैप्स हैपेंड इन द इनिंग्स ऑफ न्यू फ्रेंड्स कृष्णापुर। एक बार फिर से यहाँ पर दिखाया जा रहा है, हैव अ लुक एट द बॉल स्टक टू हिज बैक लेग एंड दैट इज एन एब्सोल्युटली प्लम इन फ्रंट ऑफ द स्टंप्स। Or at one stage they were 24 for 3 and now they are 29 for 7। This is an absolutely outstanding comeback made by the bowlers of Evershine Chokkapettu। और अब कुछ हद तक कहना पड़ेगा, तख्ता इस वक्त एवरशाइन चोक्काबेट्टू का भारी लगता हुआ, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है न्यू फ्रेंड्स कृष्णापुर के बल्लेबाजों को। एक चतुराई वाली बल्लेबाजी की इस वक्त जरूरत उनके लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ड्राइव के एक्स्ट्रा कवर पर रन नहीं मिलेगा, वहां पर फील्डर मौजूद। एक और डॉट गेंद, हर डॉट गेंद के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता नजर आता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। स्कोर रुक चुका है 29 रन 7 विकेट के नुकसान पर और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। मुन्ना गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची लेकिन वहां पर रक्षण फील्डर मौजूद और एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 30 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर। 5.5 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका है। 13 balls remaining and 13 more runs now they have to score for victory। What a fantastic match is now progressing here. The inaugural match of this prestigious cricket tournament, Sauhardha Trophy 2023. Full toss down the off, too far outside the off stump, wide। और यहाँ पर वाइड फेंकना सामने वाले टीम को तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में रन देना बराबर होगा। यहाँ पर देखिए गेंद शायद उनके हाथों से फिसल गई थी अंतिम क्षण में और ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए और स्कोर एक रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर। 13 balls remaining, 12 runs required, 3 wickets they got kept intact। मुन्ना इस ओवर में अंतिम बार, अगली गेंद, ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को मोड़ना चाहा, इस बीच अपील जरूर है लेकिन अपील जारी है लेकिन अंपायर पर यहाँ पर इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर। और काफी जोरदार अपील की थी सारे खिलाड़ियों ने और आखिरकार कुछ हद तक सोच विचार करने के बाद, कुछ क्षणों तक सोच विचार करने के बाद यहाँ पर तीसरे अंपायर के लिए मांग की गई है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था एंड देखते हैं जब विकेट उखाड़े गए थे, जब बल्लेबाज अपना बल्ला बैट क्रीज पर लैंड कर चुके थे या नहीं। ಬಂದರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ತಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂದರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। So 31 for the loss of 7 विकेट। तीसरे अंपायर जो है श्रीमान रोलैंड पिंटो इस वक्त यहाँ पर देखते हुए कि क्या बल्लेबाज सुरक्षित हैं या नहीं और निस्संदेह यहाँ पर बेहतर तरीके की विकेट कीपर ने की थी और आखिरकार इस बार
इस वक्त स्कोर रुक चुका है 31 रनों पर और छठे ओवर की अंतिम गेंद इस वक्त फेंकी जा चुकी है। देखना यह है कि इस गेंद पर क्या विकेट गिरा है या नहीं। तो नॉट आउट इज द कॉल फ्रॉम द थर्ड अंपायर एंड द बैट्समैन सर्वाइव्ड। 6 overs completed, 31 on the board, 7 wickets lost, and 12 runs required in remaining 12 balls. 12 गेंदे 12 रन चाहिए और निस्संदेह अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा मैच बराबरी पर रुक चुका है। निस्संदेह एक बेहतरीन मैच इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला के अंतर्गत प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सौहार्द ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ यहाँ पर गेंदबाजी शुरू करते हुए मैच का छठा ओवर, उनकी पारी का छठा ओवर लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। शाफी ओवर की पहली गेंद, ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, स्कोर लेग फील्डर के हाथों में और यहां पर यह विकेट गिर चुका है। बेहतरीन विकेट कीपिंग का प्रदर्शन इस वक्त किया विकेट कीपर ने, तेजी के साथ गेंद पर झपके फॉरवर्ड शॉट लेग पर विकेटों पर निशाना दागा और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ और बल्लेबाज एक रन पूरे करने के प्रयास में अपना विकेट खो बैठे रन आउट के रूप में। 8वां विकेट यहां पर गिर चुका है और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा न्यू फ्रेंड्स कृष्णापुर के लिए मुश्किलें और बढ़ चुकी हैं यहां पर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स, 12 रिक्वायर्ड, 11 balls remaining, just they got 2 wickets in their hand और नंबर 10 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए काफी जिम्मेदारियों के साथ। तो इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर नए बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, नंबर 12 की जर्सी इस वक्त पहने हुए। अश्विन नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। निस्संदेह इस वक्त साझेदारी की जरूरत है कमबैक करने के लिए कृष्णापुरा को। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाज शाफी गेंदबाजी करते हुए यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, एक बार फिर से डॉट गेंद एंड नाउ द टाइड इज नाउ स्लोली टर्निंग। 12 required, 10 balls left and it could be anybody's game at this situation और इस वक्त नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज एरिस अश्विन की तरफ आए। उन्होंने कुछ कहा कि किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर उन्हें अपनानी चाहिए और इस बीच शाफी गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद आजीन के लिए रिवर्स शॉट मौका और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। यह विकेट यहां पर गिर चुका है। रिवर्स शॉट खेला था लेकिन टॉप एज पर गेंद टकराई और गली फील्डर के हाथ में पहुंची और इसी के साथ 9वां विकेट यहां पर गिर चुका है। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, देखिए किस तरीके से हुआ था, टॉप एज पर गेंद टकराई और गली पर इस कैच को बाखूबी लपक लिया गया फील्डर द्वारा। 31 for 9, last wicket left and 9 balls remaining, 12 runs to get. Last wicket they got in their hand और अंतिम बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और निस्संदेह अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ दिलेर भरी बल्लेबाजी, गट्सी बैटिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इस वक्त उनको इस मैच में वापस ला सकती है कृष्णापुरा के बल्लेबाजों को। 9 गेंदों पर 12 रन बनाने अंतिम जोड़ी मैदान पर नौफल का आगमन यहां पर हो चुका है और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार शाफी जो कि एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए फुल टॉस ड्राइव किया, इस बार वाइड स्लॉग ऑफ पर 1 रन मिलेगा। क्लीन कलेक्शन, एकमात्र रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, 8 balls left, 11 runs required और एरिस इज नाउ बैक ऑन स्ट्राइक। इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए शाफी और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद इस वक्त इम्प्रोवाइजेशन, दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड द मैच इज नाउ स्टिल अलाइव। 7 to get and 7 balls remaining, last wicket they got in their hand
This is an absolutely perfect improvisation. Have a look at this in the replay. Full toss गेंद थी, गेंद को कनेक्ट किया थोड़े से सफल होते हुए, ऑन साइड पर खाली क्षेत्र चुनते हुए गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर भेज दिया. बेहतरीन इंप्रोवाइजेशन के जरिए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 36 रनों पर. 36 for 9 and a fantastic struck came from the bat of Aris. 7 गेंदें 7 रन चाहिए. The last wicket in hand. Still the match is now equally balanced. और गेंदबाज अंतिम बार इस ओवर में शाफी. गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए फुल टॉस, एक बार फिर से मोड़ना चाहा लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट रिएक्ट किया था तो इस वजह से गेंद को मोड़ नहीं पाए. थोड़ा सा हाई फुल टॉस था और रन से नहीं मिलेगा. 7 overs completed, 36 on the board, 9 wickets lost, 7 runs required, 60 overs remaining. That means in last over remaining, and still they got only 1 wicket kept intact. ಬಂದರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಂಡದ ಯಾವುದಾದರೂ ಸದಸ್ಯ ಹಾಜರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊನೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗಾಗಲೇ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂದರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 6 balls, 7 runs required, last wicket kept intact. और मैच अगर टाई होता है तो सुपर ओवर यहां पर खेला जाएगा. If the match ended in a tie, winners will decide by super over. और यहां पर देखते हैं क्या होता है. नंबर 11 बल्लेबाज नौफल सामना करते हुए. सवाद इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए. द फर्स्ट बॉल ऑफ द लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. 7 required, 6 ball. Oh, this is sloppy. Oh, brilliant. This is an absolutely brilliant stop. लेकिन यहाँ पर 2 रन जरूर मिलेंगे. वाइड गेंद थी और अगर शॉर्ट थर्ड मैन फीडर गेंद को रोक नहीं लेते तो निस्संदेह गेंद सीमा रेखा को पार कर सकती थी. यहाँ पर 5 रन मिल सकते थे. यहाँ पर 2 रन मिला. बेहतर फील्डिंग इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर द्वारा. डाइविंग स्टॉप, 5 गेंदे 5 रन. तो अंपायर ने इशारा किया कि उनका स्टिपुलेटेड टाइम निगदित समय जो कि समाप्त हो चुका, तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा. अब 4 खिलाड़ी सिर्फ 20 गज के दायरे के बाहर तैनात. और यहां पर 5 गेंदे 5 रन चाहिए. और इस बीच सवाद गेंदबाजी 6 गेंद बाकी है, माफ कीजिए, 5 रन चाहिए. और इस बीच गेंदबाज तैयार. ये गेंद चिप गया लॉन्ग ऑफ की दिशा में. 1 रन मिलेगा. फील्डर गेंद को फील्ड करने में सफल, नॉट मोर देन अ सिंगल. 4 रिक्वायर्ड इन 5 balls. 4 रन चाहिए, 5 गेंदे. अब एरिस स्ट्राइक पर आ चुके हैं और गेंदबाज इस वक्त तैयार. सवाद ये गेंद इस बार विकेट कीपर चुके. शॉर्ट टर्न पर गेंद पहुंची. 1 रन मिलेगा. इस बीच बाई का इशारा. 30, in fact it's a 40. 3 required and 4 balls remaining. What a fantastic match is now progressing here. The inaugural match of this prestigious cricket tournament, Sauhardha Trophy 2023. Still the match is now equally balanced. The pressure is now building up on both sides players. 3 or 4. Here we go. दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद ऑन साइड पर मोड़ा. मिड विकेट पर फील्डर मौजूद. गेंद का इंतजार करते हुए एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा. शायद नवाज वहां पर फील्डर थे. नवाज का थ्रो इस वक्त नॉन स्ट्राइक रेंज पर पहुंच चुका. 2 रन चाहिए, 3 गेंदें बाकी. सिर्फ एकमात्र विकेट की जरूरत है इस वक्त एवरशाइन चौका बेटे को इस मैच में विजय दर्ज करने के लिए, जबकि 2 रन की दरकार है इस वक्त न्यू फ्रेंड्स कृष्णापुर के बल्लेबाजों को. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. अपनी और की अगली गेंद दाहिने हाथों पर द विकेट. लेग कटर गेंद सेंसिबल. बैक टू द बॉलर की दिशा में रन आउट का खतरा. निशाला और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है. न्यू फ्रेंड्स कृष्णापुर आर लॉस्ट द मैच बाय सिंगल रन. So what a fantastic match came to an end. देखिए किस तरीके से बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को खेला था. दौड़ पड़े, निशाना लगा, बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच नहीं पाए और इसी के साथ एवरशाइन चोकबेटो registered a thrilling victory by 1 run against New Friends Krishnapur in the inaugural match of this prestigious cricket tournament, Sauhardha Trophy 2023. And with that victory of just 1 run, they are through to the next round of this competition.
So what a fantastic match. Have a look at this in the replay. Back to the ball की दिशा में गेंद को ढकेला था, दौड़ पड़े, निशाना दागा, बिल्कुल सही बैठता हुआ जस्ट मनाते हुए खिलाड़ी, और एक रन से ये मैच एवरशाइन चोकोबेटू जीत चुका है न्यू फ्रेंड्स कृष्णापुर के खिलाफ, और इस विजय के साथ इस श्रृंखला इस टूर्नामेंट के अगले दौर में प्रवेश प्राप्त कर चुका है. So 1-run victory for Evershine Chokabut against New Friends Krishnapur in the first match of this tournament. And the second match is now coming up. New Star Kunjatu will take to Bandar Brigade, and that match is now coming up live exclusively right in front of you. And just we are taking a short break, and we'll be back right after the short break. Satish English in the next match will going to commence within just a short while. So man of the match of this match award goes to the man who performed the bat, not with the bat as well as in the ball. He scored 12 runs from the bat and captured 2 wickets for just conceding 10 runs in his 2 overs. Kota Munna adjudged the man of the match. Munna of Evershine Chokobetu adjudged the man of the match because of his all-rounding performance. I request Mr. Munna to please come on to the stage and receive the man of the match award from one of the best former cricketer of UFC, Mr. Jaya. I request Mr. Jaya to please hand over the man of the match award for Munna for his best all-rounding performance in this first match of this tournament. Next match, Bandar Brigade will take over New Star Kunjatur, and we'll be back right after the short break with Satish in English when the next match will going to commence right after the short break. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad.
So New Star Kunjatur, after won the toss, they elected to field first, and I request all the players of these two teams to please start the match immediately. Welcome back for the match number 2 of this prestigious Sauhardha Trophy 2023, and match number 2 will be played between New Star Kunjatur versus Bandar Brigade. And the news from here is that after winning the toss, captain of New Star Kunjatur has got no hesitation to decided to field first, and so that they are on the field and just waiting for the opening batters of Bandar Brigade. They will go into batting first in the match number 2 of day number 1 of this prestigious cricket tournament, and Sauhardha Trophy 2023, which is proudly organized in the sweet memory of late Suresh BN, and one of the most popular and unforgettable personality who really contributed a lot for the success of Gori young boys, and because of that one of his fan Alfaz of Gori young boys, under his great leadership, they are organizing such a fantastic cricket tournament in the name of Sauhardha Trophy 2023, and with the support of all the members of Gori young boys, and we are thankful and grateful for everyone those who are supported for the success of this cricket tournament, and especially the special thanks to Alfaz, proprietor of Spirits and Company, and Spirits and Company. It's a multi-sex saloon which is situated in Art of City, and that is in Palner opposite Platinum Theatre, and definitely there will be a big offer for all the players, those who are participating in this particular tournament, and even for those who are watching live telecast of this cricket tournament through 10 Media, they will definitely going to get the extra discount of 10 to 15% discount, and especially for of course on behalf of Alfaz, the proprietor of Spirits and Company, and multi-sex saloon which is situated in front of Platinum Theatre, Palner, and I request everyone please make the use of that very well equipmented Spirits and Company and multi-sex saloon which is situated, so that now we are going to start the match number 2, and just waiting for the opening batters of Bandar Brigade.
Hello. Just we want to announce the name of the donors, those are contributed for the success of this prestigious cricket tournament. Exim Line and Nucleus Exhibition and Events, Umesh Kotian of Gori Young Boys, Gori Family Mangalore, Team 1, Hotel New Padivals Mudabidri, Janata Lunch Home, Saif 107 Dubai UAE, Atik of Qatar, Madi Kurg of Dubai UAE, Zuhair Sheikh of Dubai UAE, Roof Tech Company Limited. Special thanks to Ranjit Shetty of Dubai UAE, Anand Raj Shetty Dubai UAE, Exim Line, and a special thanks to Abu Bakar Ashik Dubai UAE, Praveen Bantwal of Gori Young Boys, a former cricketer as well of Gori Young Boys, Suhail Baksh Oman, Ashfaq Unique Era General Construction is established KSA award correction. Special thanks to Javed 4S4 Fish Merchant Mangalore, Suraj Bajal Keri, Sri Mukhya Prana Cricketers, Awad Baksh Qatar, Imran Baksh Dubai UAE, Avinash Shivarna President Billawa Brigade, Nabel Dubai UAE, Adil Khan, Meril Rego Girish Alwa IYC, Praveen Chandra Alwa Corporator MCC, Shamshu. I request the 12th man of both the teams please be reported here immediately. 12th man of both the teams. 12th man of Brigade as well as New Star Kunjat Bail. Kindly request you to report in our commentary box immediately. Just we are coming to the sponsors' names: Shamshu Kandatpalli Mangalore, Praveen Chandra Alwa Corporator MCC, and a special thank to Ashil AK Dubai UAE, Anil Pujari Corporator MCC, and special thanks to Yami Restaurant, Kaiser Abubakar Dubai UAE, Torpedoes Khana, BMR Group, Anil Mangaladevi Cricketers, Ramananda Karpe, Moinuddin Afreed of Mangalore, at Gori fans of Qatar, Suhail Billy, the former cricketer of Gori Young Boys Qatar, Sahara Karkala, Baby Needs Mangalore,
Jasir Hussain, Dubai, UAE. Niad Ali, Dubai, UAE. Saif Karkala, Qatar. Bauddin, 11-star Karkala. So thank you each and everyone for your kind cooperation for the success of this prestigious Sauhardha Trophy 2023. So everything is ready here, and the first ball, which is nicely placed down to deep cow point region for a couple of runs here from the opening batters, so that Bandar Brigade they have started their journey in this particular match, and here is some entertainment which started here in our cricket ground, UCC cricket ground. Here is a second delivery, right arm over the wicket balls, and oh, what a delivery, fantastic one, and the batsman tried to reach that one, but luckily his back foot is first of all he was just lifted his back foot, but he drags his back foot right in a time, so that he survived. Again nicely plays it down to short extra coverage, and between short extra cover and cow point region, before the fielder from short extra cover region to run across his left. Ample time for the batter to complete the single. With that single, Skoba Namuzan to 3 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. New star Kunjattur, they came from our neighboring state Kerala and Kasaragod district, one of the fantastic performer. This time Mahesh nicely plays it, just inside out cricketing stroke, just allow the ball to coming into his bat, just a little bit moving towards his leg stump and getting a placement right between a short mid-off and a cow point region, and with that single Mahesh is off the mark. Scoreboard is 4 on the board without loss of any wicket. Right arm over the wicket. Oh, that was a beauty, absolutely. That ball is a nip back into the batter, very lucky indeed, because that ball looks like it's going to hit the leg stump, and luckily that ball slight a bit of got us extra deviation and misses the leg stump of the batter. The good bowling here from Fargiz, and he's bowling from the commentary box, and right arm over the wicket to the right under batter. This time tries, nice looking try down to deep long on region. There is a protection has been given in the deep long on. Of course, it's a power play zone. Only 2 fielders outside the circle, so that one of the fielders out of that 2 is gathers the ball, collects the ball, and returns to the hands of bowler. So first over completed. After completion of first over, steady start there from the opening batters of Bandar Brigade, and they got 5 without loss of any wicket. 5 without loss of any wicket, and a bright sunny morning, and the time is exactly 11 past 45 in the morning, and condition of the game seems to be is a very hot, and along with the hot condition of the weather, because this is a one cricket tournament. Each and every team wants to become the champion in this Sauhardha Trophy 2023. So Riaz brought into attack, one more experienced campaigner on behalf of New Sir Kunjattur. Is representing his home team Kunjattur, and one who got a fantastic record in underarm cricket, and especially one who represented one of the prestigious team of South Canara district, Young Friends Surua, and now he is representing for his home team New Sir Kunjattur, and he will go into starts the proceedings of his second over. Outside the leg stump, looking for the improvisation, and but not quite able to get the ball into the bat. Not a bad idea to play that one, very fine, because fine leg inside the ring. Once he get the little bit bat onto that, he can get the boundary for that, but he missed it completely. This time far outside the line of off stump, so that umpire Roland Pinto has got no hesitation to call that wide, and with that extra scope, Namuzan to 6 on the board without loss of any wicket. Outside the line of off stump, and going for the drive again. The ball is this is not coming to the bat, and especially we are talking about the condition of the ball which is used for this particular tournament, very soft, so that ball which is not coming to the bat,
as batsman expecting. Driven that one, lack of placement, but a poor piece of fielding by the fielder, and ball running down to deep long off, and fantastic piece of fielding there. The fielder just a couple of inches the fielder down at the deep long off region, able to cut it up. Have a look at it on a replay. Looks like the fielder is absolutely sloppy fielding by the fielder in the short mid, but a fielder in the deep long off. Fahad is down at the deep long off. Deep long off, of course, he's standing in the deep long on, but he's covered a lot of ground from long on to deep long off region, and he got a little bit footwork to stop the boundary. Drives this time straight to the fielder. Opportunities created for the run out. Now umpire Roland Pinto took his own time and just asking for the third umpire to give the decision. This is the first third umpire decision of the day number 1, and second third umpire decision will be asked for the third umpire to give the decision. Roland Pinto sir, at first he's got a slight bit of because a little bit of doubt in the mind, and third umpire in our commentary box, Mohan Ayade, will going to get several angle from the technicians of 10 Media, and one of the most quality and popular YouTube channel having a live telecast of this cricket tournament, 10 Media. And I'm sure that the technician will give a lot of good angles to get the best result of this run out. And just wait for the umpire signal, third umpire, and wait and see what could be the decision. And, it's 8 for the without loss of any wicket. It's always going to be a touch and go when it's going to be a chance of run out, because umpires, after having a slight bit of doubt in the mind, they're asking for the third umpire. But wait and see when the bowler takes that throw from the short mid-off fielder, slight bit of high throw, and that's why otherwise going to be an easy chance of run out because of the throw which is slight bit of wide for the bowler. He has to collect that one, and wait and see how the batsman will going to survive from that throw, and umpire will going to get certain angles here to get the best result of this. It's out, which is a call from umpire Mohan Ayade, and the batsman's bat slight bit of is in the air when Riaz completes his job, when bails are off, and the bat of the batter slight bit off in the air, so that first wicket is back into pavilion, and it's 8 for the loss of 1 wicket. Team Bandar Brigade have lost their first wicket, and is just going towards dugout, and that dugout which is named as a Kishore stand, one of the former cricketer, late Kishore, the former captain of Gori Young Boys. So this time Mahesh picked up a single quite nicely by pushing the ball down to short cover point region, as a new batter now came to the middle for Bandar Brigade. Aviz is the new batter in, and it's experienced campaigner for the side of Bandar Brigade will going to face next ball, and this time almost covered his stump, but he thought it might be the quicker one, but it's a slower one there from Riaz. Riaz actually is a very experienced campaigner. He knows exactly the condition of the ball, which is very suitable to bowl the slower one rather than bowling
the quicker one. One more good over which is completed after completion of over number 2. Searching for the right track. Slight a bit of slow start here from Bandar Brigade. It's 9 for the loss of 1 wicket. They're going exactly 4.5 runs per over. Nine for the loss of 1 wicket. Those who are watching live telecast of this cricket tournament through YouTube channel 10 Media, having a live telecast of cricket tournament, of course, all over the world. Some fans of underarm cricket, and more than the fans of Gori Young Boys, of course, they all over. Not only the fans of Gori Young Boys, they all over, but even some former cricketers of Gori Young Boys, they are doing the job in overseas countries like Gulf countries, and the players like Suhail Mohammad Billi of Gori Young Boys, they are all as fantastic cricketers watching cricket in Gulf countries. Certainly they are enjoying the game of cricket. So welcome to all for this prestigious Sauhardha Trophy 2023. So 9 for the loss of 1 wicket. Shravan brought into attack. Right arm over the wicket to Mahesh. Mahesh slashes that one up and over, down to deep extra coverage, but protection is there in the deep cover point, so that fielder, he fields the ball just moving to his right side, moving to his right hand, fields the ball very, very nicely, and just a single for Mahesh in the relegation, but confident looking drive from Mahesh. 10 for the loss of 1 wicket. This time for Waze again. He wanted to make the placement in relegation. The previous delivery also he would try to make the placement, but fails to make that one. And bowler's back drive, and there is no chance at all for any run. Shravan again. Right arm over the wicket balls. Looking for the improvisation. Just let the ball coming into his bat, closing the face of his bat, and just getting the direction down to square leg region for a single. And with that single scored, moves on to 11 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 3rd is in progress. Shravan back to his bowling mark. Right arm over the wicket to Mahesh. Oh, ball is in there. Ball is in there for a while, but suddenly that ball which is landed safely, because a fielder at short mid wicket revision and Badruddin is down at short mid wicket. One more fantastic cricketer for the side of New Star Kunjatur, popular cricketer as far as in Kasaragod district is concerned. This time ball has got a top edge, but the ball landed very safely. No man area, because fine leg inside the ring, square leg outside the ring, ball is landed between that, and Awais has got plenty of time to complete, ample time to complete the single. It's 13 for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. Slowly and steadily, these batters are playing as per the condition required, and they try to get some partnership. Beautifully bowled, perfect one, a quicker one, and Mahesh just watching the ball, and the wicketkeeper behind the stump did the rest. One more over completed after completion of over number 3. Bandar Brigade 13 for the loss of 1 wicket. And looks like the current run rate is 4.33 runs per over. Muzamil as a new bowler is brought into attack with a jersey number 22. He will go into ball from late Suresh Banner end. Right arm over the wicket to Awais. Awais improvising that one quite nicely by playing the horizontal bat, switch it, and before the fielder form a short third man. A little bit Pradeep searching for the ball, but meantime the batsman got ample time to complete that couple of runs. Scoreboard now moves on to 15 for the loss of 1 wicket in the over number 4 is in progress. Some big names we can see in the New Star Kunjatur
definitely they're going to be a favorite, because if he able to perform as per the reputation what they got, they can be the favorite of coming to the final in the local pool. Going for the drive, got outside edge of the bat, and again that single which is taken there by Aways. Slowly and steadily, these two batters are just dealing with the singles, seeing the condition of the game, and even the condition of the ball is not that much of suitable for to go for the big shot, expansive drives. So that they're looking for some rotation of strikes so far. 16 for the loss of 1 wicket. Muzamil. Oh my goodness! First time seeing that Mahesh is just lost his patience. He wanted to go over the top of that cover point region, the intention to play that extra cover drive inside out cricketing stroke. But the bowler Muzamil bowled a slower one, and beaten by the slowness of the delivery. Luckily, the ball just missed the leg stump. This time he's going for the mighty stroke. Again, that ball is just shaping towards outside the line of leg stump. Rightly so, umpire not restricted because he's bowling off cutter, and rightly so, umpire Roland Pinto judged very well, seeing that ball is got extra deviation and going to miss the leg stump. Mahesh once again missed it completely, luckily, and the ball is hitting his leg, and 17 for the loss of 1 wicket. Aways not quite intended. He wanted to try the ball in the offside region, but ball went towards a square leg region because of missed timing. And Muzamil is really bowling very well, using his using his mind very well, seeing that the very slow pitch but soft ball, and he's tried to ball the slower one, and this time Mahesh looks like he wanted to clear the boundary, and he got that one right over the head of that deep long on boundary for a maximum. This is the kind of technique which is definitely going to be a very suitable. Even the ball very soft in the nature, but this kind of cricketing stroke, have a look at that one. Absolutely instrumental sound which just came from the bat of Mahesh, showing that he's not even connected that one very well, but the timing of that stroke has been exquisite. When it's a situation, the condition is not that much of suitable for the big hits, but a batter like Mahesh can clear the boundary line at any condition. 24 for the loss of 1 wicket. This is a kind of stroke which is badly required when very hard to combine the runs against a disciplined bowling performance by New Star. But Muzamil has been punished for the last delivery of his over, and 24 for the loss of 1 wicket. Run rate is going exactly 6 runs per hour, and before the next over will go into start, it's time for Gopi to take over the microphone in our national language. And Gopi, slow start, but 6 in the last ball of the over certainly takes team Bandar Brigade back in the right track of getting some good total. बिल्कुल सतीश, पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर जो छक्का महेश के बल्ले से लगा था, वो छक्का इस वक्त कुछ हद तक रन की गति को वृद्धि करने में सहायकारी बन चुका है, और निस्संदेह यहाँ पर महेश की उपस्थिति बिल्कुल ज़रूरी है बंदर ब्रिगेड के लिए अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है। तो 26 रन बन चुके हैं, 5वां ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है, और गेंदबाज यहाँ पर शुरू कर चुके हैं। और जहाँ तक सवाल है बल्लेबाज का, तो दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। परवेज, ये गेंद इस बार गेंद को इस वक्त पैडल स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची, शॉट डायरेक्ट शाइन इस वक्त लग चुका है, लेकिन अंतिम क्षण में बल्लेबाज अपना बल्ला क्रीज पर रख चुके हैं, और बाई के रूप में ये रन उनके खाते में जुड़ चुका है। जोखिम भरा रन था, और इससे पहले कि थ्रो स्टम्प्सों को बिखेर कर ले जाए, बल्लेबाज तेजी के साथ दौड़ते हुए अपना बल्ला क्रीज पर स्ट्राइक लाइन पर रख चुके थे। देखिए यहाँ पर किस तरीके से थ्रो आया था, और इससे पहले बल्ला जो कि लैंड कर चुके थे, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 25 रनों पर। समाप्त कीजिए, 27 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, 27 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और गेंदबाज परवेज दाहिने हाथों पर द विकेट, रिवर्स शॉट, और इस बार मिसफील्ड, मिस जजमेंट, और 4 रन बल्लेबाज के खाते में। गली पर जो फील्डर खड़े हुए थे, थोड़ा सा मिस जजमेंट उन्होंने किया था, अपने आगे की ओर डाइविंग लगाई गेंद को लपकने के लिए, लेकिन गेंद उनकी दाईं ओर से निकलती हुई निकल गई। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, और इस मिस जजमेंट की बदौलत चौका इस वक्त बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर, इट्स 31 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। फिर से एक बार परवेज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, रिवर्स शॉट, गेंद को खेला इम्प्रोवाइजेशन करते हुए बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, 2 रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा।
33 for the loss of 1 wicket in the over number 5 in progress. और गेंदबाज परवेज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहता, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, रन्स बल्लेबाज नहीं मिलेगा, स्कोर रुक चुका है 33 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर और महेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद को स्वीप करना चाहा, अंतिम एक्शन में गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए 1 रन का इजाफा और लेग बाय का इशारा और लेग बाय की रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 5 overs completed, 34 for the loss of 1 wicket for बंदर ब्रिगेड looking in a good situation after being a slower start। कुल मिलाकर पिछले ओवर में रन्स बने 8 और 34 रन बच चुके हैं। 34 for 1 after 5 overs। The run rate is now progressing here exactly 6.80 runs per over the current run rate। और जहां तक सवाल है बचे हुए ओवर्स का, तो 3 ओवर का खेल अब उनकी पारी में बाकी। और जमन बॉयज का लड़का जो कि अगला मैच खेलेगा और उनके ओपोनेंट है इस मैच की विजेता टीम। तो यहाँ पर इस जमन बॉयज का सामना करने के लिए अगले मैच में मुकाबला जारी है इस मैच में इन दोनों टीमों के बीच। और जहां तक का गेंदबाजी का सवाल है, रियाज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, महेश जो कि 16 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए अब तक सिर्फ 13 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, 1 छक्का भी उन्होंने झड़ा है और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अपनी ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज महेश के लिए। ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट, इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, महेश के लिए खतरा हो सकता है स्ट्राइक रन पर, थ्रो थोड़ा सा वाइड और तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है अंपायर द्वारा। शायद नजदीकी मामला यहां पर हो सकता है और देखना यह है कि जब विकेट चटकाए गए थे तब बल्लेबाज क्रीज तक पहुंच चुके थे या नहीं। हालांकि थोड़ा सा वाइड थ्रो था, गेंद को गैदर करते हुए विकेटों पर लगाए थे, गिल्लियां बिल्स उड़ाए थे और देखना यह है कि यहाँ पर बल्लेबाज बच चुके हैं या नहीं। देखिए रिप्ले में दिखाया जा रहा है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची, थ्रो किया क्रॉस एंगल पर और यहां पर ऐसा देखना पड़ेगा और शायद नजदीकी मामला है। जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द अंपायर, थर्ड अंपायर डिसीजन। ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರು ಆಯೋಜಿಸುವಂತಹ ನೂತನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಬರುವ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಮೇ 3, 4, 5, 6 ತಾರೀಕಿನಂದು ಜರುಗಲಿರುವುದು। ಈ ಪಂದ್ಯದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಅಂದರೆ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಲಾಗುವುದು। ನೂತನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಅಂದರೆ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಲಾಗುವುದು। ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು।
No doubt, the decision came from the third umpire and the batsman survived in this delivery. He is in when the stumps are uprooted from the wicket keeper. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त स्कोर का, तो स्कोर इस वक्त पहुंच चुका है 36 रनों पर एक विकेट के नुकसान पर, 36 for the loss of 1 wicket at the start of the 6th over. और गेंदबाज इस बीच रियाज गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए महेश सामना करने के लिए तैयार. ही इज बैटिंग ऑन 18. अगली गेंद दाहिना तो ऊपर द विकेट. ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग एट द लास्ट मोमेंट. गेंद आई थी बिल्कुल जमीन के सहारे और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. बेहतर गेंद थी गेंदबाज रियाज की. एक बार फिर से तैयार दाहिना तो ऊपर द विकेट. गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार बल्ले का बहाने किया रहा. थर्ड मैन की दिशा में गेंद पहुंची, निशाना इस वक्त चूक चुका है और इस बीच बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बाल बच चुके हैं. तो एक रन फिर से उनके खाते में जुड़ चुका और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 37 रनों पर एक विकेट के नुकसान पर, 37 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस. रियाज की ओर की अगली गेंद दाहिने हाथों पर द विकेट. गेंदबाजी करते हुए यह गेंद चिप किया, गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद. स्वीपर बेहतर थ्रो इस वक्त, लेकिन बल्लेबाज को एक रन लेने से नहीं रोक पाया और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38 एक विकेट के नुकसान पर. छठा ओवर इस वक्त प्रगति पर. महेश एक बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर देते हुए 19 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 16 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है सिर्फ, और सामना करने के लिए तैयार रियाज की गेंदों का. यह गेंद इस बार हल्के से इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ डीप फाइन लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में. एक रन बटोरे और एक रन के साथ महेश का स्कोर जहां पहुंचा है 20 रनों पर और कुल रन संख्या बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर. लगभग 52% रन उनके कुल रन संख्या के महेश अब तक बना चुके हैं, यानी 39 रनों में 20 रन महेश अब तक जोड़ चुके हैं. दाहिने हाथों पर द विकेट. रिवर्स शॉट इस बार खूबसूरत स्ट्रोक इंप्रोवाइजेशन बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में. एक रन मिलेगा, सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 40 रनों पर एक विकेट के नुकसान पर. 6 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है. 6 overs completed, 40 runs on the board, exactly 6.66 runs. The present run rate is now progressing here and still they got 9 wickets kept intact. Still in overall calculation it is going to be 2 overs remaining in the innings. 2 over का खेल बाकी. और जहां तक सवाल है इस वक्त टीवी मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है 3 चौके और 2 छक्के अब तक बंदर ब्रिगेड की पारी में लग चुके हैं. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, श्रवण इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज आवेज. सतीश गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. एक बेहतरीन साझेदारी यहां पर बनती हुई महेश और आवेश के बीच में. लगभग 30 रन अब तक ये दोनों बल्लेबाज जोड़ चुके हैं दूसरे विकेट के लिए. और ओवर की पहली गेंद लेकर सतीश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए स्वीप किया खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए. इंप्रोवाइजेशन फाइन एंड ही पिक द गैप फॉर्मली. Swept well, just wide of square leg fielder and he finds the gap as well. और have a look at this in the replay. किस तरीके से गेंद को इस वक्त स्वीप किया था और 4 रन बल्लेबाज आवेज इस वक्त प्राप्त करते हुए इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 44 रनों पर. इट्स 44 for the loss of 1 wicket at the start of the 7th over. In fact अगली गेंद ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त पैर पर टकराई और बैक टू द बॉल की दिशा में पहुंची. रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. तो सतीश एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट. निस्संदेह एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होता हुआ इस वक्त बंदर ब्रिगेड. और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा. 1 run added to the total in the face of wide and with that single run the scoreboard moving up to 45 for the loss of 1 wicket in the over number 6 in progress. गेंदबाज ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को बोर्ड ऑन, नॉट क्वाइट मिडिंग इट. इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक. इन फैक्ट डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फीडर आफ्टर इट. और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 46 रनों पर. इट्स 46 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. रन्स आर easily coming now for the batsmen of बंदर ब्रिगेड. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो सतीश इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए महेश सामना करने के लिए तैयार.
सतीश की गेंदों का। ये गेंद इस बार हल्के से एब्सोल्युटली सेंसिबल, पहले स्वीप करना चाहा लेकिन गेंद को जैसे ही देखा कि गेंद मिडल ऑफ स्टंप पर आ रही है, हल्के से अपने बल्ले को स्ट्रोक्स को रोकते हुए, अपने बल्ले को थोड़े से घुमाते हुए, बल्ले के मुंह को खोलते हुए गेंद को स्टीयर कर दिया खूबसूरती के साथ। पॉइंट पर 1 रन का इजाफा हो चुका है। 47 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। सतीश एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इम्प्रोवाइजेशन, ओह ही ड्रॉप्ड दैट वन, दैट इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट अटेम्प्ट। अगर इस कैच को वो लपक लेते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक बेहतरीन कैच कहलाता इसी श्रृंखला का। देखिए, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, ही हैज गॉट अ हैंड आउट टू दैट एट द लास्ट मोमेंट, बट एट द लास्ट मोमेंट द बॉल वाज फ्लिक्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स। सो दिस इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट अटेम्प्ट मेड बाय द गली फील्डर। और इस भी गेंद पर बल्लेबाज बाल बच चुके हैं। ये गेंद चिप किया लॉन्ग ऑफ पर, और गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और यहां पर यह छक्का लग चुका है। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को उछाला महेश ने लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 54 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर स्थिति में इस वक्त बंदर ब्रिगेड नजर आता हुआ। अंतिम ओवर का खेल बाकी, और इस देखना यह कि इस बते हुए अंतिम ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। Shravan starting a fresh over. The last over starts in Bandar Brigade's innings. They are looking in a good situation. और ओवर की पहले गेंद लेकर श्रवण इस वक्त तैयार, आवेज सामना करते हुए। यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक, मिड ऑफ फील्डर इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात है और इसे देखते हुए गेंद को खूबसूरती के साथ इस वक्त ड्राइव कर दिया। हैव अ लुक एट दिस रिप्ले, मिड ऑफ फील्डर के बाईं ओर से गेंद निकली और लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 58 रनों पर। यह गेंद उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 59 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 59 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 8 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। अगली गेंद लेकर इस वक्त श्रवण तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुके 60 रनों पर। लगभग 50 रनों के आसपास यह साझेदारी इस वक्त पहुंच चुकी है आवेज और महेश के बीच में। ऑफ स्टंप से बाहर, बल्ले का बाहरी किनारा, और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 61 रनों पर। 61 for 1 with just 2 balls left in their innings। और गेंदबाज श्रवण गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए महेश के लिए 28 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए। Just gone for a big one, lost his middle stump, and that's it. A fantastic innings came from Mahesh. 28 runs he scored in 21 deliveries, and after being playing a responsible knock for their side, he is backing to pavilion, and 1 more wicket fallen. It's 61, so almost a 50 runs partnership in between Mahesh and Avez came to an end, and a fantastic innings came to an end from Mahesh. 28 of 21 deliveries, and he is backing to pavilion with a satisfying mood. तालियों के साथ इस वक्त उनके प्लेयर्स डगआउट में इस वक्त उनका स्वागत करते हुए टीम के अन्य खिलाड़ी इस बेहतरीन पारी के लिए महेश को। तो अंतिम गेंद का सामना करने के लिए नंबर 4 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद, नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज आवेज 23 रनों पर इस वक्त नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद। 17 गेंदों का आवेज ने अब तक सामना किया। आवेज इज बैटिंग ऑन 23 एट द नॉन स्ट्राइकर इन जस्ट 17 डिलीवरीज। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप, और गेंदबाज इस वक्त तैयार। Left it this time and finds the gap. He's get at least couple for that. The ball fielded by the fielder just inside the fence after a couple of bounces, and a couple of runs added into their innings. And the innings is up. 63 runs scored by Bandar Brigade in the stipulated
8 overs. And now the target, they set a huge target in front of New Star Kunjatur. 64 New Star Kunjatur have to score for victory in the stipulated 8 overs. That means in the stipulated 48 deliveries with a required run rate of exactly 8 runs per over with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. And let's see, can they reach the target or not. 64 the target in 8 overs. And their innings starts now with an ejected pile. Meantime, I request all the players once again, all the players of Zaman Boys Kalladka, please to be reported to the stage to make a sign in the official chart for the next match. Zaman Boys Kalladka ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ Bandar Brigade ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಬಂದರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನೇಮ್. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಬಂದರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So 64 the target for New Star Kunjatur, and the innings now going to start against Bandar Brigade, and we'll be back right after a short break with myself, Gopi, when the innings of New Star Kunjatur will going to begin. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. I request the 12th player of Bandar Brigade, please to be reported here to tell the player's name. धन्यवाद सतीश। तो यहाँ पर जहाँ तक सवाल है रनों का,
Right, the first ball comes lofted this time in the air, but it's safe और पहला रन यहाँ पर मिल चुका है और 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। तो यहाँ पर 2 रनों के साथ न्यू स्टार कुंजतूर की पारी की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, 2 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर राउंड की पारी का शुरू हो चुका है। विश्वास गेंदबाजी यहाँ पर शुरू कर चुके हैं, प्रदीप सामना करने के लिए तैयार, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर प्रदीप इस वक्त तैयार, तैनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। विश्वास गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स स्वीप किया इस वक्त इम्प्रोवाइजेशन करते हुए, लेकिन ठीक तरह से स्वीप नहीं कर पाए और जब तक गेंद को शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा। तीन रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। तो जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, विश्वास गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और सामना करने के लिए इस वक्त 70 और दाहिने हाथों पर विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद थी, इस वक्त गेंद को ड्राइव करना चाहा लेकिन ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाए और गेंद जब तक शॉर्ट कवर पर फील्ड हो 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 4 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू हो चुका है। विश्वास अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद टॉप एज, लेकिन फील्डर काफी पीछे गली पर रहा और आफ्टर फर्स्ट पॉइंट जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। रिवर्स शॉट खेलना चाहता लेकिन टॉप एज पर गेंद टकराई, लेकिन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की गेंद गली क्षेत्र के आगे टिप्पा खाते हुए और रन इस बीच मिलेगा 1 रन, 5 रन बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। विश्वास की गेंद, इस बार गेंद को उछालना चाहा लेकिन बैक टू द बॉलर की दिशा में। He's got a top edge onto that at the last moment. और ऐसा कहना पड़ेगा गेंद कुछ एक्स्ट्रा बाउंस अंतिम अक्षर में कुछ उछाल ज्यादा ली थी और टॉप एज पर गेंद टकराए, छक्के मारने की कोशिश में बैक टू द बॉलर की दिशा में। देखिए गेंद को किस तरह उछाला था, बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को कैच देने के बाद अपनी कदम पेविलियन की ओर बढ़ाते हुए पहला विकेट इस वक्त खो चुका है न्यू स्टार कुंजतपुर। 70 की पारी समाप्त, पहला विकेट खो चुका है न्यू स्टार कुंजतपुर का। इट्स 5 for 1। जमन बॉयज का लड़का विल टेक्स ओवर the winners of this team in the next match, and because of that I request all the players of Zaman Boys ka ladka to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. तो इस वक्त अगली गेंद नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद ऑफ सबसे काफी बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा इस बीच अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 6 for the loss of 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। फिर से एक बार गेंदबाज विश्वास गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद जब तक फील्ड शॉर्ट थर्ड बैन पर नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तो 64 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बंदर ब्रिगेड के खिलाफ न्यू स्टार कुंजतपुर एक मिक्स स्टार्ट जिसे कहते हैं मिश्रण भरी शुरुआत कर चुका है। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर जोड़ चुका है पहले ओवर की समाप्ति के बाद। 7 for 1 आफ्टर फर्स्ट ओवर।
सो सेकेंड ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, मुन्ना गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए। जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो मुन्ना अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए और रन के लिए दौड़ पड़े। नो बॉल का इशारा इस बीच अंपायर का, और एक रन, 2 रन उनके खाते में जोड़ेंगे और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर। फ्री हिट गेंद बल्लेबाज के लिए, और देखना यह है कि इस फ्री हिट का बल्लेबाज किस तरह फायदा उठा पाते हैं। और मुन्ना इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई। एक बार फिर से नो बॉल का इशारा, तो 2 लगातार नो बॉल इस वक्त भेज चुके। लाइंस के बाहर गेंद निकली थी और फ्री हिट गेंद एक बार फिर से बल्लेबाज के लिए, और 1 रन के 2 रन फिर से उनके खाते में जोड़ेंगे। मैं समझता हूँ कुछ हद तक अपने बॉलिंग आर्म गेंदबाजी के कंधों पर इस वक्त कुछ हद तक दर्द वो महसूस करते हुए, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। 11 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। तो मुन्ना गेंदबाजी अभी भी अपना दर्द महसूस करते हैं अपने कंधों पर, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है, और टीम के अन्य खिलाड़ी उनसे कुछ बातचीत यहाँ पर करते हुए। और गेंदबाज मुन्ना एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, फ्री हिट गेंद थी इस बार, इस वजह से बल्लेबाज का विकेट यहां पर बच चुका है। बेहतरीन गेंद थी, इस वक्त गेंद स्टंप्सों पर टकराए और बाई के रूप में यहां पर ये रन उनके खाते में जुड़ चुका है, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और दूसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू हो चुका है। तो एक बार फिर से मुन्ना गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रदीप जो कि सामना करने के लिए तैयार है, और मुन्ना अपनी ओर की अगली गेंद लेकर प्रदीप के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए स्विंग किया, लॉन्ग ऑन पर मिड विकेट फील्डर, बेहतरीन कैच, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कैच टेकन बाय द वाइड लॉन्ग ऑन फील्डर। गेंद को ऑन साइड पर स्लॉग स्वीप के तौर पर खेला था, लेकिन यहां पर देखिए किस तरीके से गेंद को लपका था। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कैच टेकन बाय द वाइड लॉन्ग ऑन फील्डर, उछाला था गेंद तक पहुंचते हुए, और लॉन्ग ऑन पर जिस तरीके से अपने आगे की ओर दौड़ कर आकर इस कैच को लपका, निस्संदेह काबिले तारीफ कैच इस वक्त फील्डर ने लपका, और इसी के साथ दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। इट्स 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और इस बीच बल्लेबाज प्रदीप आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए, और दूसरा विकेट गिर चुका है 12 रनों के ऊपर। इट्स 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द नंबर 4 बैट्समैन फॉर न्यू स्टार कुंजतूर। दोपहर का वक्त 12:30 यहाँ पर बज चुके हैं, 12:30 यहाँ पर बज चुके हैं। धूप कुछ खास गहरा नहीं, लेकिन धूप का अस्तित्व जरूर मैदान पर मौजूद, और गर्मी की तीव्रता इस वक्त मैदान पर कम ज़रूर हो चुकी है, लेकिन कुछ हद तक गर्मी का एहसास अभी भी न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। बदरुद्दीन नए बल्लेबाज के रूप में, और मुन्ना इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट, और जब तक गेंद को वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है। कुछ हद तक इनसाइड आउट क्रिकेट यहाँ पर खेला था डीप एक्स्ट्रा कवर पर, और
स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार गेंदबाज की है गेंद, इस बार कि फिर से एक बार गेंद को खेला कवर पॉइंट क्षेत्र पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। इट्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एंड ओवर नंबर सेकंड हैज बीन प्रोग्रेस। और जहाँ तक सवाल है स्ट्राइक का, तो बदरुद्दीन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार मुन्ना की गेंदों का। इस बार ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ पर, मिस जजमेंट और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। काफी हद तक अपनी दाईं ओर आ गए थे और अंतिम क्षण में इस मिस जजमेंट की बदौलत गेंद उनकी दाईं ओर से निकलती हुई सीधे सीमा रेखा को पार कर गई 4 रनों के लिए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था, काफी ज्यादा अपनी दाईं ओर आ गए और आखिरकार गेंद को रोकने में असफल और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। 18 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। अपने ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। यह गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को स्कूप किया खूबसूरती के साथ इनसाइड आउट क्रिकेट खेलते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर पर। गेंद जब तक फील्ड हो, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने के। एक लंबा ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुका है। मुन्ना का 2 ओवर की समाप्ति के बाद एक बेहतर स्थिति में यहाँ पर नजर आता हुआ न्यू स्टार कुंजत्तूर 20 रन जोड़ चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट स्कोर्ड बाय न्यू स्टार कुंजत्तूर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर 6 ओवर्स लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स। और 44 रनों की जरूरत है बचे हुए 36 गेंदों पर। 36 बॉल्स रिमाइनिंग एंड 44 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। तो इस वक्त रिकॉर्ड रन रेट 7.30 रन्स पर ओवर। और मैच के बारे में अगर कहा जाए तो मैच लगभग बराबरी पर रुक चुका है। और गेंदबाज विश्वास गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए काफी विश्वास के साथ अपना दूसरा ओवर प्रारंभ करते हुए, जबकि सामना इस वक्त करने के लिए तैयार मंसूर। 2 ओवर के खेल के पश्चात इस वक्त फील्डिंग में जमावट चलती हुई और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार गेंदबाज दाईं हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। पहली गेंद ड्राइव किया जगह बनाते हुए कवर पॉइंट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर। तो विश्वास अपने ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद, ये गेंद बेहतर गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश किया विश्वास। फॉलो थ्रू पे गेंद को ठीक तरह से फील्ड नहीं कर पाए, लेकिन 1 रन बल्लेबाज इस गेंद पर बटोरने में सफल। 22 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका 2 विकेट के नुकसान पर। 42 रन और चाहिए विजय के लिए, 34 गेंदें और बाकी। 42 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 34 डिलीवरीज। और विश्वास अगली गेंद चिप किया इनसाइड आउट क्रिकेट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ पर और गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों में। गेंद को इस वक्त स्कूप करना चाहते थे इनसाइड आउट क्रिकेट के जरिए एक्स्ट्रा कवर और वाइडिश लॉन्ग ऑफ के बीच, लेकिन गेंद को उछाला जरूर रहा, लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं। और लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे एक बेहतर जजमेंट के साथ उन्होंने इस कैच को लपका। स्कोर 22 रनों पर रुक चुका है, जबकि तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। इट्स 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। सतीश नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए विश्वास की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। और ओवर की अगली गेंद लेकर विश्वास फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज सतीश के लिए। स्वीप करना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट मोमेंट। 1 रन का इजाफा, 23 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। सिर्फ 3 रन अब तक इस ओवर में गेंदबाज विश्वास प्रदान कर चुके हैं। एक बेहतरीन स्पेल उनका इस वक्त प्रगति पर
और अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर था विकेट। बदरुद्दीन सामना करते हुए इस बार बेहतर, just waiting to the ball to come out to his bat, gone through for a quick single, driven that one down to extra cover। और जहां तक रनों का सवाल है तो रन से मिलेंगे 1 और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24-3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर विश्वास इस ओवर में अंतिम बार। बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, extra quicker one, just getting extra bounce at the last moment and went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman's bat. Over number 3 has been completed, 24 on the board, and still in overall calculation it's going to make 40 runs exactly required for New Star Kunjatur in remaining 30 deliveries, and the asking run rate is now gone up to exactly 8 runs per over. 30 balls and 40 runs required. So fourth over starts in New Star Kunjatur innings और चौथा ओवर लेकर गेंदबाज महेश इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई। बदरुद्दीन सामना करने के लिए तैयार। 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद और डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया गया है और गेंदबाज महेश इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए। दाहिने हाथों पर था विकेट। पहली गेंद हल्के से गेंद को पुश किया, जगह बनाते हुए गेंद पहुंची पॉइंट पर। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज लेना चाहते लेकिन थोड़े से जिज के अंतिम क्षण में और आखिरकार सिर्फ एकमात्र रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द फोर्थ ओवर। इन फैक्ट 39 more runs now they have to score for victory in remaining 29 balls। और महेश ये गेंद लेग कटर गेंद थी, हल्के से गेंद पर बल लड़ाया, गेंद को खेल दिया कवर पॉइंट पर। 1 रन के लिए बल्लेबाज सतीश ने और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रन पर। 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 38 needed now in remaining 28 deliveries। अपनी ओर की अगली गेंद bowled out, absolutely fantastic one, slower off cutter delivery and he just got the rid of the batsman। गेंद को इस वक्त विकेट से कुछ हटते हुए ऑफ साइड पर खेलना चाहते थे, चेंज ऑफ पेस इस वक्त गेंदबाज हो रहा है। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, परफेक्ट ऑफ कटर डिलीवरी, धीमी गति की और यहां पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं महेश। चौथा विकेट गिर चुका है, बदरुद्दीन की पारी समाप्त। ही इज आउट फॉर 10 of 7 deliveries and a 4th wicket lost for New Star Kunjatur। It's 26 for 4। So we are just waiting for the new batsman. Number 5 batsman is now number 6 batsman in fact is now coming out to the middle। Muzammil, the new batsman, is now going to face Mahesh। Mahesh again better stroke, absolutely fantastic one, just leaning for that at the last moment। और जब तक गेंद कवर पॉइंट पर फील्ड हो 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 27 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें अभी भी बाकी इस ओवर में महेश की और महेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई सीधे पहुंची पॉइंट फील्डर के हाथों में और यहाँ पर महेश जो फील्डर थे शायद
तो यहाँ पर विकेट इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं और देखिए यहाँ पर पकड़ा था, जैसे ही उन्होंने अपना संतुलन खोया गेंद को ऊपर की ओर उन्होंने फेंका और पांचवा विकेट गिर चुका। हालत तक काफी हद तक नाजुक सी इस वक्त लगते हुए न्यू स्टार कुंजतुर की 27 रनों पर पांचवा विकेट खो चुका है, जबकि 25 गेंदें बाकी। अब विजय के लिए चाहिए 37 रन, 37 टू गेट इन रिमेनिंग 25 बॉल्स। परवेज नंबर 7 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर बढ़ते हुए नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज मुजम्मिल ने कुछ कहा उनकी ओर आकर और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार महेश की गेंदों का। तो महेश इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए फुल टॉस गेंद थी, स्वीप किया गेंद को इस वक्त। परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर थोड़ा सा मिसफील्ड है, लेकिन बल्लेबाज के पास मौका सिर्फ 1 रन प्राप्त करने का। 28 रन 5 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति। स्टिल द बैट्समैन ऑफ न्यू स्टार कुंजतुर सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। 36 टू गेट एंड 24 बॉल्स टू गो। द रिक्वायर्ड रन रेट इज नॉट गॉन अप एक्जैक्टली 9 रन पर ओवर। देखते हैं बचे हुए 4 ओवर में उनकी पारी में क्या होता है। और पांचवा ओवर इससे पहले की प्रारंभ हो। माइक्रोफोन पर अब अंग्रेजी में आंखों देखा सुनाने के लिए सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. And chasing 64 to win this match, team Kunjaturu looks like New Star Kunjaturu looks like a little bit struggling as far as the as far as required run rate, as far as the wickets in hand is concerned. They lost 5 wickets and still long way to go. Nicely plays it down to deep mid-wicket region. Off the toes, he plays it down to mid-wicket for a single. With that single, Skobana moves on to 29 for the loss of 5 wickets. Still, they have to get another 35 runs to win this match. Ali Zaman Boys ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಯಾರಾದರೂ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎನಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ Zaman Boys ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ immediately and please consult our organizers as soon as possible. 20 for the loss of 5 wicket. 30 correction. Still they have to get another 34 runs to win this match. The match is going to be anybody's game because the way that both the teams are battling for the victory here, it's going to be anybody's game. One good partnership will going to take the match away from the opposition. This time he's going for the slog slip shot appeal for leg before wicket, but here is a run out taken place. Absolutely disaster. And I'm really surprised the bowler is still asking for the leg before wicket, which is a ball which is outside the line of leg stump too far. But here is the batter going for the single and pays the penalty for that. When it's partnership which is badly required for the team New Star Kunjaturu, this wicket will going to give a little bit upper hand here for the opposition team Bandar Brigade. Are looking now in a commanding position because they picked up 6 wickets of their opposition. 34 more runs required for the victory in remaining 3.3 deliveries. That means 21 deliveries remaining. They have to get another 34 runs to win this match. It's a big ask but not impossible. In cricket anything is possible. You can't say anything in cricket. One big over can change the complexion of this match. But in a naked eye, still now looks like a team Bandar Brigade are looking in complete control over this match. So new batsman in, just walking towards the middle. Pahad, and wait and see how Pahad will going to get some partnership along with Farvez. Beautifully ball. That's the line. That's the line. Definitely going to be a perfect line to ball to the fresh leg. Whenever the new batter is coming to bat, right time for the bowler to bowl some tidy overs and tidy line. 30 for the loss of 6 wicket. Again ball right arm. Round the wicket balls. Full toss. Lofted one. It will going to be a big one. I think so. Yes, it does. This is what I'm talking about. The cricket is game of glorious uncertainty. Just 1 over is quite enough for any team to come back, especially when you're playing in the small format of the games. This is a juicy full toss, isn't it? The man who is in front of
That bowler is very tall enough. He's got a tall enough to get some extra power behind that stroke, and he's just clearing the ground. Absolutely fantastic stroke, and score straight away jumped into 36 for the loss of 6 wicket. Now equation, half of the job, a little correction, 36 which is completed. Another 28 more runs required for the victory. 28 required from 19 balls. After he bowled a very tidy line, one ball which is all the effort which is gone in vain. Already 9 runs scored in this over. This time he wanted to repeat that one, but ball is not too far away from the off stump of the batter. Very lucky indeed. The batter Fahad in delegation. By call by umpire. One more addition. He will go into retain the strike, and scoreboard is 37 for the loss of 6 wicket. And coming back to the equation, another 27 required for the victory in remaining 18 balls. The biggest sponsor of this cricket tournament, Spritz and Company, and a unisex saloon which is situated in Palnir, opposite of Platinum Theatre. Now it's not there, the Platinum Theatre, but it's one of the most popular theatre which is situated in Mangalore, very oldest one. And so on behalf of the proprietor, Alphaz, is providing some discount. Those who are visit that Spitz and Company unisex salon, they will going to get extra 15% of discount for anyone, those who are watching live telecast of this cricket tournament, and for the players, those who are participating in this Sauhardha Trophy 2023. So Mahesh brought it direct from the Suresh BN and late Suresh BN and starts with the dotted delivery. I think it's a bad miss. First ball, it's a full toss delivery outside the line of off-stump. Batsman couldn't manage to take the advantage of that delivery. Just to try to get that one into fine leg region, but missed it completely. Mahesh again. Right, over the wicket. Reverse stroke comes into play, and he plays it down to deep cow point region. They're looking for second. In comes a throw. Certain a couple of runs, because if they run hard, they can get the runs. But because of they lost the 6 wickets, both the batters are not trying for the second, because they knows that losing 1 wicket put them into more pressure, and that's why they're not interested. Parvez is on strike. Mahesh is on attack. Sensible batting. Just placing the ball quite nicely down to backward point region. Both the batters realizing that they are almost in a track. If they get one big shot between that, they can back this game. And the equal battle is on. 39 for the loss of 6 wicket. 25 more runs required for the victory. 16 balls remaining. This time again went for the reverse stroke, missed it completely. One wicketkeeper fails to collect the ball. By call by umpire Roland Pinto, with the addition of that extra score Namazan to 30 for the loss of 40 for the loss of 6 wicket. I request once again, Zaman Boys Kaladka, the players, please report here immediately to sign the official chart. Appeal for leg before wicket. Umpire Roland Pinto. This is not unmoved. They're coming back for the second chance of run out, and he missed the ball. He just misses the ball. Leg by call by umpire. The couple of runs has been taken. This is a frustration for the bowler, because without having a bat in leg by, you will get the opposition team getting couple of runs means is always going to be a frustration time. Have a look at that one in a replay. Ball is slight a bit of a going down the leg stump, outside the line of leg stump. The batter tried to turn that one in the square leg region, and 42 for the loss of 6 wicket. Zaman Boys Kaladka ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ. ಜಮಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ. It's a 42 for the loss of 6 wicket. Here is the next one. Right arm over the wicket bounce. Again, nicely turns down to square leg division. They're coming back looking for second there. But no question of second. One more over completed. Completion of over number 6 is a 43 for the loss of 6 wicket. Now 2 overs remaining. 43 in the sense they have to get another 21 runs to win this match in the remaining 2 overs. The asking run rate is exactly 10.5 runs per over. And it's quite, I think, seems to be a difficult one, but not impossible. In present cricket, anything is possible.
10.50 runs per over, which is the required run rate for team New Star Kunjaturu. They came from long way, and Bandar Brigade. So far, I think the bowlers did a great job to get 6 wickets off their opposition. Ansar brought into attack to bowl the last but 1 over. That means the 7th over. (43) for the loss of 6 wicket in the over number 7 is in progress. We're going to start from the commentary box and 21 required from 2 over. Starts with the spectre. Oh, that was a great stop. That could be a great stop. Otherwise, if it is going to be a boundary, then it's going to be a comeback boundary for the team, the opposition. But that fielder in the short final leg region did a great job there, just moving to his right and stopping certain boundary. But 1+1, 2 extra run, which is added to total 45 for the loss of 6 wicket. 19 required from 12 balls. This time, oh my goodness, opportunity of caught behind. Mahesh almost while he's keeping the wicket is almost sitting behind the wicket. So very difficult for him to get back and to take the catch. But a little slight a bit of high for him to take the catch. The batsman survived. Dotted delivery. Ansar right arm over the wicket, bounce. This time again Sauhardha going for the mighty stroke. Again opportunity of runner created, but umpire says rightly not out because there's a diving effort there from the batter. And have a look at that one. The batsman again looking for one more big shot, but this time he's looking for the single as well. Throw coming from the fielder, but I think umpire right decision there from umpire Roland Pinto, because batter Sauhardha almost reaching his home because he's saving his wicket because of his diving effort. If he couldn't able to dive, definitely it's going to be opportunity of run out, because that batter is diving to full and dive to his crease. The bat which is came inside the crease when the wicketkeeper Mahesh completes the job. So it's so important in cricket nowadays, the present cricket. Everyone is very athletic and gymnastic, that if you wanted to save your wicket, you need to give your 100%. So 19 already required now for the victory. 19 required, in fact. This again, that ball is going to be a wide. One more extra. With that extra cover, Namada moves on to 46. 18 more runs required for the victory. 18 required from 10 balls. Ansar once again back to his bowling mark. Right arm over the wicket to Sauhardha. Sauhardha again. One more that wide delivery. This is the third wide of this over. This is going to be expensive in this situation. That will give a lot of confidence for the batter when you're bowling extra ball and extra runs. 47 for the loss of 6 wickets. 17 more runs required for the victory from 10 balls. Bowler Ansar again away from us. Right arm over the wicket again. Nothing much to do with the delivery. They're going for the extra run. Chance of run out in the strikers end, but they completed the single. Again, there's 1+1. 2 more to the total. Slowly the match is turning around. Because of bowler, he started to feel the pressure. Ansar, so it's the 4th wide of this over, the prolonged over. Now umpire saying one more testing time here for the fielding team is that they exceeds that time limitation. So that as per the penalty, as per the rules and regulation of this particular tournament is concerned, as per the penalty is concerned, they need to bring one fielder inside the ring. That means they have to keep only 4 fielders outside the circle, not more than 4 outside the circle. 49 for the loss of 6 wicket. 15 more runs required for the victory in remaining 10 balls. Now match is slowly turning around. Ansar 4 wides in the over. That means so far he bowled 6 balls. In that only 2 legal deliveries, fair deliveries he bowled. The opportunity for the batter, they are going to get extra gap because of one fielder inside the ring to get the boundary. This time tip that one just over the infield, but the protection is there in the deep cover point region, so that batter Parvez have to settle for the single. Parvez is doing a right job here, you know exactly. The Pahad is a kite arm batsman who can be the 50 comes off. 50 comes off for New Star Kunjaturu. He knows that the batter Pahad who can do the job as far as the big hitting is concerned. Here is Ansar.
Balls looking for the slog sweep shot. Very lucky indeed. Ball just missing it off stamp. Good comeback here by bowler Ansar. Now 9 balls remaining. 8 balls remaining. Correction. 8 balls remaining. They need to get another 14 runs to win this match. The difference between run and ball exactly 6. That means one maximum will go into bring New Star Kunjatur back to this game. That's what I'm talking about. The 1-6 can bring the match, but it's a huge 6 in fact. The second sixer which came from the bat of Pahad. Just like I mentioned about the Pahad is a right batter who can deal with the big shot. Have a look at the swing of the bat. Absolutely, the bat swing that takes that ball right over into the commentary box. Very straight hit, straight down the ground. What a magnificent striker of the ball. Score jumps into 56 for the loss of 6 wickets. Now 8 runs required for the victory from 7 balls. Ansar again. Right over the wicket. This time he wanted to repeat the one, but this time a bowler bowled a slower one. Last over remaining, 6 ball. 6 ball, and they have to get another 8 runs to win this match. It's a highly expensive over. 13 runs came from that over. 4 wides. Altogether 6 extras which is conceded. 1-6 which is hit by Pahad. The last over. 8 required for the victory for New Star. One more good match is in a way. One more good match is underway of this first day of this prestigious Sauhardha Trophy 2023. It's organized by the Gori young boys under the leadership of Alfaz and all the members of Gori young boys. And the memory of sweet memory of late Suresh Bian. So bowler Afrim has got a responsibility to restrict 8 runs in the last over. But New Star Kunjatturu, after they got a good comeback in the previous over, they wanted to complete the job. 8 runs from 6 ball. I want to see the field set. The punishment already given for the fielding team for exceeding a time limit. So we can see that fielders inside the ring. 1, 2, 3, 4, 5 inside the ring. Only 4 outside the ring. This time placement hasn't made towards the mid wicket. They're looking for second. In comes a throw, and it's not a good end to throw. Absolutely poor piece of thinking that by the fielder, isn't it? He wanted to return the ball into the hands of the wicket keeper. It's going to be long. It is going to be a distance is going to be very large. At the same time, the batsman has got plenty of time to come back for the second. Now ball to ball. 58 means 5 balls and 6 runs required for the victory. 5 balls, 6 runs required for the victory. 5 for the tie, 6 for the win. Here is again a frame. This time swings it down to mid wicket region and dropped by the fielder. We just wait for the umpire signal. 6 signal by umpire. Can you believe this? What a sloppy piece of fielding by the fielder. Unbelievable. You need to take the catch, isn't it? Oh my goodness. He's not in the right position. He's not in the edge of the boundary line. If he's in orthodox mid wicket region and just inside the boundary, he can get the maximum. But here is the batters finishing the match here for Kunjatturu. New Star Kunjatturu. They won the match in the last over on 4 deliveries to spare. Have a look at that stroke there from the batter Farvez. Hit that one pretty hard. Have a look at the fielder. He's not orthodox. He's a couple of yards inside the boundary line. But it's very difficult for him to run back to take the catch. But ball is after hitting his hand, went outside the boundary line. And New Star Kunjatturu won the match. The thrilling victory for the team. It's a 58 and they won the match. And now it's the time for announcement of the man of the match of the fantastic match.
It's now time to announce the man of the match. The man of the match, which is goes to whenever his team is wanted the big shot, man is came into the middle as a number 8 batter, but he's changed the complexion of the match. Is none other than Pahad of New Star Kunjatur, who judged as a man of the match. So that I request Pahad to collect your man of the match award from our chief guest. ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ತಂಡದ ಫಹಾದ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. He scored unbeaten 13 valuable runs and one that is inclusive of 2 sixes in difficult time. ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಹಾದ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ತಂಡದ ಫಹಾದ್ ಇವರು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಫಹಾದ್ ಇವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದಂಥ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ
ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಆದಂಥ ನಂದನ್ ಕುಲ್ಶೇಖರ್ ಇವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಫಹಾದ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. I request Fahad to please come to the presentation dais to collect your Man of the Match award for his wonderful performance. 2 sixes in a difficult condition, which is changed the complexion of the game. And he will go in to collect Man of the Match award from Nandan Kulshekar. Thank you very much, Nandan. And congratulations for Fahad for his match-winning innings for his team. And we are coming to the next match, match number 3 of the day number 1. And match will be played between Zaman Boys Kaladka versus Divin Star Liberation Zaman Boys versus New Star Kunjaturu, the next match. I request Sarhan Ahmad as well as Sarpras to please report here for the tossing ceremony. ದಯಮಾಡಿ ಸರ್ಹಾನ್ ಅಹಮದ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಇವರು ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾನು ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ. So here we going to be a tossing ceremony. Captain of New Star Kunjatur as well as Zaman Boys Kaladka, and a toss which is on by captain of Zaman Boys Kaladka, Rashid Baba won the toss, and just wait for the decision of the captain. And the toss-win captain will going to choose dugout, and 2 dugouts in the memory of late Kishore as well as Jagu. One is a fantastic former captain of Gori Young Boys, and one is one of the biggest supporter of Gori Young Boys, Jagu, as well as late Kishore. And the 2 dugouts which is situated in the memory of 2 very good supporter and very good player of Gori Young Boys. So we are into the 3rd match, and before the innings will going to start here, the match will going to start here. It's time to change in commentary box as well, and it's over to Gopi. Thank you.
ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟು ಟೆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನೇಮ್. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 3 of this prestigious cricket tournament, Sauhardha Trophy 2023 is now going to begin, and this tournament is organized by under the great leadership of Mr. Alfaz, and the sweet memory of late Suresh B, and the backbone of Gori boys who expired a couple of years ago. In his sweet memory, this tournament is now proudly organized by Mr. Alfaz in the name of Sauhardha Trophy 2023, and the match number 3 of the day 1 of this prestigious cricket tournament is now going to start between Zaman Boys Ka Ladka versus New Star Kunjatur. So the openers Pradeep and Sattar, meantime the bowler is Mustafa, who starts the fresh proceedings from commentator box, and the first ball of the match is now coming up. पहली गेंद लेकर इस वक्त मुस्तफ़ा तैयार, जबकि प्रदीप इस वक्त सामना करते हुए, और मैच की पहली गेंद इस वक्त मुस्तफ़ा के हाथों से प्रदीप के लिए। पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ, और पहली गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को खेला स्क्वायर लेग पर, रन के लिए दौड़ पड़े, इस बीच रन का खतरा, लेकिन अंतिम क्षण में थ्रो स्टंप्सों पर नहीं टकराया। स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे बल्लेबाज, बेहतर रिस्पांस नॉन स्ट्राइकर रन बल्लेबाज द्वारा, फलस्वरूप 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, और इस 1 रन के इजाफे के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। न्यू स्टार कुंजतुर का 1 रन बिना किसी नुकसान के, और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त रशीद, माफ कीजिए, मुस्तफ़ा इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सत्तार इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 8 ओवर प्रति पारी खेले जाएंगे, 8 ओवर्स पर साइड टू बी प्ले, और अगली गेंद, ये गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली परफेक्ट ऑफ कटर, लेकिन गेंद लाइन के बाहर टिपाई, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए सही तरीके से अंपायर रोलन पिंटो ने इसे नॉट आउट घोषित किया, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है। गेंदबाज फिर से एक बार प्रदीप, गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त मुस्तफ़ा, ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, विकेट कीपर चूके, शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में गेंद, वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 रनों पर। बिल्कुल एक बेहतर शुरुआत की जरूरत है यहाँ पर न्यू स्टार कुंजतुर के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर खड़ा करना है, अगर उन्हें दबाव डालना है जमन बॉयज का लड़का की सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप पर तो। और ओवर की अगली गेंद, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए, वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर, तो 2 रन वाइड के रूप में इस वक्त प्रदान कर चुके गेंदबाज मुस्तफ़ा। अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट, और गेंद को खेलने के प्रयास में चूंकि शॉर्ट स्क्वायर लेग पर जब तक गेंद फील्ड हो, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 4 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर, और एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज मुस्तफ़ा गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार।
लगभग 10 से 12 बार गेंद को जमीन पर पटकने के बाद ये गेंद रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन करते हुए खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, बैकवर्ड थर्ड मान पर बेहतरीन फील्डिंग, ओह मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन अंतिम क्षण में 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल, क्योंकि थ्रो काफी धीमा था और विकेट कीपर जब तक अपने आगे की ओर जाने के बाद अपने आगे की ओर झुककर जब तक गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। थ्रो में अगर थोड़ी सी तेजी होती तो निश्चित रूप से यहाँ पर खतरा पैदा हो सकता था बल्लेबाज के लिए, और 2 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 6 विदाउट लॉस इन द ओपन नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए मुस्तफा, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, थोड़ी सी सफल होते हुए लेकिन गेंद को मोड़ नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। 6 विदाउट लॉस, फर्स्ट पावर प्ले ओवर ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। प्रदीप सामना करने के लिए तैयार, मुस्तफा इस ओवर में अंतिम बार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ, इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए सफल होते हुए, स्टंप्स एक्सपोज करते हुए गेंद को इस वक्त स्वीप कर दिया, इम्प्रोवाइजेशन करते हुए खूबसूरती के साथ। देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त मोड़ा था, लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद इस वक्त निकली थी और स्क्वायर लेग फील्डर की बाईं ओर से होती हुई गेंद जाकर सीधे सीमा रेखा के सीढ़ियों पर टकराती हुई 4 रन यहां पर प्राप्त करते हुए बल्लेबाज प्रदीप, बेहतरीन स्ट्रोक उनके बल्ले से लगता हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद न्यू स्टार कुंजतूर टॉस हारने के बाद जमान बॉयज का लड़का के खिलाफ पहले बल्लेबाजी पर उतर आता हुआ एक बेहतर शुरुआत यहां पर कर चुका है, 10 रन बिना किसी नुकसान के जोड़ चुका है पहले ओवर के मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 10 विदाउट लॉस फॉर न्यू स्टार कुंजतूर, मेड अ प्रीटी गुड स्टार्ट against Zaman boys का लड़का in the match number 3 of this prestigious cricket tournament, Sauhardha Trophy 2023. So it's going to be Altaf, no, it's Tawfiq, both the bowler who starts the fresh proceedings. दाहिने हाथों पर द विकेट, ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, reverse shot, improvisation, fantastically struck, finds the gap as well, is gets at least couple for that, and a couple of runs completed, that couple run the scoreboard moving up to 12 now. बेहतरीन तरीके से improvisation करते हुए गेंद को इस वक्त खेला था 2 रनों के लिए बल्लेबाज ने, और बेहतर फील्डिंग वहां पर 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू हो चुका है और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद तक पहुंचना चाहा लेकिन गेंद सीधे पहुंची कवर पॉइंट फील्डर के हाथों में, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकल रही थी, गेंद तक पहुंचना चाहता। देखिए इस बार किस तरीके से हुआ था, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, गेंद तक पहुंचे जरूर, गेंद को खेला जरूर लेकिन गेंद सीधे पहुंची कवर पॉइंट फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 1 गिर चुका है। 17 की पारी समाप्त, 12 रनों पर पहला विकेट खो चुका है न्यू स्टार कुंजतूर। इट्स 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और तो पहली गेंद, अगली गेंद माफ कीजिए, यहाँ पर गेंद पर रन नहीं बना और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है यहाँ पर 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर गेंदबाज
इस वक्त तैयार, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बेहतर गेंद इस वक्त गेंद को खेलने के प्रयास में चूक एक बार फिर से गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला. Evershine Chokkabettu will takes over Divish Shanti Angadi in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. इस बार गेंद को फिर से एक बार स्ट्रोक्स खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला. 12 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है. दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद पल्ले का बाहरी किनारा, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 2 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है. 2 overs completed, 13 runs on the board. मिक्स स्टार्ट फॉर न्यू स्टार कुंजतूर. पहले ओवर में 10 रन बने थे, लेकिन इस ओवर में तौफीक ने बेहतर गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन प्रदान किए, 1 विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया और आखिरकार 2 ओवर की समाप्ति के बाद न्यू स्टार कुंजतूर 13 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर. इट्स 13 for 1 आफ्टर 2 overs. मुस्ताफा स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स, हिज सेकंड ओवर और पहले गेंद इस वक्त कमेंटेटर बॉक्स की एंड की ओर से इस वक्त शुरू होता हुआ और सामना करते हुए इस वक्त मंसूर. ओवर की पहली गेंद मुस्ताफा की, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी शुरू करते हुए, ये गेंद बेहतर गेंद थी. ऑफ द टॉस गेंद को बोलना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, 1 रन जरूर मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है. और एक बार फिर से गेंदबाज के हाथों में गेंद आते हुए और मुस्ताफा गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए सामना करते हुए इस वक्त प्रदीप. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चल करते हुए और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. मिड विकेट फील्डर को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया गया है. डीप मिड विकेट फील्डर को 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया गया है मिड विकेट पर और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज मुस्ताफा गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहता, थोड़ी सी सफल होते हुए लेकिन आखिरकार गेंद को उछाल नहीं पाया और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर रुक चुका है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर. फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रदीप इस वक्त सामना करते हुए, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए एक्स्ट्रा क्विक अगेन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, ऑलमोस्ट द बॉल केम अलोंग द ग्राउंड एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन. और जहां तक रनों का सवाल है, रन इस वक्त नहीं मिला, 14 रन पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 1 विकेट के नुकसान पर. फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए प्रदीप दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, ये गेंद स्विंग किया इस वक्त मिड विकेट पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं, यहाँ पर फील्डर पहुंच चुके हैं, वहां पर कोई फील्डर नहीं था लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से फील्डर काफी तेजी के साथ दौड़ कर आए और आखिरकार गेंद पर अपनी नजर गड़ाए रखते हुए इस कैच को बाखूबी लपका डीप मिड विकेट पर और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है. हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, देखिए किस तरीके से गेंद को लपका था दौड़ कर आकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से डीप मिड विकेट पर फील्डर ने, बेहतरीन कैच है. दूसरा विकेट गिर चुका है, प्रदीप की पारी समाप्त हो चुकी है. 7 रन उन्होंने बनाए, 8 गेंदों का सामना किया और दूसरा विकेट यहां पर न्यू स्टार कुंजतूर खो चुका है 14 रनों पर. इट्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. Badruddin, the number 4 batsman, is now comes out to the middle for New Star Kunjatur. इस वक्त वो गेंद का सामना करने के लिए तैयार, जबकि मुस्ताफा गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए
ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। फिर से एक बार गेंदबाज मुस्ताफा अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद अंदर की ओर आते हुए गेंद रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेला। ये भागते हुए के एक्स्ट्रा कवर फील्डर थोड़े से पीछे तैनात है और तेजी के साथ 1 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। मुस्ताफा इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अफसर से बाहर। एक बार फिर से वाइड का इशारा, दिशाहीन गेंद थी और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और मुस्ताफा अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद ड्राइव किया गेंद को लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट but the ball went in the gap at the cover point and because of that the batsman got a single for that stroke और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 overs completed, 18 runs on the board, 2 wickets lost and 5 overs remaining in overall calculation in their innings. So fantastic tournament. Fantastic cricket tournament is now progressing here in the name of Sauhardha Trophy 2023 which proudly organized in the late in the memory of a late Suresh B and under the great leadership of Mr. Alfaz organizing this tournament and then just talking about this tournament is now progressing along nicely. The first session of the third match of this tournament is now progressing here और इस वक्त काफ़ी लंबी बातचीत चलती हुई कि अगला ओवर किसको दिया जाए और बातचीत के बाद इस वक्त देखना यह है कि कौन से गेंदबाज गेंदबाजी पर उतरते हैं। Majid, the bowler, starts the fresh proceedings from that side and that means Suresh B and end और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज मंसूर जो कि इस वक्त सपना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलते हुए मिड विकेट शॉर्ट फाइन लेग इस वक्त मौजूद जबकि गली थोड़ा सा स्क्वायर तैनात इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त मजीद गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त गेंद कुछ हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद को इस वक्त खेलना चाहा था फ्रंट फुट पर जाने के बाद लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को खेल नहीं पाए, गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, बीट हो गए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। फुल टॉस इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को स्कूप किया, फील्डर के लिए मौका लेकिन फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन प्राप्त करने का। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त उछाला था लेकिन आखिरकार फील्डर डीप एक्स्ट्रा कवर पर जो फील्डर मौजूद थे काफ़ी पीछे और इस बीच बल्लेबाज के पास समय था 2 रनों के साथ अपना छोड़ यहाँ पर अपने छोड़ पर वापस आ सके। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस और गेंदबाज माजिद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। लेग स्पिन गेंदबाजी इस बार into the gap and this time it might be just inside the fence. Good piece of work made by the deep extra cover fielder और बल्लेबाज के पास सिर्फ मौका था 1 रन प्राप्त करने का। खूबसूरती के साथ एनफील्ड क्लियर करते हुए गेंद को उछाला था वाइड स्लॉग ऑफ पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर और मजीद एक बार फिर से यहाँ पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ऑफ स्टंप पर आते हुए बेहतर गेंद थी इस वक्त और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला।
स्कोर रुक चुका है 21 रनों पर और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए This time just gone for a wide swing, not succeeded. गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में, लगभग जमीन के सहारे गेंद आई थी और गेंद को उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में। डॉट गेंद, फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद। फुल टॉस, पुल किया, गेंद लॉन्ग ऑफ पर और लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर रोक ली गई है। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और विकेट इस वक्त उखाड़े गए और इस बार देखना यह है कि तृतीय अंपायर क्या निर्धार देते हैं। इट्स गोइंग टू बी ए थर्ड अंपायर। So 21 for the loss of 2 wicket. The scoreboard stays. और देखना है कि दूसरा रन पूर्ण करते समय यहाँ पर जब विकेट उखाड़े गए थे तब बल्लेबाज का बल्ला बैट क्रीज पर लैंड हो चुका था या नहीं। तो तृतीय अंपायर यहाँ पर इस वक्त इस रनआउट का परिशीलन यहाँ पर करते हुए So he's gone. He's out. Over completed. So 4 overs completed, 22, and the batsman is now backing to pavilion in the face of a run out. So third wicket gone and 4 overs completed. It's 22 on the board for the loss of 3 wickets.
सो फिफ्थ स्टार्ट्स इन द इनिंग्स और पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। इस बार उछाला लंग ऑफ पर और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। Absolutely fantastic struck this time. Just got that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style of a long offense. और देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, धीमी ले कटर गेंद थी और इस गेंद को मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करते उछाला स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक बल्लेबाज के बल्ले से लगता हुआ और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर। फहाद के बल्ले से ये छक्का झड़ चुका है। पहली गेंद पर छक्का लगाकर एक बेहतर शुरुआत वो कर चुके हैं। दाहिना ओवर द विकेट फिर से एक बार तैयार। ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहा, गेंद पहुंची इस बार निशाना और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। द रन आउट हैपेंड इन द स्ट्राइकर एंड जोकिम पर रन चुराना चाहा, लेकिन इससे पहले कि बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे स्ट्राइकर एंड पर सीधा थ्रो फील्डर कस्टम्सों को बिखेर कर ले जाता हुआ और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। It's 28 for the loss of 4 wickets. तो नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर हो चुका है और अपने ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार था। इन्हें तो ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया। गेंद पहुंची शॉर्ट कवर पर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। अगली गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 5th ओवर इन प्रोग्रेस। इट्स 29 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद। ये गेंद उछालना चाहा, लॉफ्टेड नॉट क्वाइट मिड विकेट, इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और गेंद लगभग फील्डर के आगे टिप्पा खाते हुए मिड ऑफ पर 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 30 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका। कुल मिलाकर 8 रन अब तक इस ओवर में बन चुका है। पहले ओवर में छक्का बेहतरीन तरीके से झड़ा था फहाद ने और इस ओवर में कुल मिलाकर एक गेंद अभी भी बाकी और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज रऊफ इस वक्त तैयार। अंतिम गेंद उनकी ओर की अंतिम गेंद लेकर तैयार। ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से नहीं मिलेंगे। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 5 overs completed, 30 runs on the board, 4 wickets lost and still in overall calculation it's going to be 3 overs remaining in their innings। देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। और जहाँ तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, इस वक्त कम से कम 50 के आंकड़े को यहाँ पर पार करना होगा न्यू स्टार कुंजतुर के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें जवन बॉयज का लड़का के सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप पर अगर दबाव डालना है तो जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। 6ठा ओवर प्रारंभ होता है, 6th ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स और इससे पहले कि 6ठा ओवर प्रारंभ हो आगे का आंखों देखा चुराने के माइक्रोफोन पर अंग्रेजी में सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. So, 30 for the loss of 4 wicket, New Star Kunjaturu, and after completion of over number 5, and one more extra which is added total, and with that extra score number was under 31 for the loss of 4 wicket. Tawsif is from the far end. Tawfiq, right arm over the wicket, bowls and went for the mighty stroke. This time going for a single chance of run out. At last that ball hits a stump.
God, slight a bit of comedy of error, isn't it? And because ball which is not really coming to the coming towards striker's end, very slowly, might be the ball is slipping out of his hand, but ball is able to hit the stump at last moment. Have a look at that one in a replay. Looking for the expansive drive, slight a bit of fumble from the fielder. And have a look at that. The fielder returns the ball. He's just hitting the ball into the ground. And have a look at how slowly that ball went into the stumps. And at last, the batter finding himself short of his crease. And he's back into pavilion. Farviz is back into pavilion. He's a batter who did a great job in the previous match against Bandar Brigade. And he's back into pavilion. And Fahad slight a bit of promoted up in the order. And after that, he played a good innings for his team in the previous match. Still, he's batting in the middle. And Satish Mujungao is a new batter. One more very good performer as far as the cricket in neighbouring district, Kasaragod district is concerned. And one more wide has been bowled there by the Tawfiq. And with that extra cover, numbers on to 32 for the loss of 5 wickets. Tawfiq again back to his bowling mark from the far end. Suresh, late Suresh BN right arm over the wicket balls. This time Satish off the mark by placing the ball down to cover point region for a single. With that single score numbers on to 33 for the loss of 5 wickets. Satish is an experienced campaigner, Satish Mujungao, and the very useful middle order batter can be the very handy in the slog overs. And here is again the bowler from the far end, Tawfiq, right arm over the wicket to Fahad. Fahad this time looking for the reverse stroke, but he got bat onto that. Not quite intended placement he wanted to. He wanted to get that one down to third man and backward point region, but ball went towards deep cow point region. He got a couple of runs for that. With that couple of runs, cover numbers on to 35 for the loss of 5 wicket. And Fahad is played a very good innings in the previous match and he's become the man of the match. Zaman boys coming to Zaman boys. In the recent seasons, they are performed very well, especially in the UCG cricket ground. And this time, catch it is a call, but ball which is landed no man area. There is no fielder in the square leg inside the ring, so that before the fielder from the deep square leg region to run to front to collect that one, there is ample time for the batter to collect the single. 36 for the loss of 5 wicket in the over number 6 is in progress. Tawfiq again. Back to his bowling mark. Short run up, right arm over the wicket pass umpire Mohan Ayadi. This time Satish, he's also wanted to go for the big shot by playing the wrist. They are coming back for the second. In comes the throw from the Baba, but returns the ball towards the non-striker's end. But this is not a good end to throw. There is a golden opportunity of run out which is created in the striker's end. But Baba looking for the run out in the non-striker's end so that both the batters are safe and they completed that couple of runs. With that couple of runs for the cover numbers on to 38 for the loss of 5 wickets. Frustration for the bowler because it's a leg by, and leg by getting a couple of runs means always a little bit frustration for the bowler. Tawfiq again bowling right arm over the wicket. Satish try to swing that one, try to reach the ball. There's going to be one more extra, 1 + 1, 2 to the total. 2 bonus runs for team Kunjaturu. Each and every run going to be very crucial. Score numbers on to 40 for the loss of 5 wicket. The over number 6 is in progress. This time again, lovely shot there from Fahad. This time ball went very quickly to the fielder, so that no question of getting a second here. Even the little bit wide throw coming from the fielder, but Satish and Fahad is not made their mind that they will not going for the second. Just a single run after completion of over number 6, and the team Kunjaturu 41 for the loss of 5 wicket. They're going exactly just under 7 runs per over. The good run rate maintained there by the batters of New Star Kunjaturu. Very hot indeed. It's not an easy condition for anyone, especially the player playing in this condition. Always going to be a difficult condition, because in our present might be in our in that
Weather report, if you see in the mobile, it shows only 33 degrees Celsius, but I think it's more than that. And it shows drizzling, but it's only drizzling for the players. And absolutely horrible condition. And highest temperatures so far recorded in this month of April, which is 39 degrees Celsius in Panamburu. The 41 for the loss of 5 wicket now. Over number 7 is in progress. Majid is brought into attack. The leg spinner, the magical leg spin bowler for the side of Zaman Boys Kalarka. This time he hit that one. He's hammered that one straight into the commentator box. What a magnificent strike! Absolutely, he strikes the ball as clean as a whistle. Absolutely, have a look at that one. Slight a bit short pitch delivery, and look at the camera work there, man. Absolutely fantastic, isn't it? Because that ball which is came a straight angle, the cameraman of 10 Media just missing that camera. Otherwise, that ball going to hit the cameraman who is in a straight angle in our commentary box. This time one more. This time one more. Fahad is dealing with the sixes. What a player. What a player. Have a look at that. One more magnificent strike. Again the short pitch delivery. Again the ball which is came into the batter. Of course, the ball which is came along the ground. When the batter is going for the strike, the ball is a slight a bit of short pitch. And batsman hammering it down. 50 comes up. 53 for the loss of 5 wicket. Fahad is looking so dangerous. After he played a fantastic game in the previous match. Now he's looking for a hat-trick 6. No, misjudged. He thought it might be the ball is going further far away, but well within the reach of his bat, but he's not offering any stroke. And Majid bowled the dotted delivery after that 2-6. Right arm over the wicket bounced. Fahad once again looking for the big one, and he's gone. Fahad is back into pavilion, and Majid is back very strongly after that 2-6. This time I think he survives. And one more slight a bit of short pitch delivery, but the line is outside the line of off stump. That's why batter might be might be better early into the strokes. Didn't got enough timing in the shot, and he pays the penalty for that. But entertainment innings which comes in India from Fahad. It's a 53 for the loss of 6 wicket. Fahad has scored a valuable 23 runs in 12 deliveries. For the next match, Divish as well as Evershine Chocobeto. Divish Shantiyangadi as well as Evershine Chocobeto captain, please be reported here immediately for the registration of their players' name in the official chart. First call. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತನದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. By call by umpire, one more single has been added to total with that 6 score numbers on to 55, 55 for the loss of 5 wicket. The over number 7 completed. Majid bowled a slight a bit of expensive over, but he came back very strongly after that 2 sixes which just came from his bowling. Then he finished that over with the 14 runs. Altogether is 2 overs no made and conceded 1 over no made and conceded runs, 14 runs, and he picked up a valuable wicket of Fahad after he's making a lot of damages. 55 for the loss of 5 wickets in the over number last will going to start. So last over going to start from the far end of the innings of so the timeout, in the sense the Zaman Boys Kalarka, there exceeds the time limit, so that we need to bring one fielder inside the ring, not more than 4 outside the ring.
And 5 fielders inside the ring and a short mid-off extra cover square leg mid-wicket. First ball outside and off time. Wicketkeeper fails to collect the ball. Frustration for the bowler. By call by umpire Mohan Ayadi. One more single to the total scoreboard. Now moves on to 56 for the loss of 6 wicket in the over number late in progress and last is in progress. Off balls. This time batter wanted to play the reverse stroke again. Wicketkeeper not up to the mark, but this time I think ball which is inside edge of the bat of the batter, so that wicketkeeper fails to collect the ball. Batsman succeeded to collect the run, and with the addition of that single score, moves on to 57 for the loss of 5 wicket in the over number last is in progress. Last 4 deliveries remaining. Satish Mujingao is on strike now. We're going to take the strike of Rauf. So far, his first over, which is consists of 8 runs, and now 2 runs in 2 deliveries. Again, Satish played that beautiful reverse stroke. They will definitely come back for the second. Slight a bit of fumble. Batsman grabbing the opportunity. Good return coming from the fielder. Sudden chance of run out, which is missed out by the wicketkeeper. Because Satish is almost struggling to reach his home. The throw which just came from the deep is absolutely perfect into the hands of wicketkeeper. But wicketkeeper fails to collect the ball. This time he lofted in the vacant area. One bounce and collected by the fielder. But here is the batter running hard. Coming back for the second and completed a couple of runs. And with that couple of runs, scoreboard moves on to 61 for the loss of 6 wicket. Right arm over the wicket. This time Satish. Oh my goodness. He will going to finish the innings in a style. What a magnificent strike. He's really looking that he wanted to get a big shot in the last over. The 5th delivery of the over. Have a look at the short pitch delivery. Satish got all the time in the world to judge the slower one air from the bowler. And ball is which is hitting the advertisement board. And the scoreboard jumps into 67 for the loss of 5 wicket. Huge total on the body for New Star Kunjattur. The last delivery of the innings of Kunjattur. This time Satish went for the reverse stroke. Will it go into be one more boundary? Fielder behind the ball. The ball will go into cut it off just inside the boundary. Here is the batter cutting out for the 3rd. Even Satish running hard. Maybe he's looking for the 4th. But the throw which just came from the deep. 3 valuable runs has been taken there. And after completion of over number 8, total score is 70 for the loss of 6 wicket, and they set a target of 71 to win the match. Have a look at that friendly atmosphere in commentary box, and we can see in our monitor and senior most one of the big supporter of cricket and Amit Bhai from Mudabidris came from long way, from 35 to 40 kilometers. They everywhere when there is a tournament, he is a man. He is one of the big supporter, senior and senior most player member and senior citizen as well. Thank you very much, Amit Bhai, for your lovely support, wholehearted support for the cricket. And we have one more dignitaries out in the commentary box. We have right off, of course, my seat. I have Shiniket, one more the umpire. As a friendly atmosphere, Shiniket, definitely. And Arish Padil, we can see there. And Arish Padil in the scoring department. And Shiniket, one more, the very good umpires, a very young umpire, enjoying the game of cricket here in our commentary box. And absolutely, we have Satya as a scorer. So far, did a great job, and he's a very good player as well in season ball. And in this particular season, he performed a lot for his team, representing for Mangalore Sports Club, and one of the fantastic the batter. And altogether it's going to be a fantastic day for cricket, and 10 media of course having a fantastic live telecast of this cricket tournament. One more very good YouTube channel really got opportunity to get this Sauhardha Trophy 2023 to get the live telecast of this cricket tournament for the cricket lovers. So that's it, and after completion of over number 8, 70 is a huge total on the board.
70 and 71 to win the match here for team Zaman Boys Kaladka. We take a short break here, and after a short break we are coming back to the innings of Zaman Boys Kaladka. It's going to be a more interesting game of cricket. Thank you. Welcome back again, and going to be a target in front of Zaman Boys Kaladka. Two opening batters, successful opening pair, and the batter Azim and as well as Rashid Baba starts with the wide. Outside the line of off-stump umpire Roland Pinto has got no hesitation. Even the bowler has got a big smile in his face. Maybe he thought it might be a fair delivery, but ball is got extra deviation and just going away from, angling away from the right-hand batter, and a wicketkeeper behind the stump is not impressed with decision from umpire Roland Pinto, sir, saying that ball which is going away after getting a deviation. Bowler Farvez, right arm over the wicket, bowls to Azim. This time again one more wide, second wide of this over, and the Farvez starts with the wide. If you get any number of runs, I think it's not going to be enough if you continue that mistakes of bowling extra deliveries, extra runs. The 70 seems to be a winning total, but Zaman Boys Kaladka has got a formidable batting department. Oh, beautifully bowled, perfect one, chance of run out. Oh my goodness, it's going to be a disaster. It's going to be a disaster. Badruddin has got a ball in his hand, tried to hit the stumps in the wrong striker's end, but luckily Azim, that ball is missed the stump. Have a look at it on a replay. Oh, their goodness, he's almost is missing the stumps, isn't it? And what could be a certain chance of run out? It's going to be a difficult one because the angle where Badruddin has got, it's quite a bit of a cross angle. You can see one wicket. That's why he couldn't manage to judge that throw to hit the stumps, and he survives. Azim is the most dangerous batsman as far as the Zaman Boys Kaladka batting department is concerned, along with Rashid Baba. Rashid Baba is facing first delivery of this time. They're going up, but I think you can't do that for umpire like Roland Pinto, because of course they heard the sound, but ball which is not really hitting the bat, but bat hitting the ground. And that's what the sound they heard behind the stump. The wicketkeeper so confident, but umpire is not confident enough to raise the finger. So all happening when you are wanted to get the wicket off the batsman like Rashid Baba is always going to be a game changer. So that a lot of appeal coming behind the wicket and behind the wicket as well as the closing fielder. Again, lovely delivery there from Farvez. After that, it got two wide deliveries. Then a ball followed by two very good deliveries. So that it's a 3 balls and 3 runs which is scored already. And here is again the bowler bowling away from us. Farvez
Right arm over the wicket bounce. This time tries that one, but not really get that one. Got that one right from the middle of the bat. Placement is not good enough to get more than single there. With the single score, but Namuzan to 4 on the board without loss of any wicket. Outside the line of off stamp, and one more dotted delivery, and with that dotted delivery, scoreboard now remains on 4 without loss of any wicket. 4 without loss of any wicket. Last ball remaining, last ball. The first over is in progress. The last delivery remaining in this over. Right arm over the wicket bounce. This time switch it is comes into play. Beautifully played, executed lovely and nicely, but fielder is really run back very quickly to stop the boundary, and Azim completed a couple of runs in between. Altogether good over completed by Parvez. 6 came from that over, and just considering the fact that this is a power play is on, I think it's a good over, and especially when you're bowling against destructive opening batters like Azim as well as Rashid Baba. I think it's a good over there from Parvez. Instead of coming back to the equation, the scoreboard is 6, target is 71, and that means another 65 runs required for the victory in remaining 7 overs. 42 ball and 65 runs required for the victory, and it's going to be very interesting how well Zaman Boys Kaladka will go to get that total. But they got a very good record, very good track record in this particular usage cricket ground, especially coming back to that tournament which is held earlier in this particular cricket ground. Twice they become the runner of Zaman Boys Kaladka. And they certainly wanted to be one of the favorite of coming to the finals of this prestigious Sauhardha Trophy 2023, which is proudly organized by Gori Young Boys under the sweet memory of late Suresh B and under the leadership of course, Alfaz. So Riaz brought in attack as experienced campaigner, bowling from the far end. Rashid, oh my goodness, that ball looks like an opportunity for the wicketkeeper behind the stump, but the wicketkeeper is so excited, so couldn't manage to get up quickly, because when you are sitting behind the wicket, when it's going to be outside edge of the bat, very difficult for wicketkeeper to do the quick work, and it's too late when he's got up from the got off and try to get the catch, but ball which is missing his hand, and the scoreboard is 6 without loss of any wicket. Riaz again, right arm over the wicket to Baba. Baba this time lofted, but he got the distance. Fielder in the deep long off, just a spectator watching the ball going over the head of that long off fielder. Absolutely, it's an astonishing cricketing stroke there from Rashid Baba. Any ground seems to be very small. Any ball which seems to be not soft enough for the batter like Rashid Baba. It's been a fantastic struck there from Baba. Baba is really one of the favorite now. If he wanted to win the match, he is the one that need to play big innings for his team after he got a start here. Again, he wanted to continue that stroke, but this time the bowler Riaz showing his all experience, not really tried to bowl that quicker one. He bowled a slower one, so that the batter Rashid early into the stroke mistimed that one, and ball went straight to the hands of Badruddin. 12 without loss of any wicket. They're the same teams, of course. They met each other in the earlier tournaments. This time again going for the big swing of the bat. Again he missed it completely. Good comeback as for the bowler's point of view. Riaz targeting that line outside the line of off stamp. And Riaz again back to his bowling mark. Right arm over the wicket balls. Baba again tried to hit the ball pretty hard. Again timing is not coming proper. Good comeback. Absolutely good comeback. Can you believe this? Just a 6 runs which is conceded in the 5 balls. Then after hitting a 6, Rashid Baba a little bit struggling.
The final time in this over. Baba reaching for the delivery. Lack of placement. Fantastic, good, fantastic comeback here from the bowler's point of view. This is what you're talking about, the experience what Riaz has got. After that 6, he bowled 4 consecutive dotted deliveries to Rashid Baba and kept him very quiet. And after completion of over number 2, total score is a 12 on the board. Team Zaman Boys Color ka chasing 71 to win this match. "59 more runs required for the victory in remaining 6 overs. 36 ball, 59. Good goodness, absolutely it's going to be a tougher one, but not impossible. Azim so far is batting on 3. He is the one who is responsible for the success in the previous tournament. So real estate Vijay organized one cricket tournament. Baba, a little correction, Zaman Boys Karnataka, they become the runner-up, and his contribution is a lot. This man, Azim, he is a very good striker of the ball, danger batsman as far as the opposition is concerned. Fawaz bowled a wide, scoreboard was on 13. Then again, Azim went for the reverse stroke. They're going for, looking for second there, a fumble from the fielder. Pradeep there in the backward point, a slight a bit of fumble from him, batsman grabbing the opportunity to come back for the second, and they completed another couple of runs. Scoreboard now was on to 15 on the board without loss of an wicket in the over number 3 is in progress. Now slight a bit of change in field then. Deep square leg fielder, deep mid wicket fielder is being asked to come inside the ring. Might be the one fielder is stationed in a deep backward point for the reverse stroke, which is attempted by him. This time across the line, tried to swing that one. This is what we can see, that whenever the field changes comes into play, maybe that field set which is encouraging the batsman to go for a big swing of the bat because of there is a fielder inside the ring at square leg. And a fine leg, square leg inside the ring. That's why Azim wanted to play that one across the line. But bowler did a great job. He's bowled as per his field set. You know exactly, a little margin for error to bowl around the legs. So he bowled outside the line of off stump. And this is what you call all about the bowling. They need to bowl as for the field. Again, nicely driven, but not more than a single in the occasion there for Azim. The with a single score numbers on to 16 on the board without loss of an wicket in the over number 3 is in progress. Again, the bowler for Waze. Back to his bowling mark, past umpire Roland Pinto. This time, Baba wanted to get clear the ground. Definitely he will go to clear the ground because he is a tremendous striker of the ball. When he strikes with the power. He is the one kind of batsman who is more below with the power rather than the timing. Just reaching to the delivery. Outside the line of off stump. And score which is travelling down to deep extra cover boundary for a 6. I request Evershine Chokobet to captain, please be reported here immediately. Evershine Chokobet to Tanada Nayak, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ನಾಣ್ಯಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ. Evershine Chokobet to captain to be reported immediately for the tossing ceremony. And Rashid Baba absolutely hammering it down. He's a kind of batter. He's got a high bat lift. The high bat lift and just like a baseball player. And have a look at that one. High. He is the bat lift he's been. It's a very, very interesting how quickly he's able to bring his bat down, because it's not an easy cricket to play. When underarm cricket is concerned, if you have a high bat lift, it's very difficult to play underarm cricket because it takes the time to bring your bat down immediately. That means the bat speed is always going to be a key. So Rashid Baba has got a fantastic bat speed, so that is getting some success.
Lance Klusner is the one as far as the international cricket high bat lift player, the former cricketer of South Africa. Klusner is got such kind of high bat lift. So many international cricketers we can find that the batters has got high bat lift. The toss which is completed, the captain of Devish Stars Shanti Angadi, captain won the toss. Looks like they elected to ball first. So now we'll slide a bit of conversation going over about the quality of the ball. After that Baba got a 6. So altogether we can see that 12 sixes so far in this tournament and 7 boundaries. And very interesting because most of the time there will be more boundaries, the less sixes. But in this particular tournament we get 12 sixes and 7 boundaries. That means the bowlers, batters, more than the boundary, they wanted to get the maximum. Of course, there seems to be a Dunlop which is used for this tournament. The ball which is used for the tournament, a slight a bit of soft in the nature, but I think is an equal opportunity for both bowler as a batter. If the batter able to get that one right from the mid of the bat with the timing and power, they can get some maximum. And a batter like Pahad of New Star Kunjaturu who got some maximums, all to 3 to 4 maximums in 2 innings. Now Baba already got 2 in this over, in this particular match. Out of 12, I think only two batters got 6 sixes. They shared again the first ball, next ball, and nicely placed there by Azim to pick the single. With the single score, moves on to 24 on the board. Over number 3 completed, chasing 71 to win the match. Is 24 without loss of any wicket. And now just coming back to the equation, another 5 overs remaining, 30 balls remaining. Out of 30 ball, they have to get another 47 runs to win this match. Now as a comparison, not a comparison, the equation what we're talking about, there is no big difference now. After that one big over which just came in the previous over. Is altogether 17 runs difference between run and ball. So that 17, I think, for Zaman Boys Kalarka, I don't think it's going to be a huge difference because they got a fantastic batting department, especially the all we can see that hard hitter of the ball. And one of this batter will going to play the long innings, and then it's going to be a testing time for the New Star Kunjaturu, how to defend this huge total, big total. And the New Star Kunjaturu definitely they doesn't want to lose this match after getting a very good score of 70 runs. But they need to work hard. They need to work hard if they wanted to win the match. The bowler is being introduced from the far, and Shawan. Wait and see how Shawan will go into ball here. So far, both opening batters looking so good so far. 24 in 3 overs at a rate of exactly 8 runs per over. But still the required run rate is 9.40 runs per over. And that seems to be manageable if they bat well. Shawan, this time Azim lofted, but I don't think he will going to get the distance, but he will going to get the field. It's not like that. Rashid Baba has got opportunity when he in the previous over he cleared that boundary line, but this time Azim fails to get the distance in the same area. He didn't got enough power, didn't got enough timing. Maybe after he's hitting the ball, a slight a bit of shake of the handle, didn't got enough the power behind the stroke, and he pays the penalty for that.
The new batsman just came into middle as a jersey number 7. This time improvisation down to deep backward point region. Pradeep, the fielder there in the deep, so that batter has got ample time to complete the single. 25 comes up, quarter century. The batsman name, there is a 3 jersey number 7. Batsman name please. New batter's name. Saz is the new batter in, is in non-strikers end. Shravan bowls to Baba. This time slight a bit of ball is slide a bit outside the leg stump. He wanted to swing that one, again missed it completely. They completed 2, but his partner Saz wanted a 3rd as well, but Baba wanted to keep the strike, rightly so. He's just enjoying his batting, why not? He wanted to get the strike as much as possible. 27 for the loss of 1 wicket in the over. Number 4 is in progress. Shravan so far is bowled a tidy over, 4 time in this over. This time, that was a short pitch delivery, but Baba slide a bit early into the stroke. He couldn't manage to reach that short pitch delivery, and the ball is just coming under his bat, which is slide a bit of a slower one from the bowler, so that he didn't got enough timing in that. 28 for the loss of 1 wicket in the over. Number 4 is in progress. Shravan again. Semi wanted to get the pedal shot down to find egg, but is not really able to get that one from the middle of the bat, and toe of the bat in that occasion taken place, so that he able to get the single. With the single, scope moves on to 29 for the loss of 1 wicket. So far it's a so good over. 4 runs and a wicket in this over from Shravan, able to put some pressure onto the batter. Shravan to Baba, lovely delivery, beautifully balled right on the block hold. Instead of Baba drives the ball, I think he's almost blocks the ball, not to hit the stumps, but still the way the ball is traveling, that shows how much Baba is giving a lot of giving power behind his every stroke. And he picked up a single. He will going to keep the strike. Over number 4 completed after completion of over number 4, chasing 72 to win this match. It's 30 for the loss of 1 wicket. And have a look at the cameraman just catching the eagle, which is flying high in the sky. And absolutely it's a fantastic scenario we can see in UCG cricket ground in the monitor. Those who are watching a live telecast of this cricket tournament definitely will go and enjoy the camera work of 10 media, and catching the eagle, which is flying around even in the hot condition. But wait and see which team will go into fly here, because the little bit the ball need to fly, and because they needed another 41 runs to win this match. And Gopi having Baba in the middle, I think a match which is not yet over, and still they got opportunity, but asking run rate might be that's going to be a big problem, that more than 10 runs per over is a required run rate. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, बाबा जब तक क्रीज पर हैं, जमान बॉयज का लड़का की उम्मीदें यहाँ पर बरकरार है। 40 रन बनाने हैं, गेंदे बाकी हैं 23, 23 balls have to go in their innings, 40 more runs exactly they have to score for victory. और यहाँ पर बाबा शायद उनके बल्ले पर यहाँ पर कुछ हद तक दरार आई है, और लेकिन उन्होंने इशारे से कहा कि इस वक्त बल्ला को कुछ गेंद बाद वो बदलेंगे। तो इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज शाज इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद पैर पर टकराई और विकेट कीपर ने आगे क्यों ना कर गेंद को फील्ड कर लिया, रन नहीं मिलेगा। हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। 40 रन चाहिए, 22 गेंदें बाकी, और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, रिवर्स शॉट, इम्प्रोवाइजेशन, एंड ही हैज गॉट द गैप एज वेल. Perfectly struck. He just played that one with a twisted bat, and this time he played that one fine just wide of the short third man fielder and finds the gap as well. देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त खेला था और खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त इम्प्रोवाइजेशन के जरिए डीप थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर भेजने में सफल 4 रनों के लिए 4 जरूरतमंद रन उनके खाते में जुड़ता हुआ 35 रन बन चुके हैं। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए रियाज लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का। Straight away the pressure on the bowler,
गेंद को इस वक्त लक्ष्य से काफी बाहर की ओर उन्होंने फेंकी थी और रन से मिले एक अगली गेंद, ये गेंद ऑन साइड पर टॉप एज, मौका हो सकता है डीप मिड विकेट फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ शाज की पारी पर पर्दा यहां पर गिर चुका है। देखिए किस तरीके से गेंद को स्लॉग स्वीप शॉट के जरिए इस वक्त उछालना चाहा था, गेंद को उछाला भी लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, प्लेसमेंट भी बिल्कुल गलत और डीप मिड विकेट पर इस कैच को फील्डर ने बाखूबी लपका। तो शाज का विकेट यहां पर गिर चुका है और 36 रनों पर दूसरा विकेट हो चुका है। जमन बॉयज का लड़का के लिए समस्याएं यहां पर और बढ़ चुकी है। द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर देम। इट्स 36 for 2 इन ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। तो यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा तो इस वक्त रन से चाहिए 35 more runs now they have to score for victory, 20 balls remaining in their innings। और नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ रशीद बाबा ऑफ द स्ट्राइक इस वक्त हो चुके हैं और इस बीच अंपायर उन्हें वापस भेजते हुए शायद निगदित समय के अंदर वो शायद उनका बल्ला बदलने के लिए बैट बल्ला जो कि बदलने के लिए इस वक्त उन्हें वापस भेजा गया है। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 36 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 35 रन चाहिए 20 गेंदों में और कुछ हद तक तो इस बीच रियाज गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज के लिए तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त खूबसूरती के साथ एनफील्ड क्लियर करते हुए कवर की दिशा में गेंद पहुंची जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 37 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। कम से कम 1 या 2 चौके या छक्के की इस वक्त सख्त जरूरत कम बैक करने के लिए जमन बॉयज का लड़का के बल्लेबाज को। रशीद बाबा बैक ऑन स्ट्राइक और इस वक्त रशीद बाबा से काफी उम्मीदें लगाई गई हैं उनके टीम की ओर से। ये गेंद इस बार उछालना चाहा चूंकि ऑफ कटर गेंद थी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। बेहतर गेंद थी रियाज की, बेहतर ओवर की समाप्ति। 5 overs completed, 37 runs on the board, 2 wickets lost, 34 runs required in remaining 3 overs. That means in remaining 18 deliveries and the required run rate is now gone up to exactly 11.33 runs per over and still they got 8 wickets in their hand। तो तख्ता अभी भी न्यू स्टार कुंजतुर का भारी लगता हुआ उनके गेंदबाज एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए, लेकिन मौका जरूर है इस वक्त जमन बॉयज का लड़का के बल्लेबाजों को बाउंस बैक करने का। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, 1 या 2 चौका या छक्का निस्संदेह उन्हें इस मैच में वापस ला सकता है। और हमसे दूर वाले छोर से सुरेश बीएन एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और नया ओवर प्रारंभ होता हुआ जमन बॉयज का लड़का की बारी में। बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर इस वक्त छा चुकी है। दोपहर के 2:30 यहाँ पर बज चुके हैं और धूप की तीव्रता इस वक्त इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ बढ़ती नजर आती हुई इस मैदान पर भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए ऑफ स्टंप से काफी बाहर, स्पेक्ट्रा वाइड और विकेट कीपर भी ठीक तरह से गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए विकेटों के पीछे। वाइड का इशारा और 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर। 39 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। मुजम्मिल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए रशीद बाबा स्ट्राइक पर इस वक्त आ चुके हैं। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद रशीद बाबा के लिए ऑफ स्टंप से बाहर, रन के लिए दौड़ पड़े विकेट की बढ़ चुके रशीद बाबा, रन पूर्ण कर चुके हैं। ओवर थ्रो लेकिन यहाँ पर बैकअप होता हुआ रशीद बाबा अपना बल्ला खो बैठे थे और जैसे उन्होंने रन पूरा किया घूमकर स्ट्राइक रन बल्लेबाज की ओर इशारा किया कि दूसरा रन नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर नहीं लेना चाहते हैं और इस बीच 2 रन न मिले और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 41 रनों पर। 30 रन चाहिए विजय के लिए, 18 गेंदें बाकी।
30 runs required in remaining 18 deliveries. The match is now still alive. जब तक रशीद बाबा है मैच इस वक्त जमन बॉयज के इस मैच में उम्मीदें बरकरार रहेंगे. ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, मच स्लोअर लाइन दिस टाइम, बॉल बाय द बॉलर मिसिंग जस्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 41 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. छठा ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है. 41 for the loss of 2 wicket at the start of the 6th over. 17 balls left and 30 more runs. Now they have to score for victory. गेंदबाज मुजम्मिल अगली गेंद रशीद बाबा के लिए ड्राइव किया. इस वक्त माफ कीजिए, इस वक्त खेलने वाले बल्लेबाज थे तौफीक. डीप एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को खेला और जब तक गेंद को वहाँ पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. 42 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर. इट्स 42 for the loss of 2 wicket in the over number 6 in progress. रशीद बाबा एक बार फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं और मुजम्मिल की गेंद का सामना करने के लिए तैयार. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए न्यू स्टार कुंजतूर के कप्तान ना, और इस वक्त लॉन्ग ऑन फील्डर को थोड़ा सा सीधा इस वक्त तैनात किया जा रहा है. मिड ऑन फील्डर को इस वक्त मिड ऑफ पर लगाया गया है और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए रशीद बाबा के लिए गेंद को उछाला लेकिन काफ़ी ऊंचा नहीं और सिर्फ एक मात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड पर बढ़कर पहुंच चुका है 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर. 43 for the loss of 2 wicket in the over number 6 in progress. और गेंदबाज मुजम्मिल अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज तौफीक इस वक्त सामना करते हुए और ये गेंद मुजम्मिल की. इस बार गेंद को उछालना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, परफेक्ट ऑफ कटर गेंद थी. इस वक्त गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए. आक्रामक प्रहार करना चाहते थे बल्लेबाज चूके और इस गेंद पर कोई रन यहाँ पर नहीं बना. स्कोर रुक चुका है 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर. फिर से एक बार गेंदबाज मुजम्मिल, ये गेंद इस बार चूके. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग विकेट कीपिंग बिहाइंड द स्टंप्स मेड बाय विकेट कीपर. जैसे ही आक्रामक स्ट्रोक खेलने के प्रयास में झुके, विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंची. विकेट कीपर ने तेजी के साथ यहां पर विकेट चटका दी इससे पहले कि बल्लेबाज दोबारा अपना बल्ला क्रीज पर रख सके. देखिए, हैव अ लुक एट दिस, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बिहाइंड द स्टंप्स. और इस बेहतरीन स्टंपिंग की बदौलत ये विकेट यहां पर गिर चुका है. 43 रनों पर तीसरा विकेट गिर चुका है. तौफीक आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए 2 रन उन्होंने बनाए, 5 गेंदों का सामना किया और ऐसा कहना पड़ेगा इस विकेट के पतन के साथ इस वक्त न्यू स्टार कुंजतूर का पलड़ा यहाँ पर कुछ हद तक भारी लगता हुआ. तो अंसार इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में, विकेट कीपर माफ कीजिए, अंसार थे जो विकेट कीपिंग उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस वक्त विकेट उड़ाई थी. और जहाँ तक सवाल है नए बल्लेबाज का, तो देखते हैं नए बल्लेबाज इस वक्त कौन से बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर उतरते हैं. तो जैसे ही बल्लेबाज उतरे, अंपायर रोलैंड पिंटो ने एक बार फिर से कुछ कहा कि इस वक्त कुछ कहते हुए कि शायद वहां पर विकेट गिरते ही आप बल्ला लेकर तैयार हो जाएं. जो भी बल्लेबाज वहां पर मैदान पर उतरेंगे देर ना करें. तो यहां पर मुजम्मिल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर तब विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज, नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला इस वक्त पॉइंट पर. ठीक तरह से इंप्रोवाइजेशन नहीं कर पाए. 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 44 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. और ओवर नंबर 6 की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है. 6 गॉन, 44 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. और ऐसा कहना पड़ेगा पहले 2 गेंदों में 4 वाइड रन प्रदान करने के बाद एक बेहतरीन वापसी इस ओवर में गेंदबाज मुजम्मिल कर चुके हैं. बाद के 6 गेंदों में सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किए और इस ओवर की बदौलत यहाँ पर तख्ता और भारी लगता हुआ न्यू स्टार कुंजतूर का. 27 to get in remaining 2 overs, 12 balls, exactly 13.5 runs per over. और एक बार फिर से रशीद बाबा ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं. तो ये कुछ हद तक जमन बॉयज का लड़का के लिए यहाँ पर ड्रॉबैक साबित हो सकता है. जितना ज़्यादा स्ट्राइक
रशीद बाबा को मिलेगा उतना ज़्यादा जमन बॉयज़ का लड़का को बेहतर होगा। तो देखते हैं पहली गेंद पर दूसरे बल्लेबाज क्या करते हैं, क्या आक्रामक स्ट्रोक अपनाते हैं या फिर सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते हैं, रशीद बाबा को स्ट्राइक देते हैं। तो गेंदबाज श्रवण गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार एक्स्ट्रा क्विकर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन फ्रॉम द बॉलर, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो पहली चेतावनी, फर्स्ट वार्निंग इस वक्त गेंदबाज को दी गई है। डेंजर जोन पर प्रवेश करने के लिए अंपायर के बिल्कुल आड़े आ गए थे गेंद को फेंकने के बाद, और आखिरकार इस गेंद पर बल्लेबाज को कोई रन नहीं मिला। बेहतर गेंद थी गेंदबाज की। एक बार फिर से श्रवण गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद थी, इस बार एक्स्ट्रा क्विकर गेंद। एक बार फिर से गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथ में। 2 गेंदें, राशिद बाबा अभी भी नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद। 10 गेंदें 27 रन, और मॉनिटर पर इस वक्त इक्वेशन दिखाई देता हुआ, और इस बीच गेंदबाज तैयार। ये गेंद इम्प्रोवाइजेशन किया, गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेला राशिद बाबा, काफी तेज अपील इस वक्त जारी की इस वक्त फील्डर हो, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। 1 रन मिला। 45-45, 9 बॉल्स रिमाइनिंग एंड 26 रन रिक्वायर्ड। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। बच चुके थे रशीद बाबा, इस गेंद पर 26 रन चाहिए, 9 गेंदें बाकी, और निस्संदेह अब ऐसा कहना पड़ेगा जमन बॉयज का लड़का के सारी उम्मीदें, सारी आशाएं सिर्फ रशीद बाबा के ऊपर तैनात। इस वक्त सामना करने के लिए तैयार श्रवण की गेंदों का, और श्रवण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार लेफ्ट एंड दिस टाइम आई थिंक इज गॉट द डिस्टेंस। तो इस गेंद से पहले मैंने कहा था जमन बॉयज का लड़का की उम्मीद है सिर्फ ये बल्लेबाज रशीद बाबा के ऊपर बरकरार है, और यहां पर देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था। जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एंड लफ्ट दैट वन इन अ स्टाइल लवर लॉन्ग ऑन फेंस। अब 21 रन 8 गेंदें, 1 या 2 छक्के और जमन बॉयज का लड़का को इस मैच में वापस ला सकते हैं। और देखना यह कि अगली गेंद पर गेंदबाज श्रवण कौन सा अस्त्र गेंदबाजी में प्रयोग करते हैं। दाहिना तो ओवर द विकेट। एक बार स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बॉलर, वाइड का इशारा। 1 रन मिला। 52 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। तो यहां पर वक्त समाप्त हो चुका है। स्टिपुलेटेड टाइम इज नाउ कंप्लीटेड, और एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। तो 4 खिलाड़ी मात्र अब 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। तो अंपायर इस वक्त कुछ बातचीत यहां पर करते हुए, और जहां तक इक्वेशन का सवाल है इस वक्त 19 रन चाहिए विजय के लिए, जबकि 8 गेंदें बरकरार। 19 टू गेट फ्रॉम 8 बॉल्स। और राशिद बाबा इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। श्रवण गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। अगली गेंद, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, एक बार फिर से वाइड। दबाव इस वक्त साफ नजर आता हुआ गेंदबाज के ऊपर। छक्का प्रदान करने के बाद 2 लगातार वाइड गेंदबाज श्रवण यहां पर फेंक चुके हैं। हालांकि 2 बेहतर गेंद के साथ उन्होंने शुरुआत की थी इस ओवर की, लेकिन उसके बाद छक्का लगने के बाद वो कुछ हद तक अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त खो चुके हैं, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार चूके बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली गुड वन फ्रॉम द बॉलर। गेंद पहुंची इस वक्त गली पर, एकमात्र रन मिलेगा। और ओवर थ्रो, खराब फील्डिंग। तो वहां पर इत्मीनान के साथ गेंदबाज या विकेट कीपर के हाथों में थ्रो कर सकते थे, लेकिन यहां पर थ्रो किया, गेंदबाज के काफी पहुंच से बाहर रहा, और जहां पर 1 रन मिलना चाहिए था वहां पर 2 रन मिले। और इस वक्त इससे भी अहम बात यह है कि राशिद बाबा इस वक्त स्ट्राइक पर फिर से वापस आ चुके हैं। अब 7 गेंदें बाकी, 16 रन चाहिए। अगर इस गेंद पर छक्का लगाते हैं राशिद बाबा तो निस्संदेह जमन बॉयज इस मैच में वापस आ सकता है। यह गेंद चूके बेहतरीन गेंद थी, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद, एकमात्र रन राशिद बाबा कीप्स द स्ट्राइक। 7 overs completed, 56 on the board, 15 required in last over। 15 रन बनाने हैं, 6 गेंदें बाकी। और जमन बॉयज का लड़का के लिए खुशी की बात यह है कि इस वक्त राशिद बाबा के पास स्ट्राइक है, लेकिन इस वक्त काफी थके मांदे नजर आते हुए
रशीद बाबा और दूसरे बल्लेबाज मैदान पर इस वक्त बैठे हुए हैं और कुछ हद तक पानी की मांग यहां पर करते हुए और तो 12 रन पिछले ओवर में बने और पानी ग्रहण इस वक्त करने के बाद राशिद बाबा और नज़ीर जो कि बल्लेबाज है अपने अपने स्वस्थानों पर लौटते हुए और यहाँ पर अंतिम ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ 15 रन चाहिए अंतिम ओवर में और गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए मुजम्मिल अपना दूसरा ओवर सुरेश बी एन एंड की ओर से इस वक्त शुरू करते हुए फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलते हुए और ऐसा कहना पड़ेगा छक्के या चौके ही अब जमन बॉयज का लड़का को इस मैच में विजय दिला सकते हैं। राशिद बाबा सामना करते हुए इस वक्त मुजम्मिल की गेंद का 15 रन चाहिए 6 गेंदों पर। पहली गेंद, दिस इज गॉन मेनी माइल्स, इट्स अ ह्यूज वन। Rashid Baba keeps the hopes alive for Zaman Boys का लड़का. That is an absolutely a huge six. Just look at this in the replay. Just stand and delivered. 5 गेंदे 9 रन और अगली गेंद पर देखना यह है कि गेंदबाज इस वक्त क्या करते हैं। तो 9 रन चाहिए, 5 गेंदे बाकी और सतीश निस्संदेह रशीद बाबा का यह छक्का उनके उम्मीदों को बरकरार रख चुका है। Absolutely, Gopi. That's absolutely monumental, isn't it? What a magnificent stroke. Huge six. If you want to get double six, I want to give the double six. 12 runs for that. But unfortunately, we want to give only 6 for that. But what a magnificent stroke, Gopi. Exactly, सतीश निस्संदेह बेहतरीन स्ट्रोक। अगली गेंद, यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया लंबा पर मिसफील्ड, राशिद बाबा रन के लिए दौड़ पड़े, स्ट्राइक और रखना चाहते हैं, स्ट्राइक का रन पर और राशिद बाबा का विकेट यहां पर गिर चुका है। राशिद बाबा खुद स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे और बिल्कुल चतुर सोच, जैसे ही गेंदबाज ने गेंद को कलेक्ट किया वहां पर उन्होंने विकेट को नहीं गिराया बल्कि थ्रो किया इस वक्त स्ट्राइकर है, पर वो जानते थे रशीद बाबा का विकेट कितना बेशकीमती है और उस बेहतर सोच के बदौलत, उस चतुर सोच के बदौलत रशीद बाबा का विकेट यहां पर गिर चुका है। निस्संदेह सतीश रशीद बाबा का विकेट का पतन अब जमन बॉयज को काफी खतरों में ढकेल चुका है। Absolutely, Gopi. It's absolutely absence of mind, isn't it? I don't think it's going to be necessary, but some thinking, what you call the presence of mind is better. Actually, we're going to keep the batsman Rashid Baba safe because I think the non-striker he need not left the crease until Rashid Baba coming to his striker's end. But here is what this non-striker did that. He wanted to get the run, but Rashid Baba left the crease. That's a big problem, isn't it? And that's a slight bit of absence of mind is costing a huge wicket. And if because of the subtle batsman Gopi, Baba is back into pavilion. The new batsman just came into middle, and I think it's going to be a good news here for new star Kunjat Bhai. They need to ball remaining deliveries for the incoming batsman, new batter. Exactly, सतीश नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस बीच ये गेंद ढीली गेंद थी इस वक्त, लेकिन इस गेंद का फायदा उठाने में असफल। अगर ठीक तरह से कनेक्ट करते तो शायद गेंद डिस्पैच हो सकती थी लॉन्ग सीमा रेखा से बाहर। शायद रशीद बाबा यहाँ पर होते तो शायद उस गेंद को कलेक्ट कर लेते। तो यहाँ पर 3 गेंदे 8 रन, 7 फॉर टाई 8 फॉर विन और 3 गेंदे बाकी। गेंदबाज इस वक्त तैयार, मुजम्मिल अगली गेंद, यह गेंद उछाला मिड विकेट पर 6 रनों के लिए। The match is now done and now 2 required in 2 balls. This is an absolutely flatter six. एक वक्त ऐसा लगा कि शायद फील्डर वहां पर गेंद को लपक चुके हैं, ऊपर गेंद छलांग लगाते हैं लेकिन लपक नहीं पाए। गेंद पहुंची इस वक्त, गेंद आई थी उनकी और फ्लैटर वर्जन पर काफी तेज रफ्तार के साथ। अब 2 गेंदे 2 रन और जमन बॉयज नाउ फर्स्ट टाइम इन दिस मैच दे आर बैक इन द गेम। अब घातक गेंदबाजी ही यहां पर न्यू स्टार कुंजतुर को इस मैच में वापस ला सकती है। तो एक और खिलाड़ी को अंदर बुला लिया गया, अब सिर्फ 3 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। तो 2 गेंदे 2 रन, 1 फॉर टाई 2 फॉर विन और गेंदबाज मुजम्मिल इस वक्त तैयार। न्यू स्टार कुंजतुर को इस वक्त कमबैक करना है तो इस वक्त 2 डॉट गेंदे यहां पर फेंक नहीं होंगे और मुजम्मिल इस वक्त तैयार। दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद इस वक्त गेंद को इस बार गेंद पहुंची नॉन स्ट्राइक लाइन पर और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है लेकिन रन बराबर हो चुके हैं।
scores are leveled. Just one required इन 2 बॉल्स, लेकिन बल्लेबाज जरूर आउट हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले वो अपना किरदार बाखूबी यहां पर अदा कर चुके हैं। तो निस्संदेह प्लेयर्स डगआउट में उनका इस वक्त हार्दिक स्वागत जरूर होगा। तो तालियां इस वक्त बजाते हुए, क्योंकि छक्का उन्होंने लगाया था और जमन बॉयज की डूबती हुई नैया को वो मझधार से इस वक्त बाहर निकाल चुके हैं। अब सही तक पहुंचाना क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाजों का काम है। 1 रन चाहिए, 2 गेंदे बाकी और 2 डॉट गेंदे इस वक्त फेंकने होंगे न्यू स्टार कुंजतुर के गेंदबाज मुजम्मिल को इस मैच को टाई करने के लिए। अगर मैच टाई होता है तो सुपर ओवर यहां पर खेला जाएगा। तो अगली गेंद, ये गेंद इस बार शॉट फाइन लेग पर निशाना और इस बार आउट, वाइड एंड दैट्स इट, वाइड का इशारा। और इसी के साथ जमन बॉयज कल्लड़ का are won the match in the second last ball of their innings with 2 balls to go in their innings, and that is an absolutely thrilling victory for the 27 needed in the last 2 overs, 15 needed last 2 overs, 27 needed and 15 needed in last over, and they reached the target because of that 2-6 which came from the bat of Rashid Baba and the other batsman Nazir. So in the last over, and because of that Zaman Boys Kalladka registered a memorable victory with just 2 balls to go in their innings. Fantastic match has been came to an end, and Zaman Boys Kalladka defeated New Star Kunjatur in the last over. तो यहां पर द मैन ऑफ द मैच undoubtedly the man of the match award goes to the man who fired a quick firing knock of 33 in with the 4 massive sixes. He scored 33 runs. Rashid Baba adjudged the man of the match, और मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करूंगा कि रशीद बाबा को कृपया स्टेज पर आए और अंडराम क्रिकेट के सबसे बड़े सपोर्टर जनाब हमीद मुडबिद्री, जो कि अंडराम क्रिकेट के सबसे बड़े सपोर्टर हैं, सबसे बड़े फैन हैं अंडराम क्रिकेट के, वो इस मैन ऑफ द मैच का इनाम प्रदान करें रशीद बाबा को, जिन्होंने 33 रन 4 छक्कों की मदद से इस मैच में उन्होंने बनाया है और अपने टीम को विजय दिलाई है। आई रिक्वेस्ट मिस्टर हमीद मुडबिद्री ऑफ द ग्रेटेस्ट, द बिगेस्ट फैन, biggest supporter of Andaram cricket, please distribute the man of the match award for the Rashid Baba for his fantastic knock of 33 runs including 2 massive sixes. So the next man, Divish Shanti Angadi, will takes over Evershine Star Chokkabettu will going to face Divish Shanti Angadi in the next match, and that match starts within a just short while. तो दिविन स्टार का मुकाबला होगा एवरशाइन के साथ, दिविन स्टार शांति अंगड़ी का मुकाबला होगा एवरशाइन चोकोबेट्टू के साथ अगले मैच में। एक छोटे से ब्रेक के बाद सतीश के साथ अंग्रेजी में हम आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।
Thank you very much, Gopi. What a fantastic finish for the match number 3 of the day number 1 of this prestigious Sauhardha Trophy 2023, which is proudly organized by Gori Young Boys and under the leadership of Alfaz and in the great sweet memory of Suresh Bian. And at last, the Zaman Boys Kaladka once again, they are showing their absolutely commanding in the batting department, where that Rashid Baba has finished the match. Of course, the finisher is different, but he is the one who taken his team into the right track, and it was a thrilling victory in the end. And now we are coming to the match number 4, and the fourth match will going to start here, and the fourth match will be played between Divin Star versus team Evershine Chocobetu. Evershine Chocobetu in the morning, they defeated new friends Krishnapura in a thrilling victory. Absolutely never looks like it's going to be Evershine will going to win the match, but I think at last they won the match with a fantastic depending that low score. And meanwhile, I request the extra player of Divin Star to be reported here immediately. Divin Star ಶಾಂತಿ ಅಂಗಡಿ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟೂ ಟೀಮ್ಸ್ absolutely they are good performer in their belt area, and of course the new Evershine Chocobeto, they are very good performer in the areas of Krishnapura, Chocobeto, Suratkal, and even Divin Star Shanti Angadi, there's a very good. Now is a big announcement which is came for the Baba that Mansoor of Zaman Boys Kalatka will going to present 1,000 rupees for Baba, and on behalf of Mansoor, Riaz of Gori Young Boys presenting 1,000 rupees for Rashid Baba for his outstanding batting performance of 33 runs, and which is a match-winning innings from Rashid Baba. And thank you very much, Mansoor. Congratulations, Rashid Baba, for wonderful performance, and thanks to Riaz for presenting this amount to Rashid Baba. So absolutely, it's a very good chase. 70s never looks going to be easy in this condition. The ball which is not that much of hard enough, but still for Baba is everything is possible. Umpire, just a minute. Jersey number 55, the Shagir. So Shagir will go into ball the first over, and he will go into ball right arm over the wicket to right-hander batsman Sauhardha. Shagir first ball wanted to sweep that one, but line is so difficult outside the line of off temper, and for the first ball it was going to be a start with the dotted delivery. So this time a lovely shot, improvisation from Sauhardha. The ball running down to deep backward point boundary for 4 runs between backward point and gully. That ball is went into the fence for 4 runs. With that boundary, they started, they opened the account 4 without loss of an wicket. And warm welcome for Naveen of Gori Young Boys, one who organized successful cricket tournament like, of course, real estate as well as Yuvaratna Trophy 2023. Warm welcome for Naveen on behalf of organizers and on behalf of all cricket lovers for this prestigious Sauhardha Trophy 2022. 23, little correction. And next one, batsman Sauhardha tried to reverse sweep that one, missed it completely. Then wicketkeeper behind the stump, no chance at all to miss the opportunity to collect that one. And there is a score which is stationed at 4 without loss of an wicket.
So mid on is there. There is a square leg in front of and behind the square. One fielder deep long on and deep long off. And right arm over. Oh, what a shot! That will going to be a neat and clean it. Absolutely instrumental cricketing stroke there from Sauhardha. He's a little master. It's not so easy for those who are very short in a size to get the distance. But he is the one. He's really got that one right from the middle. But have a look at that one in replay. Absolutely fantastic strike. Right from the middle of the bat with that timing. He just got that one into deep long on for a 6. Terrific shot. Absolutely delightful stroke there from Sauhardha. And scoreboard jumps into 10 on the board without loss of any wicket. It's not so easy to hit Shagir. He's a very economical and of course always bowls along the carpet. And here he is again. Went for the big slog sweep shot in the negation. Reverse stroke in fact. A reverse slog sweep shot. But this time Shagir is good thinking as far as the bowler's point of view. Seeing that batter is looking for the reverse stroke. And just is changing a line. Not really settled the batsman for that shot. And pitched outside the line of leg stump and defeats his bat, and wicketkeeper behind the stump Rafiq collects the ball and uprooted the bails, dislodged the blaze, but not really getting the result in his favour. 10 without loss of any wicket. Good start here from Evershine. Again wanted to drag that one. Absolutely good thinking there from Shagir. Good comeback after that. He conceded 6 and a boundary, but it's not enough for him to stop the left runs from the opposition. So after completion of first over, searching for the right track, Evershine 10 on the board, not 11. It's a 10 without loss of any wicket. Only 6 and a boundary, which is came from the first over. And it's 10 means it's a good start which is given by the batter of Evershine. After this tournament, with followed by one more Champions Trophy will going to commence in this UCG cricket ground. Nutan Friends Urva will going to organize a cricket festival in the name of Nutan Champions Trophy 2023 in coming 3rd, 4th, 5th and 6th of May in this same ground. And tomorrow there will be lots tomorrow. That means a Thursday. We will going to take that lots in the same in our UCG commentary box. And participate teams representatives been invited for the lots ceremony. Driven that one nicely down to deep long of region for single by Asif. With that single, Asif is off the mark, and total score of a little correction. Total score of Evershine Chukabitu is Muzan to 11 on the board without loss of any wicket. Very good start from the opening batters for the first over. This is second over of the power play, and where you can keep only 2 fielders outside the circle. There is a mid-on, but one fielder is standing. Of course, the mid-on now coming towards a short mid-wicket, and wideish long-on coming into the straight long-on. There is no long-off, but fielder which is situated between deep square leg and the mid-wicket. And one fielder at short square leg, one at fine leg, short third man. There is a back point, short cover point, and short extra cover. The field set here for the right-hander batsman Sauhardha. Sauhardha this time wanted to get that one into mid-wicket region, but wicketkeeper Rafiq fails to collect the ball, and by call by umpire with that excess cover Namuzan to 12 without loss of any wicket in the over number second in progress. Bowler Anis has been introduced to bowl the second over from the banner of Suresh B and N. This time up and over, not quite got that one from the middle of the bat, but it's quite enough for him to come back for the second before the fielder from a short extra cover region to run back towards cover point region. And valuable couple of runs has been taken. Not quite controlled that lofted stroke. Not a bad idea to go over the top in the power play over. And he got a couple of runs here. With that couple of runs, Coburn moves on to 14 on the board. Again, sharp incoming delivery negotiated very well by the batter. As if the last moment he's got a bat onto that, so that he managed to complete the single here. Absolutely fantastic cricket tournament which is organized here. And the last 3 matches is really good to watch. And I hope every spectators in UCC cricket ground, the viewers in YouTube channel of 10 Media, definitely they enjoy the game of cricket in this first day of Sauhardha Trophy. Absolutely flum. Sauhardha is wanted to swing that one. Again he shuffled across the line of the delivery,
And once he missed the ball, he's always going to be danger, finding his back foot on the midline leg stump. Have a look at that one. He's almost where he was standing, looking for the slog sweep shot, missed it completely, and without just waiting for the umpire signal, he's just walking towards the pavilion and respecting the decision of the umpires. So 15 without loss of any wicket after in the over number second is in progress. Anis has got a vital breakthrough because and the batter is Sauhardha, is looking so good in the middle after he's got a double figure for under his name. He's unfortunately couldn't manage to convert that start into good innings. Hero of the previous match, Munna, so walking towards the middle with the jersey number 00. As far as the 00 is concerned, Arshal Gibbs of South Africa, the former fantastic opening batters, wears the same jersey number 00. And first ball for him, and he wanted to turn the non-side region. His partner Asif almost charging down the track to get the single, but Munna is not interested because he doesn't know where the ball is. That's why he's not interested for the run. Good over there from Anis, a kind of restriction which is required in that over, and he just produced that over for Divistar Shanti Angadi. After completion of over number 2, still I think Evershine Jacobet has got a good position. 15 for the loss of 1 wicket. They're going exactly 7.5 runs per hour. Is always going to be a good start in any format of a games. Sunny and a bright afternoon. Absolutely, it's going to be a horrible condition. And of course, we are almost inching towards the end of the season. We are only going to get only 1 month of cricket in this season, and a lot of cricket left in this 1 month. But I think it's always going to be a testing time for the players as well as the umpires in this last 2 months, April and May. Is always going to be a difficult condition, and they need to tackle with the sunshine, and absolutely it's horrible and very hot, more than 38 degrees Celsius of temperatures here in Bangalore. So 2 overs which is completed, 6 overs remaining in the innings of team Evershine Chocobetu. Wait and see how many runs they will go into score. No change in bowling from the commentary box end, and after Shagir slight a bit of expensive in the first over, but he's back very strongly that after he conceded boundary and a 6, and now he's bowling his second and last over of his quota. Right, over they get ball to Asif. Asif is nicely behind the line of the ball with the full face of the bat that pushes that one down to deep long off region for a single. With that single, Skobar Namozanto 16 for the loss of 1 wicket. So the batter like Asif is certainly is required as an opener batter, because on one side one batsman is in aggressive frame of mind, another end one batter who can deal with the singles so that he can keep the eye on the rotation of strike. I think this is always a good combination when you are having a opening batters. One is aggressive, one is a little bit rotator of strike is always going to be handy. Outside the line of time, going for the cut shot, but almost is trying to play that one away from his body. And Shagir bowled a quicker one, beaten by the face of that ball. The wicketkeeper behind the stump, Rafiq, did the job, and he's back to bowler. He returns that one back to bowler. 16 for the loss of 1 wicket. Shagir, right arm over the wicket. Copybook strike, beautiful shot, absolutely imperious cover drive, extra cover drive there from Munna. Copybook style, almost you can see that that stroke which is played with the technique. And the technique is the sense front foot which is coming to the line of the ball with along with the bat, and elbow is so good in that occasion that as a bend elbow has always been the key for getting into the line of the ball. And with the full face of the bat, he picked up a single and scored now 17 on the board. Again, his rise that were not quite intended. Asif, he wanted to get a couple there, but fielder is so quick in that occasion. Have a look at the throw from the fielder. He's got a good arm. So against his throwing arm, it's always going to be asking for trouble when you are coming back for the second. And that's why both the batters are subtle for the single. With that single, scored numbers on to 18 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. Shagir again back to his bowling mark. Short run up. Right arm over the wicket to Munna. Munna delicately played that one between backward point and short third man. But ball, just like mentioning about, not hard enough so that he will going to get the ball down to boundary, because the slow outfield
because of the softness of the ball which is not traveling very quickly. That's why we are having a less number of boundaries. If you compare to the number of sixes, the sixes is more than the boundaries. And that's one reason that the ball which is not traveling in the ground. And scoreboard is now 19 on the board for the loss of 1 wicket. Again, drives that one nicely down to deep cow point region for a single. Protection has been given there in the deep cow point. Good over there from Shakir compared to his previous over. First over is bowled a better line and length because he is bowled with some protection in the deep after completion of over number 3 and searching for the right track. Evershine Chocobeto 20 for the loss of 1 wicket. So bowling change from the banner Suresh B.N. end, late Suresh B.N. end. We have a dugout of former successful captain of Gori Young Boys, Kishore dugout, Kishore stand, as well as one of the big supporter of Gori Young Boys, Jagu, and Jagu stand. And I think it's going to be a perfect tribute for all these unforgettable personalities of Gori Young Boys. And we have the big cutout of Suresh B.N. and in front of our commentary box. And here's a nicely chip that one down to mid-wicket region. This is a clever cricket from Asif. And they're turning out for the third. In comes the throw and they completed 3 valuable runs. Excellent running between the wicket. The very good running between the wicket. It's not so easy. It's not so easy. Asif looks like the bat which is stuck while he wanted to drag the ball, drag the bat. And he's just lost the bat from his hand. But he got the 3 valuable runs. That's important. Good placement. Good running. So with that 3 valuable runs, score moves on to 23 for the loss of 1 wicket. You can see the reaction of the batters while they're running the 3 runs in between the wicket. Looks they're so tired, even though Asif is not having a heavy body weight. They're very slim, but even he is also feeling a lot of tiredness because of that 3 running between the 3 valuable runs. White call by umpire Harish Padil. They're looking in different colors today after they're wearing a white color in the morning. Now they are looking in a red color. Outside the line of leg stump, it's going to be a wide. One more extra score. Moves on to 24 on the board. Loss of 1 wicket. The score remains on 24 for the loss of 1 wicket. Again, the wicket keeper behind the little direction bowler back to its bowling mark. Anish. This just searching for the ball after that fumble. Then Munna might be they got opportunity to him to back because he thought that it's all over. But Rafiq is still searching for the ball. That time the Munna has got a golden opportunity to back into his crease. But it's too late for him. But Rafiq at last finds the ball and he completes the job. Even it's late, but not late that the batsman can come back. But wicket number 2, which is back in the pavilion of team Evershine Chocobeto. It's 24 for the loss of 2 wicket. It's a big wicket. The wicket of Munna, who done a great job in the previous match, is back in the pavilion. Zahir is a new batter in. Is now coming to the middle with the jersey number 77. Zahir. Anish has got a wicket here. The wicket of Munna is always going to be a huge wicket for any bowler there because he's a key batter of
Evershine Chakopetu is back into pavilion. Anish to ball. Right arm over the wicket to Zahir. Zahir cuts at one, but not really able to get that one from the middle of the bat, outside edge of the bat. Ball went almost down to short third man region, so that they got ample time to complete the single. With that single, Asif back on strike. Zahir is off the mark with a single. Scoreboard is a 25 quarter century for the loss of 2 wickets. Anish again, right arm over the wicket balls. Driven uppishly, but quite safely over the head of that extra cover region. And before the fielder for dog off, Dave cutting out for the second run. Zahir wanted the second. Asif is not interested. He wanted to keep the strike, but I think it's definitely going to be opportunities created for the run out. But at last, both the batsmen are safe. One more over, good over, which is completed. A good comeback here by the bowlers of Divin Star Shanti Angadi. After that first over, they conceded 10 runs, but they pulled the things back. They conceded 16 runs after that. And altogether, after completion of over number 4, team Evershine Chocobetu, it's 26 for the loss of 2 wickets. And wait and see how many runs they will go to score in the remaining 4 overs. And a similar run that they can get 50 plus runs on the board. And wait and see how they will go to continue their batting, and wait and see how well Divin Star will go into restrict the runs of their opposition. Time to change in commentary box as well. I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our Hindi language. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो निस्संदेह यहाँ पर 4 ओवर के बाद द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग बिटवीन एवरशाइन चक्कपट्टी और दिविश स्टार शांति अंगड़। यहाँ पर हमारे एक मित्र, काफ़ी पुराने मित्र का आगमन हो चुका है। एक मंगला देवी क्रिकेटर्स के भूतपूर्व बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक जाने जाने वाले अनिल केवी, हमारे अजीज दोस्त, इनका आगमन यहाँ पर हो चुका है। और हम यहाँ पर अच्छी गेंद थी। सौहार्द ट्रॉफी संगठक और सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से श्रीमान अनिल केवी, इनका हृदयपूर्वक स्वागत यहाँ पर करते हैं। हार्टली वेलकम टू यू सर। और जहाँ तक का सवाल है, इस वक्त पहली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया। गेंद पहुंची इस वक्त मोड़ दिया था कहना पड़ेगा मिड विकेट पर, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 27 रनों पर। इट्स 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर। और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। समद जहीर इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। ही गेट्स एटलीस्ट अ सिंगल। इन फैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड एंड गेट इट कंफर्टेबली. So this is an absolutely fantastic running between the wicket. They completed the first run very fast and come back for the second run very safely in the end. Couple of runs added to the total और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर। बेहतरीन स्ट्रोक था जहीर का इनटू द कैप एज वेल। और एक बार फिर से समद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार गेंद को खेला बैक टू द बॉलर की दिशा में। अपना आस पूरी तरह छोड़ चुके थे इस बार नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज, लेकिन निशाना चूका और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज 1 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। तो एक रन उनके खाते में जोड़ा जाएगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 30 रनों पर। दाहिने हाथ उभरता विकेट, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। और इस बीच लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते विकेट, वाइड का इशारा अंपायर का। और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 31 रनों पर। 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर। अभी भी अपनी सही लेंथ और लाइन को तराशते हुए इस वक्त गेंदबाज समद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए आसिफ इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार ऑफ द टॉस गेंद को खेला इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में गेंद पहुंची। एक मात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा इससे पहले कि शॉर्ट फाइन लेग फील्डर गेंद को फील्ड करे और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर। इट्स 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। ये गेंद इस बार
गेंद को खेलना चाहा, नॉट क्वाइट मिडविकेट इन फैक्ट। और विकेट कीपर रफीक जब तक शॉर्ट पॉइंट पर जाकर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर और 7 रन इस ओवर में बने और 5 ओवर के बाद अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा 11 स्टार चुकाबेट्टू, Evershine star Chukabettu just searching for the right track. It's 33 for the loss of 2 wicket after completion of 5 overs. और छठा ऊपर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ बिल्कुल साफ शुभ्र नीला आकाश हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ, बादलों का नामो निशान नहीं और कुल मिलाकर बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है। और जहाँ तक का सवाल है, गर्मी की तीव्रता अभी भी उसी हद में बरकरार जिस तरह सुबह और दोपहर को थी। और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी इस मैदान पर करते हुए और इस श्रृंखला का इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सौहार्दा ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत मैच नंबर 4 का प्रथमार्ध इस वक्त यहाँ पर प्रगति पर और मुकाबला जारी है दिविश स्टार शांति अंगड़ी और एवरशाइन चुकाबेट्टू के बीच में। और गेंदबाज नौफल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद थी, फुल रनिंग गेंद थी, गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज नौफल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज जहीर के लिए ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन। परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद थी, लगभग जमीन के सहारे आई और गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 33 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, एक बार फिर से रन मिलेगा 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 और मिल चुका है 1 रन यहाँ पर। विकेट कीपर गेंद को टटोलते हुए रह गए अपने तीसरे चौथे प्रयत्न में, गेंद को जब तक वो फील्ड करने के बाद विकेटों पर निशाना दागे उनको निशाना चूकता हुआ नॉन स्ट्राइक लाइन पर बल्लेबाज 1 रन के साथ सुरक्षित अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं। 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 34 for the loss of 2 wicket in the over number 6 in progress. Still the batsmen of Evershine Chukabettu fighting for runs. इस बार रिवर्स शॉट, इस बार खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइजेशन किया लेकिन स्ट्रोक्स में ज़्यादा रफ्तार नहीं, शॉर्ट थर्ड बन से फील्डर दौड़े और जब तक वो गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका 35 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 35 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज नौफल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को खेला शॉर्ट मिड विकेट पर, रन के लिए दौड़ पड़े, तेजी के साथ 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। और इससे पहले कि मिड विकेट फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे विकेट कीपर के हाथ में और बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का पर्याप्त समय यहाँ पर था। 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर कम से कम 50 के आंकड़े को यहाँ पर पार करना होगा एवरशाइन चुकाबेट्टू के बल्लेबाजों का। गुरु ने शांति अंगड़ी दिविश शांति अंगड़ी के बल्लेबाजों पर दबाव बनाना है जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे। और गेंदबाज ये गेंद बेहतर गेंद थी, ऑफ स्टंप पर आती हुई लगभग सीधी रफ्तार के साथ विकेट कीपर रफीक चुके दोबारा खुद अपने दाईं ओर जाकर वो गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 6 overs completed, 37 runs for the over, just over 6 runs per over. The present run rate is now progressing yet for them. That means in exactly calculation it's going to be 6.17. The present run rate is now progressing here for them. And still in overall calculation it's going to be 2 overs remaining in their innings. तो यहाँ पर मुकाबला इस वक्त जारी है। इस मैच की विजेता टीम का मुकाबला अगले मैच में होगा, क्वार्टर फाइनल मैच में, जो कि जमन बॉयज कल्लड़ का और इस मैच के विजेता टीम के बीच यहाँ पर खेला जाएगा। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी पर इस वक्त उतरते हुए गेंदबाज ज़ईद इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। आसिफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 7वां ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ
जैद पहले गेंद लेकर तैयार, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलते हुए, शॉट फाइन लेग शॉट थर्ड मैन, मिड विकेट इस वक्त पीछे की ओर जाते हुए, डीप मिड विकेट पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त मौजूद, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। और जहाँ तक का सवाल है विकेट कीपर रफीक बिल्कुल स्टंप्स के अति निकट इस वक्त खड़े हुए, फील्डिंग में जमावट करते हुए, और ओवर की पहली गेंद लेकर जैद इस वक्त तैयार, दाहिने तो ऊपर द विकेट आसिफ के लिए, 7वें ओवर की पहली गेंद उनकी पारी का। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद स्टंप्सों पर टकराई और इसी के साथ आसिफ का विकेट यहां पर गिर चुका है। गेंद को इस वक्त रिवर्स शॉट खेलना चाहता है, लेकिन बल्लेबाज ने जितना पूर्वानुमान लगाया तो उससे कुछ गेंद ज्यादा तेजी के साथ आई। देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था, और गेंद उनके बल्ले को चीरती हुई उनके शायद उनके पैरों के बीच से निकलकर लेग स्टंप पर जा टकराए, गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ तीसरा विकेट गिर चुका है। 37 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर 7th ओवर इन फैक्ट। तो नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर हो चुका है, शाफी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जैद की गेंद होकर, और जैद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था, यहाँ तो ऊपर द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को खेल दिया, इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाती हुई रन बल्लेबाज को मिलेगा, इससे पहले की गेंद को डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर फील्डर फील्ड करके थ्रो करे, विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 39 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है, 3 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, और कुल मिलाकर अब उनकी पारी में 10 गेंदें बाकी। एवरशाइन को अगर सदा चमकना है तो यहाँ पर एक बेहतर स्कोर खड़ा करना होगा, और जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त जैद गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मिनट, इसका सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर। 40 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस, स्टिल द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन। और गेंदबाज इस वक्त जैद गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, जाहिर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ओवर की अगली गेंद, यह गेंद उछालना चाहा, बेहतर गेंद थी, और सिर्फ बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड के दौड़ाए, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज द्वारा कुछ खास रिस्पांस नहीं, और विकेट कीपर रफीक ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड किया और अपना काम तमाम किया स्टंप सेंड पर रन आउट के रूप में। देखिए किस तरीके से हुआ था, हैव अ लुक एट इन द रीप्ले, और आसानी के साथ ये रन आउट यहाँ पर रफीक करते हुए, और विकेट नंबर 4 यहाँ पर गिर चुका है। इट्स 40 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। तो अल्फाज इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में, और गेंदबाज जैद इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद एक्स्ट्रा क्विकर गेंद, और इस बार रिवर्स शॉट गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए रफीक का थ्रो, लेकिन यहां पर निशाना पर नहीं टकराया, बैकअप होता हुआ 1 रन का इजाफा, विकेट कीपर के हाथों से गेंद चुकी थी, 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 41 रनों पर। 41 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस, स्टिल द रन्स कमिंग इन सिंगल्स नाउ फॉर द बैट्समैन ऑफ एवरशाइन चक्काबेट्टू, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए जैद, ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को खेला इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में इंप्रोवाइजेशन करते हुए, लेकिन वहां पर फील्डर रक्षण प्रोटेक्शन जो कि मौजूद, डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा के पास, और एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। 7 ओवर की समाप्ति, 42 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 7 overs completed, 42 on the board, 4 wickets lost for Evershine Chokkabetto. तो
10 मीडिया द्वारा इस श्रृंखला का एक बेहतरीन लाइव कवरेज इस वक्त दिया जा रहा है यूट्यूब पर, और न सिर्फ इस देश में बल्कि विदेश में भी हज़ारों दर्शक इस श्रृंखला का मुआयना यहाँ पर करते हुए बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट 10 मीडिया के सर्व सदस्य इस वक्त देते हुए, और निस्संदेह एक बार फिर से हम संगठक और सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से 10 मीडिया इनके सर्व सदस्यों का अभिवादन करते हैं। तो जहां तक सवाल है इस मैच का, तो 8वां मैच, माफ कीजिए, चौथा मैच का 8वां और अंतिम ओवर पहले प्रथमार्ध का यहां पर शुरू होता हुआ। नौफल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और सामना करने के लिए तैयार इस बार शाफी। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, अंपायर ने इशारा किया कि उनके निर्धारित समय स्टिपुलेटेड टाइम इस वक्त समाप्त हो चुका है 33 मिनटों का। तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। तो अब कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी मात्र 20 गज के दायरे के बाहर मौजूद सीमा रेखा के पास। तो फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए डीप बैकवर्ड थर्ड पैन फील्डर को काफ़ी वाइडर इस वक्त तैनात किया गया है, और गेंदबाज नौफल ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज शाफी इस वक्त सामना करते हुए, ये गेंद इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला बैकवर्ड थर्ड मैन पर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, एकमात्र रन मिलेगा। ऐसा कहना पड़ेगा एट द लास्ट मोमेंट इस उछाल को, गेंद की उछाल को पहचान लिया था, विद ट्विस्टेड बैट गेंद को खेला खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर, लेकिन वहां पर रक्षण प्रोटेक्शन मौजूद, एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ 43 विकेट के नुकसान पर डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा के अंदर गेंद को फील्ड कर लिया गया था फील्डर द्वारा। अगली गेंद, ये गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, came along the carpet and went into the hands of wicket keeper, and there is no possibility of any run. The scoreboard stays at 43 for the loss of 4 wicket। अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, एक रन फिर से मिलेगा सिर्फ बाई का इशारा, ओनली बाई 44 for the loss of 4 wicket। 3 balls now left in overall calculation in their innings, और गेंदबाज नौफल अपने ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े, वहां पर बेल से गिर चुके हैं, और रफीक इस वक्त गेंद के साथ तीनों स्टंप्सों को उठा चुके हैं, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, किस तरीके से देखिए गेंद यहाँ पर हुआ था, अपील जारी है बेल्स गिरने की वजह से, लेकिन उसके बाद तीनों स्टंप्सों को गेंद के साथ रफीक ने उखाड़ दिया, और यहाँ पर यह विकेट गिर चुका है। विकेट नंबर 5, विकेट कीपर रफीक थे, और 5वां विकेट गिर चुका है 44 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। इंतजार है इस वक्त नए बल्लेबाज का, नवाज नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए। तो बाएं हाथ के बल्लेबाज नवाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और नौफल सुरेश BN एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद, रिवर्स शॉट, इस बार गेंद पहुंची बैकवर्ड थर्ड मैन फील्डर वहां पर चूकते हुए, और जब तक दोबारा खुद पीछे की ओर जाकर गेंद को वो फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था यहाँ पर 1 रन प्राप्त करेगा, गली पर कहना पड़ेगा, विकेट कीपर ने गेंद को ठीक तरह से फील्ड नहीं कर पाए, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, स्कोर बढ़कर 1 रन के साथ पहुंच चुका है अब 46 रनों पर, 46 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। और अंतिम गेंद बाकी, द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। गेंदबाज इस वक्त तैयार, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, नॉन स्ट्राइक रन पर रन आउट का खतरा, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका। सो द इनिंग्स इज अप एंड
Evershine Chokabutu finished with 46 for the loss of 6 wickets in the stipulated 8 overs. And fine piece of bowling performance given by the bowlers of Divish Star Shanti Angadi. They restricted the batsmen of Evershine Shanti Angadi, Evershine Chokabutu for just 45 runs. And जहाँ तक का सवाल है इस वक्त लक्ष्य का तो 46 रन इस वक्त दिव्य स्टार शांति अंगड़ के सामने उन्होंने रखा है 8 ओवर में. एंड एज फार द रिक्वायर्ड रन रेट इज कंसर्न्ड एग्जैक्टली 5.75 रन्स पर ओवर दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री. और यहाँ पर देखिए मॉनिटर पर इस वक्त दिखाया जा रहा है गोरी यंग बॉयज के व्यवस्थापक मैनेजर श्रीमान उमेश कोटियान जो कि इस वक्त मौजूद है. उनके साथ इस वक्त बातचीत करते हुए अनिल केवी और सतीश जो कि बेहतरीन अंग्रेजी कमेंटेटर हैं जो कि मेरे साथ लगभग 200 से भी ज़्यादा श्रृंखलाओं में हम दोनों ने आंखों देखा यहाँ पर सुना है. और एक बेहतरीन अपने ज़माने के बेहतरीन खिलाड़ी जो कि हनुमान क्रिकेटर्स की ओर से प्रतिनिधित्व वो किया करते थे. और जहाँ तक सवाल है अनिल केवी का तो मंगला देवी के एक बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक माने जाते थे. दोनों दिग्गज खिलाड़ी इस वक्त मौजूद टीवी मॉनिटर पर आप इस वक्त देख सकते हैं स्क्रीन पर. और जो श्रीमान उमेश कोटियान एक वक्त के बेहतरीन खिलाड़ी और आज के दौर के व्यवस्थापक गोरी यंग बॉयज के इस वक्त मौजूद है. कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर इस ड्रेसिंग रूम पर छा चुका है, इस कमेंटेटर बॉक्स पर यहाँ पर छा चुका है. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त मैदान का नज़ारा जो कि आप देख रहे हैं बिल्कुल विशाल सा मैदान उर्वा क्रिकेट मैदान लॉर्ड्स ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट के नाम से जाना जाता है. कई मशहूर श्रृंखलाओं के लिए गवाह है. और यहाँ पर एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला सौहार्दा ट्रॉफी 2023 के नाम पर एक शानदार प्रगति करते हुए जनाब अल्फाज इनके सारथ्य में. और इस वक्त 46 रनों का लक्ष्य दिव्य स्टार शांति अंगड़ी के सामने एवरशाइन चोक्काबुट्टू के खिलाड़ियों ने रखा है. देखना है कि 46 रनों का लक्ष्य 47 the target in fact 47 they have to score for victory. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त just under 6 runs for they have to score for victory. That means in exact calculation it's going to be 5.88 runs per over, the required run rate for them. 5.88 runs they have to score for victory in the stipulated 8 overs. That means in the stipulated 48 deliveries they have to score 47 runs with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और उनके पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. इस वक्त इंतजार है आरंभिक बल्लेबाजों का. दिव्य शांति अंगड़ी का फील्डर्स इस वक्त एवरशाइन चोक्काबुट्टू के मैदान पर छाते हुए और उनकी पारी की शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं. एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ जब दिव्य शांति अंगड़ी की पारी की शुरुआत यहां पर होगी. धन्यवाद. थैंक यू. So thank you very much, Gopi. So 47 is going to be a target for team Divin Star Shanti Angad against Evershine Chukabittu, and I think it's going to be a good total. And just considering the fact that the same team Evershine, they depended a small total in the first match when they depended 42 against team Friends, New Friends. Krishnapura, they depended very well, but every team which is not the same team. Even I think I can say that Divin Star, they got some good batting department as well. So that it's going to be a very good contest between these two teams. Both the teams has got opportunity to win this match. So opening batters came to the middle, and here is Nawaz will go and start the proceedings. Left arm around the wicket. First ball nicely plays it down to deep extra coverage for a single. With that single is off the mark, and they started their journey in this particular a match. They 47 which is going to be a target, and they got a first run. One without loss of any wicket in the over number first is in progress. So now that brings Harris into strike now after batter Rizwan is off the mark with a single. Harris will go into face next delivery. Oh, lovely delivery. Wrong one compared to the previous delivery which is coming into the batter. Now it's going away from the right-hander batsman. That's why the batter is not really understood. He thought that it might be one more incoming delivery, and but ball is just going away from the right-hander batsman, outgoing delivery, and maybe that was off cutter, but it's going to be leg cutter for the right-hander batsman because Nawaz is a left-hand bowler. Nawaz, a very experienced campaigner of
Evershine Chocobeto, left arm around the wicket. Switch it comes into play. Ball is in there, but out of the reach of that two fielder. Of course, fielder from backward point and cover point try to reach that one, but ball which is landed safely away from that fielder. Before the fielder will go and run back and fields the ball, ample time for the batter to complete the single. With that single, score moves on to 2 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. That is the first over of the power play. Long on and a deep extra cover the two fielders outside the circle in that power play. This time slower one, change up pace, but the batter completely missed out the delivery, because if he able to read that slowness, he can hit the ball down to square leg and fine leg. There is no protection in the deep because the power play is on. So the batter just missed that golden opportunity. But I think the bowler did a great job to ball that slower one. Nawaz balls, beautifully balled, absolutely perfect one, but equally well played there by the batter, just watching the ball, just seeing the turn of the ball, turn of the delivery, waiting for the turn of that delivery, then with the full face of the bat, he just drives that one down to extra coverage and for a single. With that single, score moves on to 3 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. Again, left arm around the wicket balls, slower one, beautifully balled him, cleaned him up. This is one of the weapon what Nawaz loves to use. Sometimes he's bowling slower one, very slow indeed. If you ball with a good line, then it's going to be a wicket-taking delivery. The batter wanted to sweep that one, but it's too late. It's too late for him to judge the line of the ball. Missed it completely. Then ball hitting the leg stump of the batter, and Divish Shanti Angadi. They lost their first wicket. 3 for the loss of 1 wicket. Nawaz produced a very important breakthrough, not really disappointing his captain. He's been asked to bowl the first over, 3 and a wicket. And it's a very good start here for team Evershine Chocobetu. Munna brought into attack from the far end. Sauhardha led protection, not Munna. Munna is standing down at short mid wicket. Sauhardha, one who starts the innings, is the same one will go into ball the second over of the innings of Divish Shanti Angadi. Has got good player in the side, but I think as a 44, 48, 47 to win the match is always going to be a fighting total. Just considering the fact that the ball which is used for this particular tournament, which is a slight bit of soft in the nature, it's not like that you can hit the ball, each and every ball for the boundaries and sixes, but you need to make a lot of hard work to get the big shots. Rizwan to have a strike. Sauhardha to ball from the far end. Right arm over the wicket. The second over of the power play starts with the warm-up delivery of the afternoon, which is gone outside the line of off stump too far, so that Arish Padil has got no hesitation to call that wide. With that extra score, moves on to 4 on the board for the loss of 1 wicket. Sauhardha again. Ball spent for the reverse sweep, but not really able to get that one from the bat because of it's not really implementing right strategy to get the reverse sweep. Missed it completely. The wicketkeeper behind the stump collects the ball back to ball. This time ball is in there for a while. Looks like it's got a healthy edge in the negation, as this one went for the mighty stroke on the onside region and got a healthy edge, but unfortunately that ball which is landed safely. Wicketkeeper behind the stump is well up to the stump, so very difficult for him to immediately to get up to take a catch, but ball landed safely between the keeper and the short third man. 4 for the loss of 1 wicket. This time he lofted. And he's got a proper connection. Ball is just hitting the branches of tree. Even the ball is landed inside the ground, but it's going to be a maximum. The beautiful looking stroke. I have looked at that one. Short pitch delivery all the time in the world to Rizwan to judge that one. And just waiting for that short pitch delivery. Lofted that one handsomely down to long on boundary for a 6. With the 6, scoreboard jumps into 10 on the board. This time I wait for the, of course it's a low full toss, maybe the slow full toss as well. The batsman just misjudging that full toss, and bowler just survived from that ball, and batsman missed it completely.
One more delivery. Oh my goodness, wicketkeeper. Absolutely presence of mind there from the wicketkeeper behind the stump. But it's the absence of mind here from Rizwan, isn't it? He's just thought it might be a juicy full toss, but just like I mentioned, it's a slow full toss and a low full toss, and the batter doesn't know anything about where the ball is, and there's no clue at all. So that the ball which is hands of wicketkeeper, and wicketkeeper quickly realizing that batter is out of the crease, he complete the formalities, and the wicket number 2, which is back into pavilion of Divistar Shanti Angadi. It's 10 for the loss of 2 wicket. The 10 for the loss of 2 wickets. Still they have to go a long way to go. 37 more runs required for the victory. The new batsman in is slowly walking towards the middle. Rafiq, one more experienced and quality cricketer for the side of Divistar, with a lot of responsibility. Usually is opener batter who loves to come up in the order to open the innings, but being the fact that it's a 8 overs game, there is a plenty of time for the batter to spend and get some good innings for his team. That's why he's coming in the number 4 position here, and wait and see how he'll going to justify that position. Being the captain of the side, definitely he's got a lot of responsibility in his shoulder to get that remaining runs for his team. Sauhardha bowls. This time off the back. Oh no! Ball is in there for a while. And that's definitely going to be a disaster if the ball which is carried to that extra cover fielder. Rafiq tried to dry the ball but fails to keep it down. Fortunately for him, that ball is came into that fielder in half volley. And otherwise it's going to be a disappointing finish for Rafiq. He survives. Good over completed there by Sauhardha. Fantastic over. And after completion of over number 2, chasing 47 to win this match. Now they are 10 for the loss of 2 wicket. That means 47 to win the match, and they are 10 on the board, and 37 more runs required for the victory in remaining 6 overs. That means 36 ball. They have to get another 37 runs to win this match. Nawaz to continue there from the commentary box, and 3rd over is in progress. He will go into bowl his 2nd over. He's been outstanding in his 1st over. Now he's bowling his 2nd and last over of his quota. Left arm. Bowls, quicker one, beaten by the pace, but ball deflected from the leg of the batter. Slight bit of disappointment here for the bowler. Leg by called by umpire Mohan Iyadi, with that leg by Skobar Namuzan to 11 for the loss of 2 wicket. And these 2 batters have to settle down the middle and need to play as per the condition required. The consolidation time here for the team Divistar Osangadi, Divistar Shanti Angadi. So one fielder has been asked inside the ring. Slight a bit of a change in field because left and right combination all is going to be challenging for the bowler to change the line and change the field set. And here is again Nawaz. Balls outside the line of off stump, and one more dotted area. Quite a different. We can see that Nawaz, when his earlier in his career, is bowled with a lot of run up with the pace, but he's in this present cricket is just shortening his length and try to get his line and length. This time tries that one. Lack of placement. Straight to the fielder. Chance of run out, but throw which is not up to the mark there from the fielder Asif. That ball is driven firmly into the hands of the fielder. Rafiq is just wanted to get the single there, where it is definitely going to be a risky one. If the throw which came into the stumps, over the stumps, definitely it's going to be end of the innings of Rafiq, but he is able to complete the single, the wide throw coming from the fielder. 12 for the loss of 2 wicket. Slower one, absolutely perfect one. This is what I'm talking about. Nawaz is so good in that, the master of bowling that slower one. Not really supposed to slower one, but getting some extra deviation, extra turn in that slow deliveries. It's 12 for the loss of 2 wicket. And the over number 3 is in progress. Nawaz
Bounce again, a lovely slow delivery. Appeal for leg before wicket, half-hearted. Just a half-hearted, knows that ball is going to miss the leg stump for too long because of that ball, which is half cutter, incoming delivery for the batter, but almost going down the leg stump outside the line of leg stump. So good bowling performance continues here from Nawaz. It's 12 for the loss of 2 wicket. Drives that one officially, but quite safely over the head of that cow point fielder. Then just a single here for the batter Ansar. Correction for batter Fayaz. So completion of an over, one more good over. So after completion of over number 3, chasing 47 to win the match. Still Divish Shanti Angadi are searching for the right track. Divish Star are managed to score only 13 by losing 2 wickets. So still they have to get another 34 more runs to win this match in remaining 30 balls. ಮೂವತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 34 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿವಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾಂತಿ ಅಂಗಡಿ ಎವರ್ಶೈನ್ ಚೊಕೊಬೆಟ್ಟು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. The equal battle is on between these two teams. It's going everybody's game. But so far I think Evershine Chokobetto able to bowl that 3 good overs. But job which is not yet over. Munna brought into attack from the far end. The previous match also Munna bowled well, batted well. But in this particular match he fails to contribute from the bat, but he can make a comeback in from his bowling. And fails in the sense he scored 2 runs from his bat. Walled him, clean him up, just like I mentioned about. He got the potential of making comeback in his bowling. Absolutely perfect leg cutter. The flighted one, have a look at that one really. I want to see that the dismissal. This is not off cutter, leg cutter, this is off cutter. The misjudged is by the batter. He thought it might be the outgoing delivery, but ball just coming into the batter. Absolutely perfect stuff here from Munna to get the wicket of 3rd wicket of Divish Shanti Angadi are now looking under pressure. Beautiful off cutter, absolutely perfect one. Pitching in a line, a slight a bit of a deviation. Batsman going for the drive, beaten by the turn and the flight. It's not so easy, so isn't it? Whenever the bowlers like Munna who are giving a lot of flight in the ball, it's only the brave and gutsy bowler can do that, because every time he's giving flight in the ball means if he is able to bowl the short pitch one, if he bowls the short pitch one, there's always going to be opportunity for the batter to swing that one. And here is Munna, right arm over the wicket. This time almost that ball came in half volley outside the line of half time, so that the new batter managed to handle that ball very well. Anish to pick the single. So with that single, score moves on to 14 for the loss of 3 wicket. Still 29 more runs required for the victory. 33 more runs required for the victory. Remaining 28 balls. That difference between run and ball, not a huge one. The 5 difference, but in this condition, that 5 looks larger and bigger because of the way that Evershine once again Chokobetto in the bowling department are looking so good so far. Munna, after that arrangement of field set for the left hand batter Rafiq, he will go into ball round the wicket. Right arm. Ball him, clean him up. Absolutely responsible cricketing stroke attempted by the captain of the side. I'm not really expecting that kind of attempt there from the batter Rafiq there, because he knows that he is a kind of bowler who can get a lot of turn in his bowling, flight in the bowling. After losing a wicket in this particular over, the captain's job is to stay in the middle, spend a little bit time in the middle, but losing him in this situation, putting themselves into more trouble. It's 14 for the loss of a wicket. Rafiq departs. Maybe Rafiq tried to break the shackle. He wanted to unsettle the batter, unsettle the bowler to get one big shot here. But he's choosing a wrong delivery for that. Absolutely, the ball which is pitched in a good length spot. No way going for the swing. He swings and missed. And batter is back into pavilion because bowler hits the stumps. Asif is the new batter, came into middle.
What a fantastic stuff there from Munna. 2 wickets in the gap of 3 deliveries. Ooh, that one more back. Fantastic delivery. Just enjoying the condition. This is what I want to say. The exploiting the condition is so important. He's just using the condition very well because he knows that the new batter is under pressure, and he wanted to get some good deliveries to use that. Again, nicely driven down to deep cover point region for a single. With that single, Skoba Namosa onto 15 for the loss of 4 wicket. In the sense 32 more runs required for the victory. 1 or 2 good innings is a badly required here for Divin Star if they wanted to back out this game. Munna balls. This time ball is just going away from the right-hander batsman, missing the direction. Lecutter in the negation, but going away from the right-hander batter. The batter completely missed out delivery, and there is no chance at all. Of course, he left that one rightly so. Wild call by umpire. This time paddled that one nicely. Good technique implemented by the batter to get the single. So with the single, Skoba Namuzan to 17 for the loss of 4 wicket. One more good over which is comes to an end here for Munna there. Searching for the right track. Divish Shanti Angadi still there looking in trouble. It's 17 for the loss of 4 wicket. In the remaining 24 deliveries, 4 overs, they have to get another 30 runs to win this match, and wait and see how well Divish Star will going to get this 30 in the remaining 4 overs, and wait and see how well the Varsha and Chokabeti will going to continue their bowling performance in the 4 overs. It's going to be very interesting. It's going to be anybody's game. And before the next over going to start, it's a time to ask Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश. So what a fantastic bowling performance continuing here from the bowlers of Chokkabettu. They conceded just 17 runs in the first 4 overs and capturing 4 wickets, and this is an absolutely fantastic. The first 4 overs completely belongs to the bowlers of Chokkabettu, Evershan Chokkabettu. और यहाँ पर देखेंगे इस बार शैकल ब्रेक करने के लिए जस्ट हैव टू ब्रेकिंग द शैकल्स किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त अपनाते हैं बल्लेबाज दिविश शांति अंगड़ी के. तो इस बीच 18 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है वाइट के रन के साथ. 23 गेंदे बाकी, 29 रन चाहिए. मॉनिटर पर इस वक्त दिखाया जा रहा है और मैच एक दिलचस्प मोड पर आकर रुक चुका है. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद रिवर्स इस बार स्वीप करना चाहा और इस बार ये विकेट यहां पर गिर चुका है. Absolutely brilliant piece of work behind the steps made by wicket keeper. गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर मोड़ना चाहते थे, लेकिन जैसे ही गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था. जैसे ही गेंद इस वक्त बल्लेबाज को वंचित करती है विकेट कीपर के हाथों में पहुंचे, विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट चटका दिया इससे पहले कि बल्लेबाज अपना बैकफुट क्रीज पर थोड़े से पीछे की ओर रखे और बेहतरीन विकेट कीपिंग यहाँ पर की. देखिए किस तरह से एब्सोल्युटली फैंटास्टिक और निस्संदेह इस बेहतरीन स्टंपिंग की बदौलत यह विकेट यहां पर गिर चुका है. 5 विकेट गिर चुके हैं 18 रनों पर. निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा दिविश शांति अंगड़ी के पारी यहां पर लड़खड़ाती हुई. निस्संदेह यहां पर जरूरत है एक ऐसी दिलेर भरी बल्लेबाजी की जो उन्हें अपनी मंजिल की ओर अग्रसर कर सके. गट्सी बैटिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं. और इस बीच समद का आगमन यहां पर होता हुआ और आसिफ क्रीज पर मौजूद और वो इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. बेहतर गेंद इस वक्त लगभग ओवर पिच गेंद पर इस वक्त ड्राइव की जगह बनाते हुए, लेकिन ठीक तरह से गेंद को खेलने में असफल. मिड ऑफ पर गेंद पहुंची, रन्स बनाने का कोई अवसर नहीं. स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर और 29 रन और चाहिए विजय के लिए. अगली गेंद लेकर तैयार. रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी. वन मोर गुड डिलीवरी, नॉट सो मिसिंग टू फॉर आउटसाइड द ऑफ स्टंप और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 18 रनों पर. फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार गेंद निकल चुकी है फाइन थर्ड मैन की ओर. गेंद का पीछा करते हैं फील्डर, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर गेंद को रोकने में सफल. और जहां तक सवाल है रनों का तो रन इस गेंद पर बल्लेबाज को मिलेंगे 2. सिर्फ बाई का इशारा. विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाते विकेट के पीछे और 2 रन बाई के रूप में इस वक्त 2 जरूरतमंद रन बाई के रूप में इस वक्त मिल चुके दिविश शांति अंगड़ी को और 20 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है. 20 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. फिर से एक बार
गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा 21 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स तोहफे के रूप में उपहार के रूप में इस वक्त गेंदबाज रन यहाँ पर प्रदान करते हुए और एक बार फिर से गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ तो राउंड द विकेट ये गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति हो चुकी है 5 overs completed 22 on the board 5 wickets lost and 25 to get in remaining 18 balls that means in 3 overs and the required run rate is now gone up to exactly 8.33 runs per over और जहाँ तक सवाल है इस वक्त एवरशाइन चुक्काबेट्टू के गेंदबाजों का तो अब तक पहले 5 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया है और अगर उन्हें इस मैच में विजय दर्ज करना है तो वो पहले 5 ओवर के गेंदबाजी के सिलसिले को आने वाले 3 ओवर में भी उन्हें रखना है बेहतरीन गेंदबाजी के सिलसिले को और जहाँ तक सवाल है दिविश शांति अंगड़ी के बल्लेबाजों का तो इस वक्त उन्हें बंधनों को तोड़ना है जस्ट हैव टू ब्रेक द शैकल्स और एक बेहतर ओवर जिसमें कम से कम 10 से 12 रन अगर बनते हैं तो निस्संदेह दिविश शांति अंगड़ी इस मैच में वापस आ सकता है और हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार काफ़ी तेज़ हवा मैदान पर चलते हुए मैदान से जिस तरह से धूल उड़ रहे हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हवा का रुख मैदान की दाईं से बाईं ओर है और मुन्ना इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए नई ओवर की पहली गेंद यह गेंद ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा यहाँ पर जैसे ही अपील की गई बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन प्राप्त कर चुके हैं लेग बाय का इशारा गेंदबाज गेंद को फेंकते ही सीधे अंपायर के सामने आ गए थे जोरदार अपील थी लेकिन अंपायर ने कहा कि गेंदबाज से भैया मेरे सामने अगर आप आ जाएंगे तो मुझे क्या दिखाई देगा स्टंप्स पर स्ट्राइकर हेड पर तो यहाँ पर बाल बच चुके हैं और 2 बेशकीमती रन यहाँ पर उनके खाते में जुड़ चुका है तो 2 रन यहाँ पर जोड़े जाएंगे 24 रन 5 विकेट के नुकसान पर और एक बार फिर से गेंदबाज दाहिने हाथों बढ़ता विकेट ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला कवर पॉइंट पर लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल और इस बीच 1 रन का इजाफा 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर 25 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस स्टिल इन ओवरऑल कैलकुलेशन इट्स गोइंग टू बी 4 balls to go in their innings इस बीच ये गेंद हल्के से शेयर किया खूबसूरती के साथ गेंद जाती हुई थर्डमैन की दिशा में गेंद का पीछा करते हैं फील्डर बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं जस्ट ओपनिंग द पेस ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट यहां पर गेंदबाज कोसते हुए शॉर्ट थर्डमैन फील्डर कि आप थोड़े से सीधे क्यों खड़े हुए थे यहां पर जबकि एक स्ट्रोक को अगर देखा जाए तो बेहतरीन तरीके से डिलिकेटली प्लेड जिसे कहते हैं गेंद जैसे ही उनके बल्ले को पार करे बल्ले पर बल्ला उड़ाया बल्ले के मुंह को खोलते हुए गेंद को हल्के से स्टीयर कर दिया खूबसूरती के साथ गैप चुनते हुए गैप ढूंढते हुए बल्लेबाज ने बेहतर स्ट्रोक 15 गेंदें बाकी 20 रन चाहिए इस बार गेंद को उछालना चाहा फॉलो थ्रू में नहीं गेंद तक नहीं पहुंच पाए 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है 28 for 5 द मैच इज नाउ स्टिल लाइव 19 रन टू गेट 14 बॉल्स टू गो एक और बेहतर मैच इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ सौहार्दा ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत इस मेगा क्रिकेट श्रृंखला के अंतर्गत और यहां पर मुकाबला जारी है एवरशाइन चुक्काबेट्टू और दिविश स्टार शांति अंगड़ी के बीच अगली गेंद ये गेंद लेग स्टंप पर गेंद को उछाला जा मिड विकेट पर मिसफील्ड इस वक्त एक बार फिर से नाखुश गेंदबाज इस वक्त कुछ डांटते हुए मिड विकेट फील्डर को और यहां पर काफी एक्साइट होते हैं इस वक्त वो जानते हैं कि हर रन इस वक्त बेशकीमती है और हर रन को रोकना है इस वक्त हालांकि गेंदबाज इतनी बेहतर गेंदबाजी यहां पर कर रहे हैं लेकिन जब कभी भी खिलाड़ियों के फील्डर के हाथों से मिसफील्ड होती है तो निस्संदेह गेंदबाज को इस वक्त इस ओवर में गुस्सा आया हुआ है तो यहां पर इस बीच अगेन दिस टाइम ही इज नॉट द थर्ड वन एंड ही हैज गॉट द डिस्टेंस इट्स अ बिगी और इस छक्के के साथ ऐसा कहना पड़ेगा दिविश शांति अंगड़ी आर नाउ स्ट्रांगली बैक इन द गेम 12 required 12 balls remaining
एंड अ फैंटास्टिक स्ट्राइक केम फ्रॉम द बैट ऑफ आसिफ। और यहाँ पर अंतिम गेंद पर जो छक्का आसिफ के बल्ले से लग चुका है, वो छक्का इस वक्त पूरी तरह यहाँ पर दिविश शांति अंगड़ी को इस मैच में वापस ला चुका है। तेरह रन इस ओवर में बने, 13 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर। और जहां तक सवाल है, इस वक्त कुछ फील्डरों की गलती भी थी और कुछ बल्लेबाजों का खेल भी था, और इस वजह से इस मैच में दिविश शांति अंगड़ी वापस आ चुका। अब ऐसा कहना पड़ेगा, एक चमत्कारी गेंदबाजी करनी होगी एवरशाइन चोक्कोबेट्टू के गेंदबाजों को इस मैच में, अगर उन्हें वापसी करनी है। डॉट गेंदे और विकेट यहां पर उखाड़ने होंगे कमबैक करने के लिए। शफी इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, देखा ऑफ साइड पर, लेकिन गेंद गई ऑन साइड पर। बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद एक रन प्राप्त करने के बाद दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। 36 रन 5 विकेट के नुकसान पर, 36 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। शफी इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। आसिफ पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर छक्का जड़ चुके हैं, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद इस बार गेंद को मोड़ दिया, खूबसूरती के साथ मिड विकेट पर गेंद पहुंची, 1 रन भी मिलेगा बल्लेबाज को। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर। 10 रिक्वायर्ड, 10 बॉल्स रिमाइनिंग, स्टिल द मैच इज नाउ इन बैलेंस। हर गेंद के साथ दबाव खिलाड़ियों के ऊपर बढ़ता हुआ, द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ टीम्स प्लेयर्स विद एवरी डिलीवरी। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार थोड़ी सी उछाल लेती हुई, रनआउट का खतरा, निशाना चूक चुका है, लेकिन बल्लेबाज यहां पर ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन गेंद पहुंची थी लॉन्ग ऑफ पर, जो फील्डर नवाज वहां पर मौजूद थे और नवाज ने गेंद को फील्ड किया और थ्रो किया। एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। 38 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, 9 बॉल्स लेफ्ट, 9 रन दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। और इस बीच गेंदबाज शफी डॉट गेंदों की सख्त दरकार इस वक्त चोक्कोबेट्टू को इस मैच में वापसी करने के लिए। यह गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया, मिड विकेट पर फील्डर मौजूद और इस कैच को लपकने में सफल। हालांकि अपना संतुलन कुछ हद तक खो बैठे थे जरूर, लेकिन गेंद को जमीन पर उन्होंने गिरने नहीं दिया और आखिरकार इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। बेहतर कैच, और देखिए किस तरीके से, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। गेंद को इस वक्त उछाला था और डीप मिड विकेट पर यहां पर कैच को लपका गया और आखिरकार यह छठा विकेट गिर चुका है। और have a look at this once again in the replay। काफी ऊंचा उछाला था, स्ट्रोक्स में उतना ज्यादा रफ्तार नहीं था। देखिए किस तरीके से, हालांकि कुछ अपना संतुलन कैच पकड़ने के बाद खो बैठे थे, लेकिन अपने शरीर पर अंतिम क्षण में काबू प्राप्त करते हुए इस कैच को बाखूबी लपकने में सफल। और स्कोर है 38 फॉर 6, 9 रिक्वायर्ड, 8 बॉल्स रिमाइनिंग। व्हाट अ फैंटास्टिक मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। और इस बीच नए बल्लेबाज, न्यू बैट्समैन जैद इस वक्त क्रीज पर मौजूद। 1 और 2 डॉट गेंदे निश्चित रूप से इस वक्त दिविश शांति अंगड़ी को कुछ हद तक मुश्किल में ढकेल सकते हैं, और उन डॉट गेंदों की तलाश में इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। इस वक्त हल्के से गेंद को पुश करना चाहा, विकेट कीपर चूके और इस बार थ्रो पहुंचा, लेकिन यहां पर इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर। तो जोखिम बड़ा रन चुराना चाहता, अंतिम क्षण में विकेट जब उखाड़े गए थे थ्रो को रिसीव करने के बाद विकेट कीपर द्वारा, तब देखने वाली बात यह है कि बल्लेबाज क्रीज पर अपना बल्ला बैट लैंड कर चुके थे या नहीं। तो इस रनआउट का परिशीलन इस वक्त तृतीय अंपायर करते हुए, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। तो एक बेहतरीन प्रतिष्ठित प्रेस्टीजियस क्रिकेट श्रृंखला सौहार्द ट्रॉफी 2023 जनाब अल्फाज इनके सारथ्य में ये श्रृंखला की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए दिवंगत सुरेश BN जो कि कई सालों से गोरी यंग बॉयज़ के आधार स्तंभ रहे थे, और उन्होंने गोरी यंग बॉयज़ को संवारा और आखिरकार एक बेहतर टीम के रूप में, शक्तिशाली टीम के रूप में उन्होंने टीम को तैयार किया। और आखिरकार वो हमारे बीच इस वक्त नहीं है, करीबन 3 या 4 साल बीत चुका है, लेकिन हमारे दिलो दिमाग में, जहन में वो हमेशा रहेंगे। और निश्चित रूप से यहाँ पर उनके याद में एक बेहतरीन श्रृंखला का आयोजन किया गया यहाँ पर सौहार्द ट्रॉफी 2023 के रूप में जनाब अल्फाज इनके सारथ्य में ये श्रृंखला, ये टूर्नामेंट एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए। और यहाँ पर अभी भी तृतीय अंपायर परिशीलन करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। तो आज इससे पहले जो 3 मैचेस खेले गए, तीनों मैचेस बेहतर थे, ये मैच भी एक दिलचस्प मोड़ पर इस वक्त आकर रुक चुका है।
इस मैच के बाद एक मैच और खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम और जमन बॉयज का लड़का के बीच इस श्रृंखला का क्वार्टर फाइनल मैच। और जहां तक सवाल है इस वक्त, not out is the call from the third umpire and the batsman survived. 39 the score and 8 runs required from 7 balls now. तो अब 4 विकेट सुरक्षित, 4 विकेट्स दे गॉट केप्ट इंटैक्ट, बाई का इशारा अंपायर का। और अंतिम गेंद इस ओवर में लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। रनों की सख्त जरूरत दिविश शांति अंगड़ी के बल्लेबाजों को, जबकि डॉट गेंदे और विकेटों की सख्त दरकार इस वक्त एवरशाइन चुक्काबेट्टू के गेंदबाजों को। तो मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। दर्शक काफी खामोशी के साथ मैच का इस वक्त मुआयना करते हुए, और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई, फील्डर वहां पर शायद मौजूद है। एक बार रन मिलेगा दूसरे के लिए दौड़ पड़ी, इस बार दोनों बल्लेबाज एक ही छोड़ पर मौजूद है। मिसअंडरस्टैंडिंग की बदौलत यह विकेट स्ट्राइकर एंड पर गिर चुका है। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े थे बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन स्ट्राइक पर मौजूद, नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद बल्लेबाज टस से मस यहां पर नहीं हुए, वहीं पर खड़े रहे। और यहां पर फलस्वरूप स्ट्राइकर एंड पर आसान सा रन आउट होता हुआ। देखिए किस तरीके से इस वक्त गेंद को खेला था, बेहतर स्ट्रोक था, शायद वहां पर दूसरे रन की संभावनीयता मुश्किल थी, और यहां पर क्लीन कलेक्शन था, नवाज का थ्रो, और आखिरकार नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज टस से मस नहीं हुए और वहीं पर खड़े रहे, और इसी के साथ आसान सा रन आउट स्ट्राइकर पर होता हुआ। तो एक रन जुड़ चुका है। 40 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट, 7 रिक्वायर्ड, 6 बॉल्स रिमेनिंग, दैट मींस लास्ट ओवर लेफ्ट। और अब अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा, द मैच स्टैंड्स इन अ बैलेंस। What a fantastic match and what a fantastic cricket tournament is now progressing here. The day number 1 of this prestigious cricket tournament, Sauhardha Trophy 2023 is now progressing here. और 6 गेंदों में 7 रन चाहिए विजय के लिए। सवाद गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, समद इस वक्त सामना करते हैं, तो सवाद समद के लिए, और 6 गेंदे 7 रन चाहिए। 6 for tie, 7 for win, 6 balls to go in the innings. First ball of the last over of their innings is now coming up. Sawad to Samad. Ye again, इस बार गेंद को खेल दिया, वाइड स्लॉन्ग बॉल की दिशा में गेंद जाती हुई, क्लीन कलेक्शन, not getting a second run in this delivery. Just a single, 6 to get from 5 balls now. 5 for tie, 6 for win, 5 balls to go in their innings. और स्ट्राइक इस वक्त है नौफल के हाथों में, और सवाद नौफल के लिए इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट, यह गेंद इस बार मोड़ना चाहा, धीमी लेग कटर गेंद थी, चूके पूरी तरह और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। और इसी के साथ अंपायर ने इशारा किया कि स्टिपुलेटेड टाइम जो है, निगदित समय समाप्त हो चुका, तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। अब कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर मौजूद। 4 गेंदे 6 रन, 6 टू गेट फ्रॉम 4 बॉल्स, 5 फॉर टाई, 6 for win, 4 balls remaining। और फील्डिंग में जमावट इस वक्त गेंदबाज यहां पर करते हुए सवाद 2 बेहतर गेंदे इस ओवर में वो फेंक चुके हैं। नौफल इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए, डीप मिड विकेट फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया गया है। सवाद दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद इस बार चूके, एक बार फिर से 2 लगातार डॉट गेंद, और यहां पर विकेट बल्लेबाज का गिर चुका है बोल्ड आउट के रूप में। और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा, तख्ता कुछ हद तक एवरशाइन चुक्काबेट्टू का भारी लगता हुआ। बेहतर 2 गेंदे गेंदबाज सवाद ने फेंकी, धीमी गेंद थी, दोनों भी धीमी लेग कटर गेंद, और 2 डॉट गेंदों की बदौलत जो लगातार बल्लेबाज ने खेले थे, अब कुछ हद तक संकट की स्थिति में नजर आता हुआ, कुछ हद तक इक्वेशन कठिन होता हुआ दिविश शांति अंगड़ी के लिए। 6 runs to get from 3 balls, 5 runs for tie, 6 runs for win, 3 balls to go in their innings. जैन इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद है। कम से कम इन बचे हुए 3 गेंदों में किसी न किसी गेंद पर कम से कम 2 रन बटोरने होंगे बल्लेबाजों को इस मैच में अपनी वापसी करने के लिए। अगली गेंद, यह गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ा, खूबसूरती के साथ मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा, नवाज का थ्रो पहुंचा स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। 2 गेंदे 4 रन चाहिए। 3 for tie, 4 for win, 2 balls left in their innings।
And what a fantastic match is now progressing here. The pressure is now building up on both sides. और देखते हैं मैच अगर टाई होगा तो सुपर ओवर यहां पर खेला जाएगा. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिना तो ओवर द विकेट. फुल टॉस उछालना चाहा गेंद हमें में फील्डर नहीं पहुंच पाए. मिसफील्ड वहां पर और एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा. 3 रन चाहिए अंतिम गेंद पर. 2 for tie, 3 for win. Last ball remaining. And let's see what will happen in this match deciding delivery. और मैच अगर टाई होता है तो सुपर ओवर यहां पर खेला जाएगा. और सुपर ओवर तक मैच को लाने के लिए इस वक्त दिविज शांति अंगड़ी को अंतिम गेंद पर बनाने होंगे 2 रन मैच को टाई करने के लिए. और डॉट गेंद या फिर सिंगल्स अगर गेंदबाज इस अंतिम गेंद पर प्रदान करते हैं तो यहां पर एवरशाइन चक्रवर्ती इस मैच में विजय रहेगा. मैच की अगली गेंद फील्डिंग में जमावट करते हुए सौहार्दा सामना करने के लिए तैयार. द लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नॉट कमिंग अप. द प्रेशर इज नॉट बिल्डिंग अप. हियर वी गो. राइट आर्म ओवर द विकेट. ये गेंद उछाला लंगोट पर गेंद सीमा रेखा से बाहर और ये छक्के के साथ दिविज स्टार शांति अंगड़ी registered a memorable thrilling victory against एवरशाइन चक्रवर्ती. समद के बल्ले से यह छक्का लग चुका. Absolutely fantastic struck came from the bat of Samad. In the flatter version he lofted that one. और गेंद सीधे सीमा रेखा के सीढ़ियों पर जाकर गिरी है इस वक्त. और इस छक्के के साथ एक रोमांचक जीत यहां पर दिविज स्टार शांति अंगड़ी. हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले. उछाला तो देखिए किस तरीके से मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन एंड he just dispatched that one in a style for a huge one. So what a fantastic match ended. Diviz Star Shanti Angadi registered a thrilling victory in the last ball of the match against Evershine Chokkabettu, and with that 6 runs they are through to the next round of this tournament. So the next match, Zaman Boys Ka Ladka, the quarter-final match will be played between Zaman Boys Ka Ladka versus Diviz Star Shanti Angadi. I request all the players of Diviz Star Shanti Angadi, please come on to the stage and make a sign in the official chart. I request all the players of Zaman Boys Ka Ladka and Diviz Star Shanti Angadi, please to be reported here to make a sign in the official chart. So man of the match of this match, undoubtedly, the man who hit a 6 in the last ball of the match and give a thrilling victory for his team. Samad, who scored 12 runs unbeaten, and he bowled 1 over and conceding just 7 runs. And because of this fantastic performance, he bagged the man of the match out. I request Mr. Samad of Diviz Shanti Angadi, adjudged the man of the match, please come to the stage and receive the man of the match prize from the organizers. I request our senior player of Gori Young Boys, Mr. Karna, please distribute the man of the match trophy for Samad for his wonderful knockout for 12 unbeaten runs. Mr. Samad of Diviz Shanti Angadi adjudged man of the match. So the next match, the winner of this match, Diviz Star Shanti Angadi, will going to play against Zaman Boys Kalladka in the quarterfinal match, and that match starts with the gesture pile. We'll be back right after the short break with Satish in English when the next match is going to start right after the short break. Thank you. Dhanyavad. Short break. I request Sahil to present the man of the match award. Sahil of Gori Young Boys, a very young talented bowler. Sahil will go into present man of the match award for Samad for outstanding finish for the match. When it's 3 runs required for the victory, he finished the match in a style. And may I request Samad to collect your man of the match award from Sahil.
in our presentation dice, and the presentation of Man of the Match award at Divin Star Shanti Angadi, registering a very famous and a thrilling victory when it's 6-3 required from last ball. He just finished the match in a style by hitting a maximum down to deep long on. Congratulations for Sauhardha, and thank you very much Sahil, and we can see that going to be a congratulation coming from the other players of Zaman Boys Kalladka for the very good victory. Altogether, that 4 matches absolutely fantastic. The 4 very good matches for the day number 1. All matches are ended in a nail-biting finish. This shows that level of competition from all the teams to get the place in the mega final of this prestigious Sauhardha Trophy 2023, which is organized by the Gori young boys in the memory of late Suresh Bian.
I request the captain of Zaman Boys Kaladka as well as captain of Divis Star Shanti Angadi to report here for the tossing ceremony for the last match of the day, number 1 of this prestigious Sauhardha Trophy 2023, day 1. ಅಲ್ಲಿ ಜಮಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಜಮಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಡಿವಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ದಿವಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾಂತಿ ಅಂಗಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಬರಬೇಕು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ. The captain of Divis Star Shanti Angadi won the toss. Rafiq won the toss and elected to field first against Zaman Boys Kaladka.
Welcome back once again now for the last match of the day number 1 of this prestigious Sauhardha Trophy 2023, and all set now for the big match. The first quarter final of this Sauhardha Trophy 2023, and two teams which is qualified for the quarter final. Divistar Shanti Angadi versus Zaman Boys Kalladka, and it's going to be a good match because both the teams are played a good game of cricket in their respective matches. Of course, Divistar played only one match, and Zaman Boys Kalladka, they have so far they played two matches, but absolutely both the teams has got a thrilling victory. As far as the victory for the previous match, Divistar has got a last ball victory, and Zaman Boys Kalladka, they won the match against New Star Kunjat Bail in a thrilling victory, in the sense they're chasing a huge total, of 71, and everyone thought it might be the game for New Star Kunjat Bail when they got a huge total of 70, but Zaman Boys Kalladka, their batters and Rashid Baba, representation Kunjaturu, and New Star Kunjaturu, which is a team which is free quarter final. They are against New Kunjaturu. The team Zaman Boys Kalladka, they played a fantastic game of cricket, especially Rashid Baba is stocked with his bat, and he scored 33 valuable runs, and the finishing touch which is given by the middle order batter, they got a 6 in a very important time. Nazim, who got a 6 in a right time for Zaman Boys Kalladka, and won the match. But at the same time, Divistar Shanti Angadi also got a fantastic victory, last ball victory. Samad, the one who finished the match for his team in the last over when it's a 3 required from the last ball. And altogether, we are expecting some good battle between these two teams. The umpires walking towards the middle. Umpire Roland Pinto and Arish Padil, two very experienced umpire. One who got experience of 39 years, and one more experienced umpire. Arish Padil is more than 27 years of experience, and absolutely they got a fantastic career in their umpiring field. And the two umpires will going to appreciate in this quarter final of this prestigious Sauhardha Trophy 2023, which is organized in the sweet memory of the founder and the late Suresh Bian. I request the extra player of yes, both the teams has got their extra players here in our commentary box. Everything is ready for the quarter final. It's going to be anybody's game, and both the teams certainly wanted to win the match. Maybe a slight bit of Zaman Boys Kalladka, they are the favorite, but I think Divistar also, they got a potential of winning the match. Here is the first ball of the quarter final. Right arm over the wicket, Azim went for the drive, misses the line completely, and a very good start given there by Anish in his first ball, outside the line of off stump. Ali players dugout na ಹೊರಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡವರ ಗಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗೌಟ್ನ ಹೊರಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡವರು ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಡಗೌಟ್ನ ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಚೇರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕೊಂಡೋದವರು ಚೇರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಇಡಬೇಕು. So first ball, next ball, it's a no ball called by umpire because that ball pitches outside the line of the pitch. So that no ball called by umpire. That means it's going to be a free hit delivery for Rashid Baba. It's always going to be a challenge for the bowler when you are bowling a free hit delivery to escape from the big hit from Rashid Baba. Of course, he's a kind of batsman who's never thought about whether the free hit delivery or fair delivery, but he's kind of a batter who loves to enjoy his hittings, and he wanted to kill the ball every time. When he's in his ball which is in his scoring zone, he's definitely going to hit the ball. Here is right arm over the wicket balls.
This time, what I'm talking about is always going to be asking for trouble. You can't give the opportunity for this man, especially for the free hit delivery. He's hit that one very freely. Down to wide issue, long on for a huge six. Have a look at the bat speed. Have a look at the bat lift of the batter. Absolutely amazing and unbelievable. Phenomenal batting performance here from Rashid Baba. What a fantastic batting display here from Baba. This time a slower one, change of pace, but short pitch one I want to say. The bowlers survived from the delivery, even that was a slower one. But I think it's a slower one which is a short pitch delivery. Rashid Baba might be a little bit early into the stroke, otherwise it's going to be one more six. But the batter is able to get the one and scoreboard moves on to 9 on the board. Azim again bowls that line which is a good one for Azim. He is also a very good striker of the ball as far as in underarm cricket is concerned. Very destructive batter. He's got a very good record here in this usage cricket ground. Here is again bowler balls. Right arm over the wicket. This time fantastic delivery in the appeal for something. I think only the wicket keeper behind the stump going up, but not the bowler. And the ball looks like it's going to miss the stumps here, and there is no chance at all for any run. It's 9 without loss of any wicket. Rafiq, little correction. Anis, right arm over the wicket. Bounce, set time ball is in there, but ball will go to land it safely. And one bounce collected by Shagir down at the deep extra cover region. And before the throw coming from the deep towards strikers, and ample time for Azim to complete that couple of runs. And with that couple of runs, Azim is off the mark. And of course, his individual score now moves on to 3 now. And total score of Zaman Boys Colored Car, it's 11 without loss of any wicket. So Anis completes his first over. Not a huge run, just 11. That's only because of Baba hit 1-6 down to deep long on. When he hits the ball very hard, and the ball will not go into land inside the boundary line. Whenever the ball which is left the bat of the Baba, the ball will going to disappear out of the park. When he is in the arc, ball will going to disappear out of the park. It's 11 without loss of any wicket, and the first over which is completed, and the second over will going to start from the commentary box end. Zahid is the bowler, will going to bowl the second over in the power play. So wait and see, it's going to be a good competition. Rashid Baba got some big shot in the same end in the previous match. He got some sixes down to extra cover, one at deep long on and one at deep long off. One of his favorite stroke, which is a deep long on and extra cover, the long off region. Here is a next one from first one from the second over. Zahid bowls. This time Baba drives, but lack of placement. Ball went straight to the hands of short mid off region. There is no chance at all for any run. Score remains on 11 without loss of any wicket. Zahid again bowling with a short run up. Pass umpire Harish Padil. Right arm over the wicket balls. Again that ball is pitched outside the line of off stump, but too much. So that wide call by umpire. One more extra. With that addition of that extra score, but Namuzan to 12 on the board for the loss of without loss of any wicket. Once again the opening batters they laid the foundation. They got a very good start in that quarter final of this prestigious cricket. Scoreboard now wide. 13 on the board, little correction. 13 white plus 1, 13 for the loss of without loss of any wicket. Zahid again bowling away from us. Right arm over the wicket balls. Again that ball is going far outside the line of off time. Bowler struggling here. This is what you call the pressure. Maybe the bowler is feeling that he is bowling in the power play and bowling against some absolutely destructive batter like Azim as well as Rashid Baba. It's not so easy for the bowler to handle the pressure. This is the result of pressure as the bowler struggling to get his line and length. This is a better line. This is a better line. Straight to the answer field. A chance of run out and wide throw. If it is a good throw over the stump, it might be the Azim's innings which is going to be finished here. If it is a good throw, but the fielder returns the ball slight wide of the
bowlers to collect the throw, and the batter Azim just survived from that run out. 15 without loss of any wicket. In the over number second is in progress. Zahid again bowling away from us. Right arm over the wicket again. Baba looking for the expansive drive again. That stroke which is not really having that much of timing enough to get any kind of big stroke, but sudden single here for Rashid Baba with that single score number on to 16 without loss of any wicket in the over number second in progress. For Baba, there is a fielder in the deep wideish long on and deep wideish little bit deep straight long off region. The two fielders for Azim of the bowling of Zahid. Zahid to Azim. Azim went for the reverse sweep. Lack of placement straight to the hands of fielder, but Baba charging for the single. But he's quickly realizing that Azim is not interested, rightly so, because that ball which is not really came from the middle of the bat, the ball went straight to the hands of Cow Point. Good comeback here by the bowler after that shackling start with starts with the wide, but is continues with some dotted delivery. Fifth time in this over. Zahid bowled again. Azim went for the expansive drive. Azim today is not looking that much of comfortable. In the previous match also he is trying hard for the big shot, but not really getting the timing behind the stroke, because he's a kind of a batter who loves to hit some big shot. If you're not if you are not finding that big shot, always going to be the batter trying a little bit harder and harder. That's why the Azim is not really getting that much of timing. And here is again the bowler Zahid bowling away from us. Right arm over the wicket. This time again far outside and off stamp, going to be a wide. This is the third wide of this over. It's not a good bowling there from the bowler. Of course, when he bowls a good line, it's always create the problem for the batter. But that three wides which is definitely going to be a hurting factor in this over. Otherwise, it's going to be a good over from Zahid. 17 without loss of any wicket in the over number second is in progress. Zahid away from us. Right arm over the wicket bounce. This time again lovely delivery. Just following the batsman. Absolutely perfect stop. Even though he considered three wides in this over, but he really bowled superbly. As far as keeping these two batters quiet is not so easy job. After completion of over number second, which is consist of only 6 runs, and a good over there from Zahid, and scoreboard is 17 without loss of any wicket. They're going exactly 8.5 runs per over. It's not a bad run rate, but I think having these two batters in the middle, the bowlers of David Star, Shanti Angadi, the opening bowlers did a great job. But now I think it's going to be a third over will going to start from the far end. After that fielding restriction is off, and you can keep 5 fielders outside the circle, not more than 5. And I want to see which direction the fielder will going. The mid off is going back to long off, mid on going back to deep long on, short mid wicket going back to deep mid wicket. One fielder from square leg region going back to deep square leg, and I think it's a square leg in the sense it's a behind the square. As inside the ring, there is a short mid on, there is a short fine leg, short third man. The one fielder stationed at short cow point. Now two fielders which is situated in the long on. One is straight long on and one is a wideish long on. It might be that fielder is coming a little bit squarer, almost between mid wicket and wideish long on. And here is the first ball of the over number third. Bowler Naufal brought into attack to bowl his first over. This time Baba going for the expansive drive again, almost drags that one from outside the line of off stamp. That shows the intention of Baba to get that one into the long on, wideish long on region, but mistimed the ball and got the single down to deep long on. With the single score moves on to 18 on the board. There's a perfect field set, I want to say. Rafiq is a very experienced campaigner. He knows exactly the kind of batters having in the middle, and he's just setting a field as per the potential of the batter. This time again outside the line of off stamp. Azim, just like I mentioned, is struggling to get his timing. There's always is happening in every cricketer when it's very hard to get the big shots, because he's the kind of the players who loves to play the big shot. But this time Azim is not really getting that much of success as far as the big hitting is concerned. It's 19 without loss of any wicket. There's some drives that one, and firmly down to deep long on. The bowler will not going to bother about that single. You know exactly, he's very happy to concede the single for both the batter.
20 on the board. This time Azeme, I think something is going behind the wicket, but umpire says it's not out. But I think there might be the hand of Rafiq behind the stump as just brushes the stumps, so that stumps which is a slight bit of uprooted. But no much done. But that ball is very close to the up stump in that occasion, and a good piece of bowling which is continuous here from Naufal. Good comeback here by Divi Star. Divi Star knows that they're bowling against one of the formidable batting department. If you're able to restrict their opposition under 50, they got a golden opportunity to win the match. Just again, Azim again looking for the expansive drive. Again, lack of timing. One more single. With that single, Sauhardha moves on to 21 for the loss of, without loss of any wicket. Without losing a wicket, these two opening batters added 21. But this is not a kind of runs which is we are expecting from these two batters when you are spending this much of time. Almost the last delivery of the over number 3. Baba went for the mighty stroke. Lovely delivery to finish the over. Absolutely fantastic stuff. After completion of over number 3, searching for the right track. Zaman Boys colored car 21 on the board without loss of any wicket. Just searching for the right track. They're going exactly 7 runs per over. So 21, which is the total score of Zaman Boys colored car, and in the similar run that if they are able to get that, they can get 55 plus runs, and in the same run rate, the projected score will going to be a 56. And wait and see. But I think they wanted to get more than that, and wait and see how Divi Star will going to continue their fantastic bowling performance. So from the commentary box and continuation. This time Azim drives up easily, but ball once again landed very safely. Again Azim not quite getting that one from the middle of the bat. Not quite intended. He wanted to loft that one down to deep long on and deep long off region. Because of that ball which came late to his bat, ball went towards the deep square leg region. And Sauhardha moves on to 22 without loss of any wicket. Zahid in the previous over he bowled excellent over, which is an over of just 6 runs. Now Baba is on strike now. So far Baba has got only 1-6 in his innings. Again, lovely delivery. This is a good thinking. This is a very good piece of bowling there from Zahid. This is what I want to see, that it loves to see the bowlers. He knows that what is the potential of the batter. You can't bowl the scoring zone of almost outside the line of on the middle stump. The Baba will go into hit the ball. So he's just bowling around the legs of Baba so that he can keep that band quiet. There's a good bowling there from Zahid. Bowling away from us. Right arm over, they get balls. This time again, this is a good line. Absolutely perfect one. Now I want to see what Baba will going to do here. After seeing that what is the weakness of the Baba, the bowler knows that. He's just bowling to the weakness of the batter, not bowling to the strength of the batter. Now I think Baba want to change his technique against his bowling, because he's able to beat twice in this over the bat of Baba. Good stuff there from Zahid. Right arm over the wicket to Baba. Baba again, lovely delivery, appealing there. They're appealing for cotton ball, but umpire says not out, rightly so, because the ball, it is pretty hardly hit the ground once the ball which is came into the hands of bowler. But a fantastic stuff here from Zahid. So far 3 dotted deliveries in this over. The over number 4 is in progress, but still Rashid need to get a success. But I think a bowler is doing a right job. Is really handling the pressure very well and testing the temperament of Baba.
Again, what? Oh, next time, wicket keeper. Absolutely, umpire says not out because if you see that the Rashid Baba is struggling to hold his balance, but he succeeded to hold his balance in the sense his back foot is in the inside the line. Have a look at that one in the replay. Absolutely right decision there from umpire Roland Pito. But I want to really love the reaction of Rafiq that he knows that the batsman's back foot is in the crease, but he still is appealing, is just enjoying his wicket keeping. It's a very good wicket keeping there from Rafiq, no doubt at all. But I want to see it in the replay. Have a look at that one. They will just absolutely right. The back foot of Rashid Baba. I did a great job. Actually, he's not really lift this back leg, otherwise going to be out. But what a fantastic over from Zaid. Just a single run in this over. But job is not yet over. One ball it is enough for Baba to come back this over. Again, outside the line, next time going to be punishable, not from the batter, but from the umpire, Arish Padil. One more extra score, but Namozan to 23 without loss of an wicket. Jahid a little bit trying extra. He wanted to try to pass the ball around the legs of Rashid Baba. I think it's a very, very good line to ball to Baba. But that ball is just going outside the line of leg stump, slight a bit. And just the 2 runs came from that over. Final time in this over. Again, one more wide. Zahid might be wanted to get the ball which is around his legs, but doing that, he bowled 2 consecutive wide deliveries. It's a 24 on the board. The first time we're watching that the clouds which is slowly covering the ground, overcast condition, and behind our commentary box. Maybe there is a raining, somewhere in the part of Puttur or Bantwal, there is a rain which is definitely going to take place. That was an indication there's a cool breeze is passing here. And again, one more single has been taken. But still, it's a good over. Even they bowled 2 wide deliveries in this over, but it consists of only 4 runs in that over. Fantastic stuff there from Zahid. But he's not happy with himself because he knows that that 2 runs, which is simply is conceded. But I think he did a great job keeping Rashid Baba quiet in that over. So after completion of number 4, and Zaman Boys Kaladka searching for the right track. They're going just over 6 runs per over, and 6.25 runs per over. Exact calculation is concerned, and wait and see how many runs they will going to score in remaining 4 overs. And for that remaining 4 overs, I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language in there. And Gopi, fantastic comeback, isn't it? First over, which is 11 runs, they came from that over, but after that, only 14 runs which is considered in 3 overs. That means Divish Star Shanti Angadi bowlers did a great job. All the bowlers, Zahid as well as Anis and Naufal did a great job because keeping 2 batsmen, of course they fails to pick the wicket, but they succeeded to keep the batsman quiet. But 4 overs remaining, Gopi, and that 4 overs definitely is going to be crucial for Zaman Boys Kaladka to get some acceleration. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने कहा इस वक्त पहले ओवर में 11 रन बने थे, तब ऐसा पूर्वानुमान एक्सपेक्टेशन लगाया गया था कि जमन बॉयज का लड़का के बल्लेबाज छा जाएंगे, लेकिन उसके बाद बेहतर कमबैक करते हुए दिविश शांति अंगड़ी के गेंदबाजों ने बाद के 3 ओवर में सिर्फ 14 रन प्रदान किए। अब बराबर का टक्कर यहां पर जारी है और 4 ओवर में देखते हैं और कितने रन यहां पर बल्लेबाज बटोर पाते हैं। 5वें ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए, और इस बीच वाइड का इशारा हो चुका है। वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 26 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर इनफैक्ट। और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिना तो बढ़ता विकेट लेग स्टंप से बाहर, और इस बार कुछ ज्यादा हद तक बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 26 रन बिना किसी नुकसान के। मैदान के तो इस बार lofted and this time brilliant save, absolutely brilliant save by the long on fielder this time. He saved the certain 6. I want to see in the replay actually what was happened. He's just lofted that one in a style, and just look at this time at the last moment, a fantastic, absolutely fantastic stop, fantastic save made by the long on fielder. और यहाँ पर इस बेहतरीन प्रयत्न की बदौलत यहाँ पर बल्लेबाज को यहाँ पर रन मिले 1, और देखिए किस तरीके से, एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा।
और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर। धीरे धीरे घने बादल इस वक्त मैदान पर छाते हुए, अगर कमेंटेटर बॉक्स के पीछे की ओर अगर नीला आकाश तले अगर देखा जाए तो घने बादल काफ़ी घने हो चुके हैं इस वक्त, तो वर्षा के बादल। लेकिन हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि आज जब तक मैच समाप्त ना हो वर्षा ना आए। ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए और गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा था लेकिन ठीक तरह से उछाल नहीं पाए और स्कोर है इस वक्त 28 रनों पर 28 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नौफल अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद और वाइड का इशारा अंपायर का। काफ़ी अतिरिक्त रन, एक्स्ट्रा रन अब तक प्रदान कर चुके हैं गेंदबाज दिविज स्टार शांतंगेड़ी के और यहाँ पर स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस 1 रन के साथ 29 रन बिना किसी नुकसान के। 5वां ओवर उनके पारी का यहाँ पर प्रगति पर दाहिने तो ऊपर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला एंड दिस इज गॉन मेनी माइल्स, इट्स अ ह्यूज वन। गेंद सीधे वृक्ष के डालों पर टकरा चुकी है। अगर वहां पर वृक्ष नहीं होता तो सीधे गेंद मैदान के उस पार जो रास्ता है और रास्ते के उस पार सीधे इमारत पर जा गिरती और लंबा छक्का इस वक्त लग चुका है और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर। देखिए किस तरीके से इस वक्त उछाला था, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एंड लॉफ्टेड दैट वन ओवर द फेंस फॉर अ ह्यूज वन। 35 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार एक बार बेहतरीन गेंदबाजी प्लम इन फ्रंट और इसके साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। बाबा की पारी समाप्त। बेहतर कमबैक इस वक्त गेंदबाज कर चुके हैं। अगली गेंद पर छक्का प्रदान करने के बाद अगली गेंद पर एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ उन्होंने गेंद को फेंकी। बाबा एक और छक्का लगाना चाहा। गेंद चूंकि पिछले गेंद के मुकाबले परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद थी, गेंद उनके बैक लेग पर टकराई, पिछले पैर पर टकराई और उनका पैर बिल्कुल मिडल स्टंप के सामने रहा और अंपायर को कोई दिक्कत यहां पर महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। बाबा की बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुका है। रशीद बाबा स्कोर्ड 18 रन्स इन 16 deliveries and after being scoring 18 runs in 16 deliveries he is backing to pavilion and a first wicket lost for Zaman boys का लड़का। It's 35 for 1। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से कमेंटेटर बॉक्स पर फ्रेंडली भरा माहौल छा चुका है और मॉनिटर पर कई हस्तियां गोरी यंग बॉयज के खासकर यहाँ पर मौजूद है। रियाज और इस श्रृंखला के संगठक अल्फाज जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद, जिन्होंने बेहतरीन श्रृंखला का आयोजन किया है। हमारे साथ ही कमेंटेटर सतीश, उसके साथ उदय जो कि भूतपूर्व खिलाड़ी है, नंदन कुलशेखर इस वक्त मौजूद जो कि क्रिकेट के सबसे बड़े सपोर्टर हैं और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर इस कमेंटेटर बॉक्स पर इस वक्त छा चुका है। और यहाँ पर इस कमेंटेटर बॉक्स के बाहर अगर झांक कर देखा जाए तो एक बेहतरीन क्रिकेट हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो गेंदबाज इस वक्त तैयार और शाज नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर हो चुका है और खासकर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज शाज इस वक्त सामना करते हुए। ये गेंद शाज के लिए ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 36 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। Lost it this time and I think it taken just inside defense. He swings it but can't face the gap. और देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, गेंद को इस वक्त स्विंग किया था लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं कि वो सीमा रेखा को पार कर सके और लंगॉन और वाइडिश लंगॉन के दरमियान जो क्षेत्र है वहां पर गेंद को लपका गया फील्डर द्वारा। तो यहाँ पर विकेट गिर चुका है, दूसरा विकेट 36 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और शाम के 5:05 यहाँ पर बच चुके हैं। दोनों दिग्गज खिलाड़ियां, भूतपूर्व गोरी यंग बॉयज के दिग्गज खिलाड़ियां, श्रीमान उमेश कोटियान जो कि व्यवस्थापक है आज के गोरी यंग बॉयज के, और श्रीमान करना जो कि एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में जाने जाते थे अपने क्रिकेटिंग डेज में गोरी यंग बॉयज की ओर से, इस वक्त खेल का आस्वादन करते हुए अपने आप में बातचीत करने के बाद और ठीक उनके पीछे जो खड़ा था उसके बारे में मैं बाद में आपको जिक्र करूंगा।
आई विल टेल आफ्टरवर्ड्स। और जहां तक सवाल है गेंदबाज का, तो इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, इस वक्त ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाह, नॉन स्ट्राइकर एंड पर खतरा था, लेकिन न यहाँ पर चूका, दूसरा रन लेना चाहते हैं। स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज आधे पिच पर आ चुके थे, लेकिन आखिरकार कोई क्षति नहीं, अपने स्वस्थान पर वापस लौटते हुए 1 रन का इजाफा। 37 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। लगभग मैदान पर अंधेरा सा छाता हुआ और बारिश की संभावना यहाँ पर हो सकती है, इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूँ खिलाड़ियों से कि कृपया मैच को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं। प्लीज कंटिन्यू द मैच एज सून एज पॉसिबल। आई रिक्वेस्ट ऑल द प्ले बोथ टीम्स प्लेयर्स बिकॉज ऑफ रेन पॉसिबिलिटी, प्लीज कंटिन्यू द मैच एज सून एज पॉसिबल। इस बार दिस टाइम ही लॉस्ट हिज स्टंप्स, shuffling across the line, wanted to turn it over on the corner, not succeeded, and the ball stuck to his middle off stump. और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। 37 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट और बल्लेबाज आउट होकर यहाँ पर पेविलियन वापस लौटते हैं। तो 3 विकेट गिर चुके हैं। राशिद बाबा ने 18 रन बनाए थे, आजिम ने 8 रन बनाए, शाज 0 पर आउट होकर अभी पेविलियन वापस लौटते हुए, और अब इंतजार है नए बल्लेबाज का। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द नंबर 5 बैट्समैन फॉर जमन बॉयज का लड़का। तो बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए 03 नंबर की जर्सी पहने हुए इम्तियाज यानी इम्ती का आगमन यहाँ पर हो चुका है, और वो इस वक्त सामना करते हुए गेंदबाज की ओर की अगली गेंद का। तो गेंदबाज इस वक्त ओवर प्रारंभ कर चुके हैं। समद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, एक्स्ट्रा बाउंस, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में। रफीक का गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट करने में सफल, और रन से इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। और पहला क्वार्टर फाइनल मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट मेगा टूर्नामेंट के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ सौहार्दा ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को खेला। गेंद पहुंची कवर पॉइंट और बैकवर्ड थर्ड मैन के बीच, जहाँ पर गेंद को 1 रन बल्लेबाज को मिला। इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38, 3 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार गेंदबाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। आरिस इस वक्त सामना करते हुए समद की गेंदों का, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। समद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, पैरों पर टकराई, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद को थ्रो किया। इस बार बैकअप होता हुआ बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, पूरा कर चुके हैं दूसरा रन। बैकअप जब तक होता, शॉट माफ कीजिए कवर पॉइंट पर बल्लेबाज के पास पर्याप्त समय था कि तेज रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा दूसरा रन प्राप्त कर सके, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 40 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 6। In fact, it's over number 6 has been completed. 40 for the loss of 3 wicket. 2 ओवर का खेल बाकी। जनाब अल्फाज इनके नेतृत्व में इस मेगा श्रृंखला का इस वक्त आयोजन किया गया है। सौहार्दा ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत दिवंगत सुरेश बी एन इनके मधुर याद में ये श्रृंखला इस वक्त आयोजन की गई है, और एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला, प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए आज इस श्रृंखला, इस टूर्नामेंट का पहला दिन और अंतिम मैच, इस वक्त अंतिम मैच का पहला पारी इस वक्त खेला जाता हुआ, अंतिम मैच की पहली पारी यहां पर खेली जाते हुए, और गेंदबाज अनीस इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए उछालना चाहा, इस वक्त ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए, 1 रन मिलेगा उन्हें। इकतालीस रन 41। It's getting darkness at the situation as the time progresses. It's already 5:15 in the evening. और घने बादल धीरे धीरे नीला आकाश को ढक चुके हैं इस वक्त। इस बार उछाला एनफील्ड क्रिया करते हुए इनटू द गैप, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। मैं समझता हूं वहां पर हालांकि टिप्पा खाने के बाद गेंद जितना उछाल लेना चाहिए था उतना उछाल नहीं लिया, और बल्लेबाज ने यहां पर पूर्वानुमान लगाया था, एक्सपेक्टेशन लगाया था कि गेंद ज्यादा उछलेगी, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रही। शायद वहां पर कुछ पत्थर से टकराने के बाद गेंद अपने कम उछाल लेती हुई इस वक्त फील्डर को बीट कर गई 4 रनों के लिए। यह गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, दैट इज एन एब्सोल्युटली परफेक्ट सर्वाइव फॉर द बैट्समैन।
निस्संदेह वहां पर बल्लेबाज की पारी समाप्त हो सकती थी अगर निशाना स्टंप्स पर सही बैठता तो। एक रन का इजाफा, 45 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज की गेंद इस बार उछालना चाहा, नॉट गेट दैट वन फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, collected by wicketkeeper behind the stumps. Good one from the bowler, and the scoreboard stays at 46 for the loss of 3 wickets in the over number 7 in progress. तो अंपायर इस वक्त विकेटों को सही करने के बाद खेल एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ। अनीस ये गेंद उछाला, लेकिन मैं नहीं समझता गेंद सीमा रेखा को पार करेगी। लंगोन पर यह गेंद लपक ली गई है इस वक्त सफलतम फील्डर द्वारा। देखिए किस तरीके से उछाला था गेंद को, काफी उम्दा, काफी ऊंचा उछाला था और आखिरकार गेंद को लपक लिया गया इस वक्त सीमा रेखा के अंदर लंगोन क्षेत्र पर। 46 for 4. Still in overall calculation, it's going to be 8 balls remaining in their innings. सात गेंदें बाकी, 7 balls remaining in their innings. 6.5 overs gone. And number 6 batsman is now coming out to the middle. तो गेंदबाज हनीस इस वक्त तैयार, नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त हो चुका है। तौफीक का सामना इस वक्त करने के लिए तैयार, अपनी ओर की अगली गेंद दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन फील्डर काफी पीछे, एक रन मिलेगा। 47 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड 7 ओवर्स हैड बीन बाउल्ड। लास्ट ओवर रिमाइनिंग इन द इनिंग्स, अंतिम ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इस अंतिम ओवर में जमन बॉयज का लड़का के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। तो स्टिपुलेटेड टाइम, निगदित समय, निर्धारित समय इस वक्त समाप्त हो चुका है। फलस्वरूप एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। तो अब कुल मिलाकर 20 गज के दायरे के बाहर सिर्फ 4 खिलाड़ी मौजूद। समद इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। अंतिम ओवर शुरू होता हुआ जमन बॉयज का लड़का की पारी में, दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन दिस टाइम, एक्स्ट्रा क्विकर, मच स्ट्रेटर लाइन, जस्ट evading at the last moment and went into the hands of wicket keeper and there is no possibility of any run and the scoreboard stays at 47 for the loss of 4 wickets. समद एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद पहुंचती हुई और गेंद इस वक्त सीमा रेखा के अंदर जब तक फील्ड हो। बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछाला था खूबसूरती के साथ और वाइडिश लॉन्ग ऑफ के अंदर गेंद को फील्ड कर लिया गया। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 48 रनों पर। बाएं हाथ के बल्लेबाज इम्तियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। मैदान पर लगभग अंधेरा सा छाता हुआ, रोशनी काफी हद तक कम होती हुई, वर्षा की संभावनीयता हो सकती है। इसलिए मैं एक बार फिर से दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूं दोनों टीमों के खिलाड़ियों से कि कृपया मैच को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं। गेंद कॉन साइड पर इस वक्त मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, इनटू द गैप एज वेल एंड द बॉल वेंट ओवर द फेंस एट डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फेंस फॉर 4 रन्स। Fantastic sir came from the bat of Imtiaz. Just look at this in the replay. गेंद को किस तरीके से फाइन इस वक्त मोड़ा था, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। कोई फील्डर वहां पर नहीं, डीप मिड विकेट से फील्डर दौड़ कर आए, लेकिन गेंद को रोकने में असफल और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक, 52 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और इम्तियाज एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, 3 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा अंपायर का। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 53 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। समद दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई और वाइड, कंसेक्यूटिव वाइड्स फॉर द बॉलर। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर, इन्हें इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 54 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर 3 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी, अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त समद गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए। ये गेंद इस बार लॉफ्टेड बट नॉट क्वाइट गेट दैट वन फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, चांस फॉर मिड ऑफ फील्डर एंड ही टुक द कैच सक्सेसफुली विद अ परफेक्ट जजमेंट।
उछाला था जरूर, लेकिन गेंद मिडल ऑफ द बैट करेक्शन नहीं, और एक बेहतर जजमेंट के साथ मिड ऑफ पर 20 के दायरे के अंदर इस कैच को फील्डर ने लपका, और एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका। ओवर माफ कीजिए, यहाँ पर 54 रनों पर 5वां विकेट गिर चुका है। 2 गेंदें अब बाकी उनके बारे में। जस्ट 2 balls नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। तो कुछ हद तक सारा दिन काफी गर्मी भरा माहौल था, लेकिन अब काफी हद तक ठंडक मैदान पर छाती हुई, बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है, और भीषण गर्मी से काफी हद तक राहत प्राप्त करते हुए खिलाड़ी और दर्शक इस वक्त, और इस वक्त अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई, गेंद को मोड़ना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े, रनआउट का खतरा, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। वाइड ऑल्सो डिक्लेयर्ड बाय अंपायर। 55 for the loss of 5 wickets now. Still 2 balls left in their innings. आसान सा रन आउट होता हुआ इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर। We are just waiting for the number 8 batsman for जमन बॉयज का लड़का, और नंबर 8 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए फिलहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त समद गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज जो कि इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद। अगली गेंद, यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, नॉट क्वाइट पिटली गेंद, द बॉल वेंट इन द गैप, इनफैक्ट दे गेट्स इन अ सिंगल, कम बैक फॉर द सेकंड एंड गेट इट कंफर्टेबली। 2 रन यहाँ पर मिलेंगे। गेंद को उछालना चाहता, बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद गेंद गई थी बैकवर्ड स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच, और गैप पर गेंद गई थी। 2 रन बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं। 57 for 6 एंड लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज समझ तैयार इस वक्त। यह गेंद चिप किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट, इनटू द गैप, 1 रन मिलेगा, क्लीन कलेक्शन, इन कम्स द थ्रो, दैट चांस एट द स्ट्राइकर एंड इजीली रन आउट हैपन। So the innings is up and Zaman Boys ka ladka finished with 58 for the loss of 7 wickets in the stipulated 8 overs, and now the target for Divish star Shanti Angadi is 59 to qualify for the semi-final of this competition. 59 Divish star Shanti Angadi have to score, and just we have to wait and see can they reach the target or not. In fact, the required run rate 8.38 runs per over at this situation. The required run rate 59 रन बनाने इस वक्त, और जहां तक सवाल है इस वक्त लक्ष्य तक पहुंचने का, तो देखना है कि दिविश शांति अंगड़ी के बल्लेबाज किस तरीके की रणनीति यहां पर अपनाते हैं इस 59 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। 8.38 द रिक्वायर्ड रन रेट एट दिस सिचुएशन, एंड देयर इनिंग स्टार्ट्स नाउ विद जस्ट शॉट वाले। एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे यहाँ पर। धन्यवाद, थैंक यू। Right, 15 on the target for Divish Star Shanti Agadi set by Zaman Boys का लड़का to qualify for the semi-final of this competition, और देखते हैं वो इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं। तो आइए सतीश, आज अंतिम बार माइक्रोफोन पर आपको बुलाते हैं। इस वक्त 59 रन चाहिए 8 ओवर ने। द रिक्वायर्ड रेट एग्जैक्टली 7.38 runs per over they have to score for victory. In fact, it's 59 divided by 8, that means 7.38 the required rate for them. They have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them 15 on the target in 8 overs. और जहां तक सवाल है लक्ष्य तक पहुंचेगा, तो दिविश शांति अंगड़ी पिछले मैच में
एवरशाइन चोकोबेटो के खिलाफ 48 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अंतिम गेंद पर उन्होंने विजय दर्ज की थी छक्के की बदौलत जो बल्लेबाज लगा। तो यहाँ पर उससे भी ज्यादा लक्ष्य है, 59 रन बनाना है, 59 दे हैव टू स्कोर। और यहाँ पर अगेंस्ट दी बॉलिंग लाइन ऑफ जमन बॉयज का लड़का, जमन बॉयज का लड़के के पास न सिर्फ अच्छी खासी बल्लेबाजी का लाइन बल्कि एक बेहतर गेंदबाजी का डिपार्टमेंट भी है। और यहाँ पर उनके खिलाफ अगर 59 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो इस वक्त एक बेहतर शुरुआत उनके सलामी बल्लेबाजों को यहाँ पर देनी होगी। खासकर पहले 2 पावर प्ले ओवर्स जो है उनमें कम से कम 20 से 22 रन अगर बटोरते हैं तो प्लेटफॉर्म उनके लिए आसान हो सकता है। लेकिन जहां तक जमन बॉयज का लड़का का सवाल है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर उनको एक बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर करने हुए कुल मिलाकर 59 रनों का लक्ष्य सतीश। और जहां तक मैच के संभावनीयता का सवाल है, ऐसा कहना पड़ेगा इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन। Well, exactly, Gopi. It's going to be anybody's game. Just seeing the target which is set by the Zaman Boys ka ladka. But I think this is not kind of a target what Zaman Boys ka ladka wanted to get. But they wanted to get more than that. But that means Divin Star bowlers did a great job, and the bowlers did the job, and batters need to justify the effort of their bowlers in this particular quarter-final match. First ball, batsman going for the drive, but didn't got enough bat onto that, got outside edge of the bat, and before that short third-man fielder will go into field the ball. I think there is no chance at all for the fielder there is no chance at all for the batter to get any kind of runs. The bowler Mustafa has got a lot of responsibility in his shoulder. You know exactly this is a power play over. You need to restrict the runs. At the same time, Divistar knows that they wanted to get the runs in this power play over. Right arm over the wicket, balls again. The batsman plays it down. Mid-wicket region, they're going for the quick single this time. I think it's going to be a little bit a dangerous one. And batsman managed to complete the single. Ali Daimadi, dugout na ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟಂತ ಚೇರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಡಗೌಟ್ ನ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಂತ ಚೇರ್ ಕೆಲವರು ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿದವರು ಕೂಡ 1 on the board without loss of any wicket. Here is the next one. Right arm over the wicket. Oh, that was a beauty. Extra bounce in the negation there for the bowler in the negation because he wanted to drive the ball because that ball just came into the batter in along the carpet. When he was going for the drive, that ball slid a bit of a get, taken extra bounce so that beaten by the bounce, the wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Fayaz is on strike now and facing his second delivery and fourth delivery of this over. Right arm over the wicket balls. This time went for the reverse paper, but wicketkeeper fails to collect the ball. Even Rashid Baba is also slight a bit of fumble. One more opportunity is created for the run out in the non-striker's end, but throw which came late to that non-striker's end, so that the batter Rizwan complete that single. With that single, score numbers on to 2 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. Mustafa again bowling with a short run off. Right arm over the wicket. Just some drives that one down to mid wicket region. Chance of run out in the non-strikers, and once again Zaman Boys Kaladka fails to grab the opportunity of run out. This is the third time in this over they got opportunity to make the run out. Both the batters are dealing with the luck. Absolutely good attempt there from the fielder, but not quite enough to stop the single and not quite enough to get the result. 3 without loss of any wicket in the over number first is in progress. 59 which is the target. 3 which is the total score in the first over. And the bowler bowling final time in this over to Fayaz. Fayaz taking his own time because Mustafa is taking his own time to deliver the ball after pitching the ball several times. Oh, that might be, I'm really surprised how the ball misses the stump. Can you believe this? Everyone thought it might be all over for the batters. Have a look at the luck of that batter. Oh my goodness. You can't get that kind of scenario, isn't it? Because that ball almost looks like ball hitting the stumps. Ball has got a slight bit of deviation
extra deviation and just misses the stumps. Very lucky escape here for the batter. Good over there from Mustafa. After completion of first over, chasing 56-59 to enter into the semi-final of this prestigious Sauhardha Trophy 2023. They got 1-3 on the board. That means they have to get another 56. And Gopi, it's a very good start, isn't it? Just 3 runs in the first over, and Mustafa produced a very good start here, and might be that only because of both the batters maybe looking for some big shot, not really concentrating over the rotation of strike, and just pays the penalty for that. That got only 3 runs in that first over. Exactly, सतीश. पहले ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त की है, गेंदबाज जो इस्तेमाल किए गए थे, और पहले ओवर में 3 रन उन्होंने प्रदान किए. अब स्ट्रेट अवे 7 ओवर में बनाने 56 रन, और रिक्वायर्ड रन रेट इस वक्त आप पहुंचा ठीक 8 रन प्रति ओवर. 56 दे हैव टू स्कोर इन 7 ओवर्स, और यहां पर बंधनों को तोड़ना जरूरी बन चुका है दिविज शांति अंगड़ी के बल्लेबाजों को इस वक्त. लेकिन एक बेहतर बल्लेबाजी निस्संदेह दिविज शांति अंगड़ी को इस मैच में वापस ला सकती है. जहां तक जमन बॉयज का लड़का का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए उसी सफलता का सिलसिला जो पहले ओवर में गेंदबाज ने दिया है इस वक्त. Absolutely, Gopi. The first ball of the over, number second, and it's once again the bowler is right on the money, right on the target. Again, the ball just missing. The ball is just coming into the batter, and there is no opportunity for the batter to get any kind of runs. Tomorrow going to be a second day of this cricket tournament, and we are going to start the first match exactly the given time, 8:45 in the morning. 8:45 we are going to start. That means the teams need to be reported in a time. This time he lofted, but not quite enough. Not quite enough to clear the fielder in the deep wideish long on region. And that's really going to be a disaster for Divish Star Shanti Angadi. They lost their first wicket very cheaply after consuming 7 deliveries. And got that only 3 runs. And they lost the wicket. That means a perfect start here for Zaman Boys Kaladka, but not a good start here for Divish Shanti Angadi. They lost their first wicket. We are coming back to that match, tomorrow's match. We are going to start the first match exactly in the morning, 8:45 a.m. And first match to be played between Team Bail Ashok Nagar versus Durga Konchadi. So that anyone is watching the live telecast of this cricket tournament, the member of both the teams, please note that you need to report at exactly at 8:30, and match will going to start exactly at 8:45 a.m. in the morning, and that will going to be tomorrow's second day of this cricket tournament. One more good day for cricket. Some good teams will going to take a part in that day. Number 2 starts with one more good delivery there from the bowler. Outside the line of off time, the new batter Ashif just searching for the ball to coming to his bat, but missed it completely. Then wicketkeeper behind the stump did the rest. Warning has been given for the bowler in the negation there from umpire Roland Pinto, as he comes very right in front of umpire, that is protected zone. So again the bowler bowls right arm over the wicket, swings it hard. Opportunity for the fielder. Second catch for the same fielder. Second wicket for the same bowler. But problem which is continuous here for Divisar Shanti Angadi. They are looking in more trouble now after losing 2 wickets for just 3 runs. This is all happening when it's very hard to combine the runs, because they didn't got enough runs on the first over. They got 1-3. So they wanted to charge the second over, but by doing that, the wickets are tumbling here of Divistar. Asif departs. Asif he's played a good innings in the previous match, but unfortunately is back into pavilion. So new batter in is Rafiq. The captain comes out and into the middle, and with a lot of responsibility. The condition which is of course similar to the previous match when they played against New Shine Chocobeto, and one stage they're struggling. Even Rafiq fails to contribute, but I think the mid-order batsman they did the job for Divistar. Once again the same condition which is created here, and wait and see how well Rafiq will going to handle the pressure here. Not only they need to look for a partnership, but at the same time they need to look for some acceleration of run rate simultaneously. Here again Taufik, right arm over the wicket, balls this time. Oh, just time they're going up. Wicket keeper going up, but I think just a bit of excitement rather than the confidence. And umpire, have a look at the umpire, Roland Pinto as well as Harish Padil. They are very relaxing and saying that
what really happened, and I think the nothing is happened here. But umpire Roland Pinto saying that, of course, if you are arguing for that, let's ask a scholar umpire. Is they're going up to ask for the caught behind. The umpire even Harish Padilla also saying that yes, ball is grounded first. Ball after one bounce it just came into the hands of wicket keepers. So rather than the confidence, just an excitement, of course. But I think they need to be. Sometimes he is not really aware of what really happened. So that you are asking for umpire to give the out. But umpire is in the right position to judge. Even a striker, non-strikers umpire. The strikers umpire is always going to be in the right position to judge what really happened. The not out, we can see that in the replay also. Ball which is hit the ground. This time appeal for leg before going for the quick single in relegation. One more opportunity is created for the run out. Leg by call by umpire. One more good over which is completed. Struggle time continues here from as the scoreboard is 4 for the loss of 2 wicket. And Gopi, first over we are not expecting that kind of start. We thought that Divish Star will going to get at least 15 to 20 runs in the first over, but different story here, and that's only because of Zaman Boys Kaladka. The two opening bowlers did a great job. Mustafa as well as Taufik bowled a great over. Just 4 runs. Now Gopi coming back to the equation. 4 deducted. That means 55 required in remaining 6 overs. That means excluding wides and no balls, they have to get another 55 runs and 36. And in this condition, Gopi, certainly is going to be a difficult one, but not impossible. एग्जैक्टली सतीश, लेकिन पहले 2 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन जमन बॉयज का लड़का ने दिया। सिर्फ 4 रन प्रदान किए, खासकर पहले और दूसरे ओवर में। और पिछला ओवर जो समाप्त हुआ तौफीक का, जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 रन प्रदान किए थे, और यहाँ पर 2 ओवर के बाद 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस वक्त बन चुके हैं दिविश और शांति अंगड़ी के। 55 रन बनाना है, 55 टू गेट फ्रॉम 36 डिलीवरी, दैट मींस इन 6 ओवर्स, एंड द रिक्वायर्ड रन रेट इज नाउ गॉन अप टू एक्जैक्टली 9.17 रन्स पर ओवर। और अब कुछ हद तक तेज तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनानी होगी दिविश स्टार शांति अंगड़ी के बल्लेबाजों को सतीश, अगर उन्हें यहाँ पर कम बैक करना है तो, वरना इस वक्त पानी उनके सिर के ऊपर से निकल जाएगा। Absolutely, Gopi. And one more thing, that the previous over, which is a maiden over, because that 2 runs which is came in the form of extra leg by and wide, that means the bowler bowled a maiden over, absolutely bowling a maiden over, and in this 8 over format of the game, it's definitely going to be a fantastic bowling performance. Again, Rafiq wanted to swap the ball, he misses that one. Wicket keeper also misses, and before that, short third-man fielder will go into field the ball. Ample time for the batter to complete the single in the form of bye, and with that bye scored Namozan to 5 on the board for the loss of 2 wicket in the over number third is in progress. Absolutely fantastic tournament, day number 1, the very successful. And after that 4 very good matches which is ended in a nail biting finish. Now we are expecting the same finish in this match, but so far I think Zaman Boys Kaladka looks like they're in a driver's seat of winning this match, unless any good comeback here from the batters of Divish Star Shanti Angadi. Mustafa, after that successful first over, he is very confident and bowling his second over and the second time right arm over the wicket balls. Tries that on, lack of placement, straight to the fielder, fumble from the fielder, chance of run out. Oh, how many times the fielders of Zaman Boys Kaladka misses the opportunity. 3 to 4 opportunities missed out, especially in the form of run outs. The closing fielders fails to hit the sometimes, and again the batters are dealing with some luck. Scoreboard is 6 for the loss of 2 wicket. The Rafiq and Fayaz have to do something special from the bat, because asking run rate is each and every over which is going high and high, and once it's going to be a run rate required more than 8 or 9 runs per over, always going to be a difficult task for chasing team. This time Rafiq once again he wanted to get that one very fine by playing the reverse sweep, missed it completely. Umpire not missing opportunity to signal the bye. One more extra. With that extra scope, Namozan to 7 for the loss of 2 wicket. Quite unfortunate, we can see that the runs which is not really coming from the bat. All that we can see that the buys which is combined in this total score of 7 and most of the runs. And here is again the bowler Mustafa bowling with a short run up. Right arm over the wicket, delivers. He went for the reverse sweep and missed it completely. But against the same bowling department, New Star Kunjaturu, they got 70 runs
And that shows it's not impossible. And getting 59 in 8 overs, because in the previous match, absolutely that the team Kunjatur is smashing 70 runs. But unfortunately, after smashing 70 runs, they fails to defend that total against Saman Boys Kalladka because of Rashid Baba, who changed the complexion of the match. So here is the runs are coming in the form of singles. 8 for the loss of 2 wickets. Is over number 3 is in progress. Absolutely, the very slow cricket is in progress. The breeze which is passing around the ground, still it's a overcast condition, but I think it's a scattered clouds and slight a bit of black clouds with some blue skies. Altogether, it was scattered clouds, no sign of rain there. And again, that wide outside the line of leg stump going to be a wide. And with that wide, Sauhardha moves on to 9 for the loss of 2 wicket. And the over number 3 is in progress. Still, it's long way to go. 59, 50 runs required now. 50 runs required in 5.1 over 31 deliveries. This time, catch it is a call. And again, the captain fails to contribute from the bat because condition is not so easy. It looks like it's a do-or-die condition here. So Rafiq has to throw the bat if you want to get the acceleration. By doing that, I think he couldn't manage to get the timing in that stroke. Pays the penalty for that. The wicket number 3, which is back in the pavilion of Divistar. 9 for the loss of 3 wicket. Over number 3 completed. They're going exactly 3 runs per over. But required run now exactly 10 runs per over. That's definitely going to be the danger ring. The danger ring which is ranked here for Divistar, that the required run rate is now exactly 10. Each and every over, they need to get 10 runs if they wanted to win this match. Otherwise, Zaman Boys Kalladka, definitely they're going to win the match quite easily. Tomorrow is going to be a second day of this cricket tournament. Just like I mentioned earlier, that day will going to start exactly 8:45 a.m. the morning match. And day after tomorrow, Friday, the holiday rest day. And after that, we're going to start the final day and decider day of cricket at Saturday, exactly the morning, 8:30. That was one of the big day for cricket. And we are expecting some great battle from 6 top teams in Mangalore pool. And seeded teams will going to take part in that Saturday, the final day of cricket. And we're expecting more crowds will going to gather here and get some enjoyment, entertainment in this prestigious Sauhardha Trophy 2023. Outside the line, next time going to be one more wide with that extra Sauhardha moves on to 11 on the board for the loss of 3 wickets. Again, the bowler from the far end, right arm over the wicket. Tawfiq balls, batsman drives towards a short mid-off region. Majid, the fieldsman there in the short mid-off, misfielded. Here is a batter running for the second, but his partner is not interested. Rightly so, just a single. It's 12 for the loss of 3 wicket in the over number 3 is in progress. Unless you are fails to get any big shots like a boundaries and sixes, it's very hard to get the huge total of 59 to win the match. Of course, rotation of strike is very important, but between that, if you have wanted to get that 10 runs, which is the required run rate for each and every over, that 6 runs will not going to help, because if you get 6 runs in the 6 balls, then very next over the asking run rate is climbing up. This is a big problem here for the Divistar. Again, that ball is going to be a delivery which is called umpire now giving warning for second warning for the bowler Tawfiq, that is coming right in front of umpire. So you need to be very careful, because if he balls continues that same thing, now slight a bit of showering here, and but I don't think it's going to be a big rain here, because we can see that clearly there is not a big clouds. The scattered clouds will definitely going to be small clouds here. This time inside out cricketing, so kindly clear the fence.
This is what I'm talking about. The singles will not going to help them to win the match, but in the mid-between, they need to break the shackle. And have a look at that one. Nothing wrong with the ball, which is on the middle stump. And have a look at the batsman. He's got the distance. Absolutely unbelievable. The ball which is traveling. And one dog is trying to pick the ball here. We can see that in cameraman. In the camera, in that, monitor. Clearly that instead of fielder tried to catch the ball, one dog wanted to catch the ball. But anyhow, that was 6 which is conceded. 18 for the loss of 3 wickets in the over number 4 is in progress. This is what I'm talking about. The gutsy batting which is badly required for the Star. Again, that which is offered outside the line of off time. This time batsman couldn't manage to reach that one. Maybe he just wanted to play that one away from his body without moving his front foot. And try to get that one over coveration. Just a dotted delivery. 18 on the board for the loss of 3 wickets. This time he went for the reverse sweep, but very close to the off stump. One more over completed after completion of over number 3. Even they go for over number 4. Even they got 6 in that over, but only 8 runs in that over, and that's a big problem. And that's inclusive of one wide as well. So 18 for the loss of 3 wicket. And Gopi, looks like struggle time continues here for Davis Star Shanti Angadi, because they have to get another 41 runs, isn't it? 41 runs to win this match in remaining 4 overs. And 41, absolutely, it's a 41 which is a required run. And I think the run rate required is definitely is a big problem here. That 10.25 runs per over is the asking run rate, but not impossible, Gopi. Just like in the previous over, the batter hit 1-6, the same kind of treatment which is required, and each and every over if the Star wanted to back in this game. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया 41 रन बनाने हैं। पिछले ओवर में छक्का लगने के बावजूद कुछ ज्यादा रन नहीं बने। 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त बन चुके हैं। 41 रन चाहिए, 41 टू गेट फ्रॉम 24 डिलीवरीज। और निस्संदेह यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा एक एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी ही अब इस मैच में वापस ला सकती है दिविज स्टार शांति अंगड़ी को। 5वें ओवर की पहली गेंद को इस वक्त रिवर्स शॉट खेलना चाहा था, खेल नहीं पाया और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार माजिद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। लेग स्पिन गेंदबाजी, बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन। 2 डॉट बॉल्स बॉल्ड बाय माजिद। गुड स्टार्ट फ्रॉम हिम इन हिज बॉलिंग डिपार्टमेंट। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 18 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर। और ऑफ स्टंप से बाहर और शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची और वाइड का इशारा। इस बीच अंपायर का ओवर थ्रो, और ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन। बेहतर कलेक्शन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कलेक्शन। अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ बाउंड्री। तो 7 रन वहां पर मिल सकते थे अगर वो गेंद को ठीक तरह से कलेक्शन नहीं कर पाते फील्डर। और 3 रन यहां पर मिल चुके हैं। 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और गेंदबाज माजिद इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए अनीस सामना करने के लिए तैयार अपनी अगली गेंद का। और दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद लेग स्पिन गेंदबाजी, ड्राइव किया यूजिंग हिज फीट, कदमों का इस्तेमाल करते हुए लंगोन की दिशा में, लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 22 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 10 मीडिया पर एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है। और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा ये श्रृंखला, ये टूर्नामेंट एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए सौहार्द ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत। अगली गेंद फ्लाइटेड, जस्ट गॉन फॉर अ ह्यूज वन, नॉट सक्सीडेड। इनफैक्ट इट्स गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर। 23 now for the loss of 3 wicket in the over number 5 in progress. Absolutely a difficult time is now continuing here for the batsmen of Divi Star Shanti Angadi. Still they have a long way to go. और मजीद इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद उछाला लेकिन नहीं, गेंदबाज के सिर के ऊपर से गेंद निकल चुका है। नॉट क्वाइट मिटिगेटेड एट द लास्ट मोमेंट बाय द बैट्समैन आफ्टर ही कम्स डाउन द ट्रैक। लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंदबाज के सिर के ऊपर से इस वक्त निकलते हुए स्पिन होते हुए और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका। रन अभी भी ज्यादातर सिंगल्स के रूप में बनते हुए दिविज स्टार्स शांति अंगड़ी के लिए। और
इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। It's got a 4 for that, I think so. The ball fell just short of a fence. And a boundary declared by umpire. Firmly struck. Just look at this in the replay. Swings it away. And he's got that one in a style into the gap. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 28 रनों पर और 5 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुका है। 5 overs completed, 28 runs for the loss of 3 wickets. तो यहाँ पर 31 रन और चाहिए, 10 रन इस ओवर में बने। 10 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर, प्रीटी गुड वन इन दिविस्टा शांति अंकेश पॉइंट ऑफ व्यू। और मॉनिटर पर इस वक्त दिखाया जा रहा है 31 रन बनाने 18 गेंदों में। द रिक्वायर्ड रन रेट इज एग्जैक्टली 10.33 रन पर ओवर। फयाज के बल्ले से चौका लगा था और फयाज का जहां तक सवाल है, एक बेहतर पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए एक छक्का और एक चौका अब तक वो जड़ चुके हैं। और छठे ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार सुरेश बी अन्ना एंड की ओर से। साज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और फील्डिंग में यहां पर जमावट चलती हुई। शाम का वक्त, लगभग अंधेरा सा छाता हुआ, धूप बिल्कुल मैदान से गायब हो चुकी है इस वक्त। शाम के 5:45 इस वक्त बजते हुए और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ रोशनी इस मैदान पर कम होते हुए और 3 ओवर में 31 रन चाहिए। साज गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए। अनीस इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद गई इस वक्त शॉर्ट थर्ड बैन पर। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 29 रनों पर 29। अब पहली चेतावनी, फर्स्ट वार्निंग इस वक्त की गई है और 1 रन पहली चेतावनी इस वक्त दी गई है गेंदबाज को डेंजर जोन पर प्रवेश करने के लिए। और अपनी अगली गेंद लेकर साज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए। यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा, 1 रन का इजाफा। रन्स इस वक्त चाहिए दिविश शांति अंगड़े के लिए, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। और इस बीच गेंदबाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, बेहतर लेग कटर गेंद थी। गेंदबाज ने सिर पर अपने हाथ धर लिए हैं कि गेंद स्टंप पर क्यों नहीं टकराए और गेंद स्टंप से कुछ इंच दूरी पर निकलती हुई, ऑफ स्टंप से कुछ इंच दूरी पर निकलती हुई रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि छठा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर और 15 गेंदें बाकी, 29 रन चाहिए। गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, इस बार लगभग जमीन के सहारे गेंद पे गई थी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। अब इक्वेशन और कठिन होता हुआ 14 गेंदें बाकी, 29 रन और बनाने हैं विजय के लिए। सास अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस वक्त दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, एक बार फिर से अपील और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। प्लम इन फ्रंट घोषित, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा था, शायद गेंद उनके बैकलेग पर टकराई थी और उनका पैर बिल्कुल स्टंप्स के सामने रहा और अंपायर को यहां पर कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। और एक विकेट यहां पर गिर चुका है। फयाज की पारी समाप्त, एक छक्का एक चौका उन्होंने लगाया, 11 रन उन्होंने बनाए और आखिरकार आउट होकर लेग बिफोर विकेट के रूप में पेविलियन वापस लौटते हुए। और अब इक्वेशन और भी कठिन होता हुआ। 28 more runs now they have to score for victory. 14 balls remaining, 2 runs per ball, 12 runs per over required for them to reach their mark. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त साज एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए। नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है जैद, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद साज जैद के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर पर, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर
31 रनों पर. It's 31 for the loss of 4 wicket with just 13 balls to go in the rings and 28 more runs required. और साज इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर. इस बार गेंद कौन साइड पर स्विंग करना चाहता, शफल होते हुए लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर द्वारा. एक रन मिलेगा. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. छठा ओवर यहाँ पर प्रगति पर और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए. दाहिने हाथों पर द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार. गेंदबाज सास लेग स्टंप से बाहर स्विंग किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और यह गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. सीधे गेट से बाहर हो चुकी है इस वक्त. सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त. देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त डिस्पैच किया था ऑन साइड पर स्वीप करते हुए खाली क्षेत्र छूते हुए. काफी खराब गेंद थी सास की, लेग स्टंप से काफी बाहर थी और चौका इस वक्त बल्लेबाज प्राप्त करते हुए 36 विकेट के नुकसान पर. 23 नीडेड इन रिमेनिंग लास्ट 12 डिलीवरीज. और निस्संदेह अब ऐसा कहना पड़ेगा चौके या छक्के ही सिर्फ दिविश शांति अंगड़ी को इस मैच में वापस ला सकते हैं. शाम के 5:50 इस वक्त बच चुके हैं. लगभग इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ रोशनी मैदान पर कम होती हुई एक बेहतरीन प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला सौहार्दा ट्रॉफी 2023 का अंतिम मैच इस श्रृंखला के अंतर्गत पहले दिन का अंतिम मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ. जनाब अल्फाज ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस श्रृंखला का आयोजन यहाँ पर किया है और दिवंगत सुरेश बीएन इनकी याद में. और जहाँ तक सवाल है इस श्रृंखला का, इस टूर्नामेंट का, तो ये टूर्नामेंट एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करते हुए. तो गेंदबाज माजिद लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं और यहाँ पर गेंदबाजी शुरू करते हैं. वे पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट 12 गेंदे 23 रन चाहिए. 23 to get from remaining 12 balls. Big strokes are badly required for the batsmen of Divish Shanti Agadi to get back into this match. पहली गेंद ड्राइव किया, not quite mid the gate, gone through for a quick single and get it comfortably. 1 रन का इजाफा. 37 for the loss of 4 wicket. 11 balls to go in the innings. 22 runs required. The equation seems to be stiffer and stiffer now for Divish Stars Shanti Agadi. They badly required couple of boundary or sixes at this stage to get back into this match. Lofted loser one, लेकिन इस गेंद का ठीक तरह से फायदा नहीं उठा पाए. स्वयं अपने आप से नाखुश, उन्होंने अपनी नाखुशी का इजहार किया अपने दाहिने हाथ को बल्ले पर मारने के बाद, स्ट्रोक खेलने के बाद. और इस बीच 1 रन का इजाफा सिर्फ उनके खाते में हो चुका है. लगभग ढीली गेंद थी लेकिन उस ढीली गेंद का ठीक तरह से फायदा उठाने में सफल बल्लेबाज. एकमात्र रन उनके और टीम के खाते में. माजिद यह गेंद बेहतर ऑफ स्टंप से बाहर उछालना चाहा, चूंकि प्रश्नार्थक तरीके से क्वेश्चनेबली अंपायर की ओर जरूर देखा कि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन नहीं, गेंद कुछ ज़्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी. सही गेंद घोषित, सही निर्णय अंपायर द्वारा. और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. फुल टॉस लॉफ्टेड, लेकिन मैं समझता हूँ प्रोटेक्शन वहां पर मौजूद है. सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा. 39 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट और 20 रन चाहिए 8 गेंदों में. और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. ये गेंद कदम आगे निकले जरूर लेकिन देखा कि गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल रही है. और तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है. विकेटें उखाड़े गए थे, तो इस वक्त विकेटें उखाड़े जाते समय देखना है कि बल्लेबाज क्रीज पर वापस लौट चुके थे या नहीं. देखिए किस तरीके से हुआ था. गेंद की लाइन को मापते हुए अपने आप को स्टंप्सों पर खींच लिया था. ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकल रही थी. और देखते हैं यहाँ पर तृतीय अंपायर यहाँ पर क्या निर्धार देते हैं. आज इस पहले दिन का 5वां और अंतिम मैच खेला जाता हुआ. कल 5 मैचेस और खेले जाएंगे बी पूल के. और जो कि पहला मैच का जहां तक सवाल है, टीम बैल अशोकनगर और दुर्गा कुंचाड़ी के बीच पहला मैच खेला जाएगा. टीम बैल अशोकनगर विल टेक्स ओवर दुर्गा कुंचाड़ी in tomorrow's first match which will be played at exactly 8:45 AM. और
जहां तक सवाल है दूसरे मैच का, रूफटेक का सामना होगा साई नमना कासरगोड के साथ। उसके बाद दूसरे दौर के मैचेस यहाँ पर खेले जाएंगे। तो रेड विंग्स को पहले राउंड में बाई इस वक्त मिल चुका है, जबकि एनएफसी कुमरा को भी बाई मिल चुका है। और टीम बैल अशोकनगर और दुर्गा कुंचाड़ी के विजेता टीम एनएफसी कुमरा का मुकाबला करेगी, और रूफटेक और साई नमना कासरगोड के बीच विजेता होने वाले टीम का सामना रेड विंग्स कुंजत बेल के साथ होगा दूसरे दौर में। तो इस वक्त तृतीय अंपायर उस निर्धार का उस रनआउट का इस वक्त परिशीलन करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। ही इज गॉन, द डिसीजन केम फ्रॉम द थर्ड अंपायर, और आउट इस वक्त अंपायर का निर्धार। और इसी के साथ एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है, पांचवा विकेट गिर चुका है। इट्स 40 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट, 19 मोर रन्स रिक्वायर्ड, 8 बॉल्स लेफ्ट इन देयर इनिंग्स। और काफी संकट की स्थिति में यहां पर नजर आता हुआ दिव्य स्टार शांति अंगड़ी। तो जहां तक सवाल है, इस वक्त 8 गेंदें 19 रन। इस श्रृंखला के मुख्य सूत्रधार संगठक जनाब अल्फाज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से इस श्रृंखला का आयोजन किया है। और उनका एक सैलून जो कि मंगलूर के फल्लीर पर इस वक्त स्थित है, स्प्रिज एंड कंपनी यूनिक्स सैलून। यहाँ पर इस सैलून में ग्राहकों को 15% डिस्काउंट दिया जाता है। कोई भी ग्राहक अगर यहाँ पर कटिंग शेविंग या कुछ भी सैलून के जो भी फेशियल या फिर कोई भी सैलून के अपने काम यहाँ पर करवाते हैं, उन्हें 15% का डिस्काउंट यहाँ पर दिया जाता है। और मैं सर्व क्रीड़ा प्रेमियों से दर्शक करता निवेदन करता हूँ कि कृपया इस स्प्रिज एंड कंपनी फेशियल यूनिसेक्स सैलून का यहाँ पर फायदा उठाए ग्राहकों के तौर पर। और जहां तक का सवाल है, 8 गेंदें बाकी, 19 रन चाहिए। अगली गेंद, इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए माजिद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस बार बेहतर गेंद, विकेट कीपर चूके, रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना चूका और बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 42 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट एंड 7। एक गेंद अभी भी बाकी है इस ओवर में, और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज माजिद इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। अगली गेंद, माजिद रिवर्स शॉट खेलना चाह, प्लम इन फ्रंट। 1 मोर विकेट फॉल ऑन 6 विकेट डाउन। धूप इस वक्त प्रकट हो चुकी है, धूप प्रकट होते ही यहां पर यह विकेट गिर चुका है। अब अंतिम ओवर का खेल बाकी, 17 रन चाहिए, 17 टू गेट फ्रॉम लास्ट ओवर।
साज गेंदबाजी इस वक्त आरंभ करते हुए और आज के दिन का अंतिम ओवर यहां पर शुरू होता हुआ और 17 रन बनाने इस वक्त दिविश शांति अंगड़ी को यहां पर अंतिम ओवर में यानी अंतिम 6 गेंदों में। साज ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, फील्डिंग में जमावट कुछ हद तक करने के बाद ओवर की पहली गेंद और गेंदबाज इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करते हुए पहली गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया डीप मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, एक रन बल्लेबाज को जरूर मिलेगा। बेहतर फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 43 रनों पर। 43 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, 16 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 5 बॉल्स। और साज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए जैनो सामना करने के लिए तैयार साज की गेंदों का। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलती हुई, मिडाउन पर कोई फील्डर तैनात नहीं, फील्डर इस वक्त तैनात है लॉन्ग ऑन पर, ऑन साइड पर। और ढीली गेंद, बेहतर गेंद थी, लेग कटर और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है स्टंप आउट के रूप में। लेग कटर के जरिए इस वक्त बल्लेबाज को वंचित करने में सफल और गेंद सीधे विकेट कीपर ने अपना काम तमाम विकेटों के पीछे किया। तो 43 रन 7 विकेट के नुकसान, 43 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स और सिर्फ 4 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में। 16 टू गेट फ्रॉम 4 बॉल्स। शाम के 6 इस वक्त बजते हुए, लगभग 6 बज चुके हैं शाम के और 4 गेंदें आज इस श्रृंखला के पहले दिन में 4 गेंदें बाकी। सम्मत का आगमन हो चुका है। पिछले मैच में छक्का अंतिम गेंद पर लगाने के बाद उन्होंने अपनी टीम को विजय दिलाए थे और यहां पर देखते हैं इस इन बचे हुए 4 गेंदों में 16 रन वो बना पाते हैं या नहीं। ऑफ स्टंप से बाहर, रन के लिए दौड़ पड़े, नो बॉल का इशारा, ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं। 14 रिक्वायर्ड नाउ, 4 बॉल्स, फ्री हिट गेंद और इस गेंद पर अगर छक्का लगता है कुछ तो कुछ बात जरूर बन सकती है दिविश शांति अंगड़ी के खिलाड़ियों को। तो इस बीच दूसरे खिलाड़ी कुछ समझाते हुए फ्री हिट गेंद बल्लेबाज के लिए और देखना है कि इस फ्री हिट गेंद पर बल्लेबाज क्या करते हैं। सास गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछाला, मिड विकेट पर गेंद सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई और जब तक गेंद को वहां पर रोका जाता 2 रन मिलेगा। तीसरा रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन यहां पर कोई रिस्पॉन्स नहीं और यहां पर यह विकेट गिर चुका है। 2 रन उनके खाते में जुड़ेंगे और तीसरा रन पूर्ण करते समय सिर्फ स्ट्राइकर एंड से बल्लेबाज दौड़े थे, नॉन स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज वहां पर हिले भी नहीं और आखिरकार आसान सा रन आउट इस वक्त होता हुआ स्ट्राइकर एंड पर। 47 फॉर 8, 12 रन चाहिए, 3 गेंदें बाकी, 3 फोर्स रिक्वायर्ड इन द लास्ट 3 डिलीवरीज और 8 विकेट गिर चुके हैं। इट्स 47 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। तीन गेंदें इस वक्त बाकी, लेग स्टंप से बाहर उछाला खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन पर और एकमात्र रन मिलेगा। नाउ ऑलमोस्ट लास्ट चांस, 11 रन रिक्वायर्ड इन 2 डिलीवरीज, 2 sixes ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड इन द लास्ट 2 डिलीवरीज। So the second last ball of the day is now coming up. Almost 2 sixes required or 6 and a 4 required for a tie. गेंदबाज तैयार, मिसेस, दैट्स इट। अगर अंतिम गेंद पर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते हैं तो यहां पर जमन बॉयज का लड़का की विजय निश्चित है। 11 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट बॉल। तो स्टिपुलेटेड टाइम इस वक्त समाप्त हो चुका है। खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया गया है लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा।
बैटिंग टीम को। अगर अंतिम गेंद पर गेंदबाज सही गेंदबाजी करते हैं, सही गेंद फेंकते हैं, तो निस्संदेह उनकी टीम यहाँ पर विजय दर्ज कर जाएगी। That's it. 10 runs victory for Zaman Boys का लड़का against Divi Star Shanti Angadi, and with that 10 runs victory by Zaman ka ladka, they are through to the semi-final of this competition. So a fantastic first day of this prestigious cricket tournament in the name of Sauhardha Trophy 2023 now is came to an end, and now we are straight away moving to the second day of this prestigious tournament. We'll be back on tomorrow morning exactly at 8:30 a.m. when the first match will going to begin of this competition between Team Bail Ashok Nagar versus Durga Konchadi, and that match starts exactly at 8:45 a.m. on tomorrow morning. Till then, we are saying you goodbye right from our commentator box, and we'll be back. And we'll be back right after the. We'll be back right on tomorrow morning at 8:30 a.m. So, thanks for all, and good night as well. So now it's the time to announce the man of the match of the quarter-final, the first quarter-final of this prestigious Sauhardha Trophy 2023. The man of the match which goes to the all-rounder who scored some runs and bowled 2 very good overs. It's none other than Tawfiq of Zaman Boys ka ladka, who judged as the man of the match for his outstanding bowling spell of 2 overs, 1 maiden, and conceded 8 runs and picked up 2 wickets and scored 5 valuable runs. I request Naveen Kiran of Gori Young Boys, kindly request you to present this man of the match award for Tawfiq for his all-round performance, and Naveen Kiran of Gori Young Boys will going to present the man of the match award, and we can see then a big presentation as Naveen presenting the man of the match award for the winner Tawfiq. So that's it for the day number 1. It's going to be a fantastic day, the very good game of cricket which is played in the day number 1, and we are back tomorrow exactly at 8:45 a.m. in the morning, the first match, and Bail Ashok Nagar